तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो. May I now request the dignitaries and delegates to observe 1 minute of silence for the corona warriors who have laid down their lives in this war against this deadly disease. A minute, please. Thank you. May I now invite our Honorable Chief Guest, all our program coordinators and office bearers of FOXI to light the lamp. May this divine light dispel the darkness of disease and take our youth towards a happier, healthier and a brighter tomorrow. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Leadership is not a position or a title. It is action and example. And it's my honor to introduce the President of FOXI, Dr. Alpesh Gandhi. Sir is the President this year, the Vice President of FOXI in 2013. He's been the Governing Council member of ICOG in 2016 to 17. He's been the Chairperson of the Practical Obstetric Committee of FOXI. He's the Vice President of the Gestos India chapter, the past President of Ahmedabad OBG Society, the past Secretary of Ahmedabad Society. He's been the convener of one of the most successful ICOG of FOXI 2017 at Ahmedabad. He's a past joint convener of SAGOG. He's a past treasurer of SAGOG. He's the national coordinator of the emergency obstetric care program of the government of India and FOXI. It's a privilege to invite sir to talk on adolescent education for us. Respected Chief Guest, Dr. C.N. Purandare sir, Vice President Dr. Ragini Agrawal, all the office bearers of FOXI, respected dignitaries, dear faculties and dear viewers, a very good morning to all of you. On behalf of FOXI, I extend a warm welcome to all of you. 12th August across the world वर्ल्ड यूथ डे के लिए माना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल फॉक्सी ने डिसाइड किया कि वर्ल्ड यूथ डे हम एक बहुत अच्छी तरह एडोलेसेंट और यूथ के लिए मनाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फॉक्सी क्या है। FOXI is the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. It has 39,000 gynecologists practicing across India. FOXI नहीं कि भारतवर्ष में पर पूरे वर्ल्ड में मेडिकल स्पेशलिटी के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और 1950 में जो हमारी फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी है उससे भी पहले फॉक्सी की स्थापना हुई है। सो बहुत पुरानी संस्था है। भारतवर्ष में
काम कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे सभी गायनेकोलॉजिस्ट भारत की 50% जितनी पॉपुलेशन की हेल्थ की केयर कर रहे हैं। Women's, girls and women's Oxy is taking care from the age of 9 to 10 years throughout the year, throughout their life, from the adolescent age, teenage age, reproductive age, menopausal age and geriatric age. So हम ये बता सकते हैं कि ऑक्सी भारत की नियरली 50% पॉपुलेशन की हेल्थ केयर कर रहा है। आज फॉक्सी ने ये वर्ल्ड यूथ डे के सेलिब्रेशन में ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतवर्ष में बहुत सारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ने इसको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स और टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उन सब स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स सबका बहुत बहुत आभारी हूं। हमने ये दिन और ये इवेंट खास क्यों चुना है? हमने इस डे को, वर्ल्ड यूथ डे को एक साइंटिफिक तरीके से सेलिब्रेट करने का प्लान किया है और वी वांट टू सी दैट इट शुड बी बेनिफिशियल टू द यूथ, एडोलेसेंट एंड यूथ ऑफ आवर कंट्री। सो हमारी ये जो सोशल एक्टिविटी है वो साइंटिफिक तो है ही, सोशल भी है और इससे बहुत बड़ा फायदा आप सबको, सोसाइटी को, कम्युनिटी को और कंट्री को होने वाला है, क्योंकि भारत का कुल बजट है उसमें काफी परसेंटेज एडोलेसेंट और यूथ के पीछे भी इस्तेमाल किया जाता है। एडोलेसेंट इज अ फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पूरी लाइफ में ये एक ऐसा पीरियड है जहां सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रोथ होता है बॉडी का और डेवलपमेंट होता है। भारत में 21% पॉपुलेशन एडोलेसेंट ये 10 to between 19 ईयर्स में आता है और ये भी एक बात है कि इंडिया हैज द हाईएस्ट, लार्जेस्ट एडोलेसेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो 21% population of India is adolescent group, is in adolescent group और वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नंबर में है। और ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है कि जहां फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और प्यूबर्टी से एडल्ट बनते हैं। इतना ही नहीं, उनका एडल्ट का जो पूरा हेल्थ स्टेटस होता है कि एडल्ट की हेल्थ कैसी रहेगी, उसका रूट ये एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप में से शुरू होता है। वी कैन से दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात का इस्तेमाल करते हैं कि इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर है। एंड दे आर द फ्यूचर, they are the future of our country. This is a period for preparations for undertaking greater responsibility. ये एडोलेसेंट लाइफ टाइम की उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के प्रति, सोसाइटी के प्रति, कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये एक पीरियड है जहां उनको प्रिपेयर किया जाता है। So apparently they are healthy, but
भारत सरकार ने बहुत सारे जो सर्वे किए हैं उसमें दिखाई देता है कि बहुत सारी कमियां ये ग्रुप में दिखाई देती है, और ऐसा भी मालूम हुआ है कि मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी ये ग्रुप में जो होती है वो मोस्टली मैनी प्रिवेंटेबल डिसीजेस और कॉजेस से होती है। हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और बहुत सारी वजह तो ऐसी है कि जो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि यंग और ग्रोइंग चिल्ड्रन हैव पुअर नॉलेज, lack of awareness about their physical, psychological changes that occurs during the adolescent and the health affecting them. अभी जो existing adolescent health program है वो mostly immunization, health education for sexual and reproductive health, nutritional education and supplementation और anemia prevention control पे आधारित है, पर इसमें बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ और बहुत सारी अदर इश्यूज भी इंक्लूड करने की जरूरत है। जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो लैक ऑफ और वी कैन से एक्सेस और अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू दिस ग्रुप उसके हिसाब से हो रहे हैं। सो लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एब्सेंस ऑफ पुअर गाइडेंस, पेरेंट्स इग्नोरेंस, लैक ऑफ स्किल्स and influence services from healthcare delivery system are the major barriers. फॉक्सी का ये विजन है कि ये जो सब बैरियर्स है, जो लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जो पेरेंट्स का इग्नोरेंस है, वो सबको एड्रेस किया जाए। ये सब प्रिवेंटेबल डिसीजेस और प्रिवेंटेबल कॉज को एड्रेस किया जाए, जिससे आप लोग अच्छी तरह माहितगार हो जाओ। और बिकॉज ऑफ यू जो सो मेनी प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं प्रिवेंटेबल कॉजेज के हिसाब से उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा फायदा मिले और आप लोगों की हेल्थ बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही बड़ी हो। अर्ली मैरिजेस आर वन ऑफ द रीजन। सिमिलरली during this age group, adolescents have increased nutritional requirement, requiring diet rich in protein, vitamins, calcium, iodine, phosphorus, iron due to rapid growth and increased physical activity. But at the same time, भारत सरकार का स्टडी है वो दिखा रहा है कि 47% गर्ल्स and 58% boys are very thin. 2.4% girls or 31% boys are overweight. Many of them are suffering from anorexia nervosa, or many of them are malnourished and malnutrition. They are suffering from malnutrition. एक स्टडी चेन्नई में हुआ था, उसके हिसाब से 11 to 70% के बीच में 82% लोग टीवी देख के खाना खा रहे हैं, जंक फूड और स्नैक्स का खाना खा रहे हैं, और इसी के हिसाब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। टेलीविजन व्यूइंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट इज एसोसिएटेड विथ ओवरवेट, पुअर फिटनेस, स्मोकिंग and many other even mental problems also. Or as I mentioned, mental problem are one of the most neglected issues among adolescents. गोवा में एक स्टडी किया गया था, उसमें ये पाया गया था कि 3.9%, nearly 4% of youths are suffering from depression. So ये बहुत बड़ा इंसिडेंस बोला जा सकता है। और इंडिया में जो सुसाइड होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट इसी एज में होते हैं। 40% ऑफ द सुसाइड डेथ्स इन मेन एंड 56% सुसाइड डेथ्स इन वीमेन अकर्ड बिटवीन 15 to 29 इयर्स ऑफ एज। उतना ही नहीं, 11% बॉयज अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग 29% बॉयज इसी पीरियड में टोबैको का एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं।
ये सब बहुत बड़ी चिंता की बात है। सो उससे जो नुकसान होता है उसके लिए वो लोग अवेयर नहीं होते हैं। फॉक्सी का एक विजन है, ये सब जो बातें हैं, जो ड्रग एब्यूज, अल्कोहल एब्यूज, स्मोकिंग और ओबेसिटी, जंक फूड, प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एनीमिया, ये सब जो प्रिवेंटेबल है, हाइजीन, ये भारत सरकार ने एक शुरू किया है, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। ये भी जो है, हाइजीन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, particularly menstrual hygiene is also very very important. So ये सब issues पे हम आज आपको एड्रेस करने वाले हैं। उसके बाद हम फॉक्सी का एक विजन है कि इसके बाद हम एडोलेसेंट हेल्थ केयर काउंसलिंग कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं और उसका मटेरियल भी प्रिपेयर किया जा रहा है। और उसके बाद हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एक प्रमाणित कोर्स के हिसाब से शुरू भी किया जा सकता है। तो हम फॉक्सी आज खाली ये प्रोग्राम करके ये बात को यहाँ समाप्त करने वाली नहीं है। इसके बाद भी हम लोग इसको आगे ले जाने वाले हैं और साल भर इसके पीछे बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करने वाले हैं। हमारा ऐसा भी एक विजन है कि आज हम अक्रॉस इंडिया ये प्रोग्राम कर रहे हैं, but later on we want to continue this program in different states in local languages so that you can be benefited more. आपको अपनी लैंग्वेज में ज्यादा समझाया जा सके और रीडिंग मटेरियल अवेलेबल हो, उसके लिए भी we are doing planning. So this all are the activities later on Foxy will continue once this program will be over. आज ये प्रोग्राम के लिए बहुत सारा सपोर्ट हमारे कोऑर्डिनेटर से मिले हैं, बहुत सारा सपोर्ट स्कूल्स, कॉलेजेस और एनजीओस और सब लोगों की ओर से मिले हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको आपकी हेल्थ अच्छी रहे उसकी शुभकामना करता हूं। ये जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें आप सबकी सेफ्टी रहे उसका भी मैं शुभकामना कर रहा हूं। I pray to my God for the safety of all of you in this pandemic. और इसी के साथ मैं हमारे जो कमेटी के जो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग किया है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं गिरीश माने, संपत कुमारी, राजल ठाकर, राखी सिंह, निहारिका मल्होत्रा, सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उन सबको बधाई देता हूं। इसी के साथ मैं I hand over mic to Dr. Charmila and Dr. Nidhi Khera. Thank you very much. Thanks a lot. और इसी के साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर डोमिनिक, कैन इट बी फुल साइज सो सब लोग अच्छी तरह पढ़ सके इसको। स्लाइड शेयर करके उसको फुल स्क्रीन पे रख सकते हैं। ये हमारे भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी की ओर से ये प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई संदेश मिला है, शुभकामना मिला है। उनका ये संदेश है, वी आर फीलिंग प्राउड दैट प्रधानमंत्री ने ये प्रोग्राम की सराहना किया है और उन्होंने उनकी ओर से आप सबके लिए एक मैसेज भेजा है जो मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये फुल साइज करो ना, सब लोग पढ़ सके। ये पीपीटी में जेपेग है, ये इतने ही साइज में रहेगा। काम करता हूं। Sir, in the laptop it is readable, no problem, you can read.
आप बंद कर दो, मेरा स्लाइड शेयर कर रहा हूं। आपका स्लाइड शेयर बंद कीजिए। देता है अभी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मैसेज भेजा है जो मैं आपको आप सबके लिए पढ़ रहा हूं। I am happy to learn about the National E-Conclave being organized by Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India, FOXY, to commemorate International Youth Day. Wellness of citizens is imperative for a healthy nation. The theme of the conclave, Preventable Adolescent Health Education, is thoughtful as it highlights the importance of proactive and preventive measures for fitness and well-being. Our government has adopted a holistic approach towards healthcare with the vision of healthcare for all. Our focus is on both preventive and curative healthcare. We are constantly emphasizing on the need for healthy living, active lifestyle, and yoga to overcome the challenges arising due to lifestyle diseases affecting even the young. Well-being of youth, particularly the young women folk, is one of the vital indices of development, be it ensuring free of cost and quality antenatal care to expecting mothers through Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, or be it providing financial support through Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, be it furthering adequate nutrition through Poshan Abhiyan, or be it increase in maternity leave. All such steps are bringing positive transformation in crores of lives. I am sure that the conclave will provide an ideal platform to the participants to share their experiences, and the deliberations will come up with fresh ideas to promote the universalization of healthy lifestyle. Best wishes for all success of the conclave. नरेंद्र मोदी। सो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये आप सबके लिए ये संदेश भेजा है और शुभकामना भेजा है, और ये कॉन्क्लेव की सफलता के लिए और उसका टेक होम मैसेज डेलिब्रेशन से बहुत अच्छा और बढ़िया जाएगा, एक नई शुरुआत होगी, उसके लिए उन्होंने आशा प्रकट किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फॉक्सी की ओर से वी आर वेरी मच थैंकफुल टू अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और we are always there. We extend our full support to government of India for all its schemes for the well-being and for the health of citizens of India. Thank you very much for giving me this opportunity, or thank you very much for participating in this event. With this, I hand over mic to Dr. Nidhi Khera and Dr. Charmila. Dr. Alpesh sir, for guiding us with your vision and mission. May I now request Dr. Jaideep Tan, our Secretary General FOXY and President of the Mumbai Obs-Gynae Society, to welcome our esteemed Chief Guest, Dr. C.N. Purandare. Thank you very much. It's a real pleasure and a privilege to introduce Dr. C.N. Purandare. Sir is probably one of the most forward-thinking and evergreen and legendary personalities that FOXY is proud to have. He is the past president of the Mumbai OBGYN Society and of FOXY. He was also the Dean of the Indian College of Obstetricians and Gynecologists, and then ascended to the highest post available in obstetrics and gynecology when he became the president of the International Federation of Obstetrics and Gynecology. I know that Sir's heart has always been close to the Journal of Obstetrics and Gynec Societies of India, and he is the editor emeritus of the same. He has been conferred with honorary fellowships of several international organizations like the Royal College of Obstetricians and Gynecologists in the UK, the College of Physicians of Ireland, the American College, the Columbian Society,
the National Academy of Medical Sciences, and also the Romanian College of Obstetrics and Gynecology. All his phenomenal work has obviously resulted in him getting several awards like the B.C. Roy Award, the Dr. B.N. Purandare Award, the Rashtriya Gaurav Award, the Lakshmibai Adik Award, and Medscape India Best Gynecologist Award. He has not only worked extensively in professional organizations but also academically. He was the first to perform fetal surgery in India, and he devised the Purandare's modified radical hysterectomy operation for carcinoma cervix. In a glittering career, he's had the pleasure of mentoring several students, including myself, in his stint as an honorary professor of obstetrics and gynecology at the Grant Medical College. Sir is also a consultant obstetrician and gynecologist at the St. Elizabeth Hospital, BSCS Saifi Hospital, and an honorary consultant to the Mumbai Police and the Indian Armed Forces. It's my privilege and pleasure to introduce Dr. C.N. Purandare, one of the legends of obstetrics and gynecology in India. C.N. sir, up to you. Thank you very much, Jaideep, and Alpesh for inviting me here for this program on the International Youth Day. We're all aware that preventable healthcare is very important, and the education for preventable healthcare, unless imparted to the youth in general all over, it may not be easy for India to achieve what it plans to achieve in Atmanirbhar Bharat. More than 25% of the population in India is youth, and they are the hope of India. This population is really going to grow to give India its stature, and the health of this group, the health is wealth as far as the population is concerned, and it's obviously a very young country today. When you're looking at 25% population being young, it is a young country, and the productivity of the country depends on the young population, and that productivity, when increases, will give wealth as far as the country is concerned. Now, in the current scenario where Corona has shown that wealth can diminish due to poor health in such a short period of time. We have in the last 6 to 8 months seen the wealth of most of the countries go down so drastically that it's essential that the youth takes over the responsibility as soon as we are through this pandemic as far as Corona is concerned. The Partnership for Maternal Newborn Child Health was started by WHO and United Nations, and India has been part of that PMNCH initiative right from its inception, and has been holding the position of the vice chair of the PMNCH. Now, PMNCH, realizing what adolescents are, included in 2015 when I joined the PMNCH as one of the members of PMNCH as the FIGO president, added A to that PMNCH, which was the Partnership of Maternal Child Health and Adolescent, realizing how important it is for the adolescent health to be really taking the responsibility of the growth of the country and the importance of the education of this particular group, which is a key to success as far as the growth of the country is concerned. Now, the adolescent health, when you're talking about FOXI doing it, it doesn't mean that it's only we are talking about girls and women, but the boys and males, young males as well, which are the future of this country. And the education as far as the preventable health is concerned is extremely important, and I'm happy to see FOXI taking the lead today. And I heard from the president
that just now that they want to establish the special program courses to be taken over by university, which is a extremely laudable initiative. And I'm sure the success of that would be shown in the form of success as far as the youth population is concerned. Now, males as well as females need to really understand the preventive aspect of health education, and it's not pertaining only to small diseases that we are talking about, but we are talking about in general of smoking, drug abuse, the psychiatric illnesses that are faced by the young, which need to be dealt with right in the beginning so that they don't aggravate. The president has already mentioned about the risk of suicide, etc., happening in the younger population, which is purely because of the confidence lack and the problems that are happening with the psychiatric issues. As far as females are concerned, we have had a major issue as regards the obesity, and the obesity as far as subsequently during pregnancy as well as during getting pregnant and the during the youth, the psychological trauma that is caused by the obesity in boys and girls both is extremely important. And I said that when you are watching the TV all the time and eating junk food, that's the time when you put on weight with no exercise, and you need to be out in the open to make sure that you have the nature support and the exercise which will give you a proper health. And rightfully, the Prime Minister has mentioned about yoga and the role of yoga as far as the health parameters are concerned. We are today seeing among young girls, and I'm sure all the girls listening to me today in various schools realize that the PCOS is one of the major issues for these young girls. Irregular periods and obesity and so on, the disfigurement, the excessive hair growth, which is bothering them so much in that needs treatment as well. So for all that to be controlled, it's essential that one understands the medicine behind why these things are happening. You have anemia, which is a major issue as far as our country is concerned. And Foxy over the years, for now last 10 years maybe, or maybe more, have emphasized on the anemia and the role of supplementation and so on and so forth. And the various disorders that happen because of the balanced diet not being available during the adolescent and the youth period, causing problems in fertility, and you have the various genetic disorders which can happen, and the irregularity of periods. There are issues which are genetic in origin which need to be looked into in the health aspect as far as the offsprings are concerned, the Fragile X syndrome and so on. And all this is important as far as a woman is concerned when you are in the growing period and reproductive age, where you need to produce healthy, good offspring which will be an asset to the country. There are so many other issues which need to be looked into, such as the HPV vaccine, which needs to be seriously thought of as far as boys and girls both are concerned, to avoid the cancer in these individuals because of the human papilloma virus. And we can realize now with COVID what a virus can do, the damage to health when you are looking at the overall damage. Dr. Alpesh Gandhi mentioned about the marriages to be
beyond 18 and making sure that they are in a healthy position. So also it is important that when marriages take place, you don't have children straight away. And this knowledge has to be not only to the girls, but the boys as well, that after marriage, for the first 2 years, one should not plan pregnancy. And contraception is one important aspect of that which needs to be dealt with. There are so many subjects that need to be looked into in the preventable health care as education in the young. And I'm happy to see the entire program covering nearly every aspect of it. And I compliment Foxy, Alpesh Gandhi, Jaideep Tank, and Ragini Agarwal and the entire team for the thinking of doing such a program and making the school children as well as the college going children aware of this educational platform, which will definitely in the future. Thank you very much. Thank you so much, sir. Dr. C.N. Purandare. A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart, and you're a teacher to many of us, as Dr. Jaideep said. Thank you always for guiding us, inspiring us, and for blessing this program on adolescent health. It's a privilege to hear you always. Now we move on to the second session. Can I request Dr. Nidhi to introduce the chairpersons for the second session? निधि अनम्यूट करो. निधि अनम्यूट करो. निधि अनम्यूट करो. Mute. Yeah, please unmute. हाँ. Yes. So with our first scientific session, and to start the proceedings of the session, may I invite the chairpersons, Dr. Chandravati and Dr. Suvarna Khalilkar. Professor Emeritus Chandravati is from KGM Medical College, Lucknow, a well-known OBGY stalwart of Northern India, having taught and shaped the careers of hundreds of young students. Professor Suvarna. मैं डॉक्टर सुवर्णा खाड़ीलकर इस प्रोग्राम में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ और इस प्रोग्राम के फर्स्ट स्पीकर है प्रोफेसर राजल ठक्कर. वो डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी HCL हॉस्पिटल में कार्यरत है और उन्हें स्पेशल इश्यूज ऑन एडोलेसेंट हेल्थ में उनको काफी उन्होंने काम किया है और उनको कई ऑनर्स और एक्कोलेट से सम्मानित किया गया है. इसके और उनको ऑब्स्टेट्रिक्स एंड फॉक्सी में काफी वो एक्टिव है. So I hand over the mic to Dr. Rajal Thakkar. Can you please go ahead with your talk? Thank you so much. Rajal ma'am. Yes. Thank you so much for kind introduction. Namaskar. Am I audible? Yes ma'am, go ahead. Very good morning to all of you and namaskar. Thank you Foxy for giving me this opportunity. आज मेरा जो टॉपिक है आप सबसे जो बात करना है वो ओबेसिटी एंड इट्स प्रॉब्लम्स, मोटापा और उसकी समस्याएं. जो सेशन आउटलाइन होगा, मोटापा क्या है, वो कैसे नापते हैं, उसका वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है, मोटापे के कारण क्या है, इसकी समस्याएं क्या है और मोटापे की रोकथाम कैसे कर सकते हैं. What is obesity? Overweight and obesity. Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that presents a risk to our health. जो भी फैट हमारे शरीर में संचय होती है उसके स्वास्थ्य के लिए जोखिम होता है, उसे हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं. How is it measured? It is known as body mass index. It is weight in your kilogram, your weight in kilogram divided by height in meter square. So शरीर द्रव्यमान सूचकांक कैसे नापते हैं? वजन किलोग्राम डिवाइडेड बाय योर हाइट, ऊंचाई इन मीटर स्क्वायर. ये बताता है कि किसी के शरीर का भार उसकी लंबाई से अनुपात में ठीक है या नहीं. जो नॉर्मल BMI होता है वो 18.5 से 24.9 का होता है. ओवरवेट या अधिक वजन जिसको 25 से 29.9 का होता है. मोटापा यानी ओबेस 30 to 34.9 होता है और एक्सट्रीम ओबेस जिसका BMI 35 से ज्यादा होता है.
ओबेसिटी इज अ ग्लोबल एपिडेमिक, 21वीं सदी की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से वो एक है। अगर हम देखें फिगर्स 2016 और 1975 के बीच में, तो 10 टाइम्स ज्यादा बच्चे और एडोलेसेंट, जो युवा हैं, एडोलेसेंट है, वो मोटे हो रहे हैं। पहले माना जाता था कि ये जो है अधिक वजन और मोटापा केवल उच्च आय वाले देशों में और निम्न, अभी लेकिन इट इज इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज ऑल्सो एंड स्पेशली इन अर्बन सेटिंग, शहरी विस्तारों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये जो है, इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट नंबर इन ओबेस चिल्ड्रन, पूरे विश्व में भारत के बच्चे और एडोलेसेंट है सेकंड हाईएस्ट नंबर है। अभी एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि 5% बच्चे जो है, 5% इंडियन चिल्ड्रन आर ओवरवेट, उसका वजन ज्यादा है, 8% डायबिटीज से पीड़ित है एंड 10% आर प्री डायबिटिक। सो डायबिटीज की अगला जो सिचुएशन है, कंडीशन है, स्टेज है, उसकी से ग्रसित है। जो ओवरवेट बच्चे होते हैं दे बिकम ओवरवेट एडल्ट्स। बीच में आती है टीनेज, तो जो किशोर या किशोरी अपने एडोलेसेंट ईयर में या टीन एज ईयर्स में जो मोटे होते हैं, मोटापा होता है, वो 30-35 ईयर्स की उम्र में उनके जो नॉर्मल बच्चे जो है, नॉर्मल वेट वाले, उससे 16% ज्यादा मोटे हो सकते हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर देखें तो लड़कियों के लिए जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो एज के मुताबिक है, लेकिन 16 से 2400 कैलोरी डिपेंडिंग अपॉन अपना जो आप कितना काम करते हैं, एक्टिव है कि नहीं है, ज्यादा एक्टिव है तो उसके मुताबिक आपका खाना होना चाहिए, कैलोरीज इनटेक होना चाहिए। उसी मुताबिक बॉयज में भी अर्ली एडोलेसेंट से लेट एडोलेसेंट तक अगर कुछ काम नहीं करते हैं, मॉडरेटली एक्टिव है और ज्यादा एक्टिव है, तो 18 से 2200 से 2800 to 3000 कैलोरीज जितनी कैलोरीज इनटेक होना चाहिए। मोटापे के क्या कारण है? तो पहला कारण है कि टू मेनी कैलोरीज फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक। अगर हम खाने में ज्यादा स्वीट्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, सॉरी, अनहेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं और घर पे बैठे बैठे टीवी देखते हैं या वीडियो गेम्स देखते हैं, सिडेंटरी होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो मोटापा हो सकता है। फैमिली फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक्स बहुत इसमें प्रभावित कर सकता है। अगर जेनेटिकली हमारे फैमिली में सब लोग मोटे हैं तो ज्यादातर हो सकता है कि हमारी भी मोटापन हमें हो सकता है। तनाव और भावनात्मक रीजन की वजह से, अगर फैमिली में स्ट्रेस है, खुद का स्ट्रेस है, पेरेंट्स का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, तो जो बच्चा है या एडोलेसेंट है वो स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए ज्यादा खाता है, अपने इमोशंस को कोप अप करने के लिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि उदासी, कुछ काम नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो बोर्डम होता है तो कि चलो ऐसे खा लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भूख भी नहीं लगी है, लेकिन जस्ट टू फाइट द बोर्डम खाना हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है, भोजन विकार, उसकी वजह से भी बच्चे ज्यादा खा सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर देखें तो कई लोग अपना बिजी शेड्यूल होते हैं, क्लासेस में जाना है तो फ्रोजन फूड है या फ्रोजन स्नैक्स है जिसमें कैलोरीज ज्यादा आती है, वो खा लेते हैं। अगर काम पे जाना है, रास्ते में कुछ वड़ा पाव मिल गया या कुछ फास्ट फूड मिल गया, वो खा लिया, तो उससे भी अपना वेट बढ़ सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो एरिया में रहते हैं वहां पे एक्टिविटी करने के लिए या गेम्स खेलने के लिए जगह नहीं है, तो भी हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये सब है मोटापे के कारण। अभी समस्या क्या हो सकती है? तो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कोलेस्टेरॉल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। स्लीप एपनिया यानी नींद में तकलीफ हो सकती है। लीवर और गॉलब्लैडर में डिजीज हो सकते हैं, उसमें तकलीफ हो सकती है। लिवर में फैट डिपॉजिट हो सकता है, जॉइंट की तकलीफ हो सकती है और जाते जाते कैंसर की भी तकलीफ हो सकती है। ये सब फिजिकल प्रॉब्लम्स है। सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम में अगर आप देखा होगा कि स्कूल में कोई बच्चा मोटा है तो कोई उसको बुली करता है, उसकी मजाक उड़ाता है, उसके साथ उसको टीज करता है, तो उससे बच्चे की एस्टीम में अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उसकी वजह से उसके बिहेवियर और लर्निंग में, उसका पढ़ाई में भी दिक्कत हो सकती है।
लड़कियां जो है एडोलेसेंट एज ग्रुप की, जिसके वो चेंजेस हो रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, तो जो ज्यादा वजन ज्यादा है जो लड़कियों का, उसके पीरियड्स नहीं आते हैं, कम आते हैं, इरेगुलर आते हैं, और ओव्यूलेशन जो अंड बीज निकलता है वो उसमें तकलीफ होती है, और पीसीओएस की तकलीफ हो सकती है, और आगे जाके लेट लाइफ में एंडोमेट्रियल कैंसर की भी दिक्कत इसकी वजह से हो सकती है। स्टडीज बताते हैं कि जस्ट 5% ऑफ वेट अब अगर रिड्यूस कर लिया तो फर्टिलिटी जो हार्मोन्स है, जो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन के हार्मोन्स है, वो नॉर्मल हो सकते हैं और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो सकती है। तो मोटापे और ज्यादा वजन की वजह से जो यंग बच्चे हैं, एडोलेसेंट है, उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। एंड ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब का पूरे देश के डेवलपमेंट में और देश की जो इकोनॉमिकल और ग्लोबल हेल्थ है उसके ऊपर भी, आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्वास्थ्य के ऊपर भी असर होता है। तो अधिक वजन या मोटापा, साथ ही साथ उनके संबंधित रोग काफी हद तक रोके जा सकते हैं। इट इज प्रिवेंटेबल, और इसीलिए बचपन के मोटापे की रोकथाम करना बहुत जरूरी है और प्राथमिकता उसकी हमें दे रहे हैं, और इसीलिए आज ये कॉन्क्लेव हमने रखा है। सो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो फिजिकल एक्टिविटी, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्लान ग्रुप रेजाइन कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, और एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू फिजिकल एक्टिविटी ऑन मोस्ट डेज, एटलीस्ट 5 days a week to maintain good health and fitness and for healthy weight during the growth. तो हमें गेम्स खेलना है, ब्रिस्क वॉकिंग है, तरह तरह के गेम है, स्विमिंग है, इससे हम कैलोरी बर्न कर सकते हैं और हम फिट रह सकते हैं। डाइट मॉडिफिकेशन, खाना जो खाना है वो उसके न्यूट्रिशियस फ्लूइड, स्टार्विंग करना नहीं है, लेकिन हेल्दी और न्यूट्रिशन फूड खाना है, और इसके लिए फैमिली का इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर फैमिली डिसाइड कर ले, अगर पेरेंट्स डिसाइड कर ले कि हमें ये हेल्दी खाना है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके डाइनिंग टेबल पे उनका एक नॉर्म है कि पहले सलाद सबको खाना है, तो अभी ऐसा उनका डेली लाइफस्टाइल हो गया है कि हर रोज वो सलाद और हेल्दी फूड खाते हैं। तो फैमिली के हिसाब से हमें सबको ध्यान रखना है। टू रिप्लेस पिज्जा बर्गर टू द बाउल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इस तरफ नहीं देखना है, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना है, ज्यादा पानी पीना है। पोर्शन साइज कितना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा खाना ले लिया, कम खाइए, धीरे धीरे खाइए, और फ्रीक्वेंट मील्स लाइए, और चबा चबा के आराम से खाइए। खाने में शुगर, सोडियम और सैचुरेटेड जो फैट है, तला हुआ खाना है, वो कम खाइए। जो हेल्दी ईटिंग प्लेट है, हमें हेल्दी ऑयल लेना है, ऑलिव ऑयल है, या फिर जो ट्रांस फैट को अवॉइड करना है, वेजिटेबल और फ्रूट्स ज्यादा लेना है, पानी पीना है, होल ग्रेन्स और हेल्दी प्रोटीन, ये सब जो है हमारे डे टू डे डाइट में होना चाहिए। सो बीएमआई जो है, जो हमारा वजन जो तय करता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, and adolescent girls have to be given healthy and balanced nutrition which leads to maintenance of their normal BMI and regulate their menstrual cycle. मैंने आगे बता दिया। तो जो PCOS की जो लड़कियों को तकलीफ होती है, उसका फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है हेल्दी खाना और एक्सरसाइज। अगर आपका वजन कंट्रोल में रहेगा तो आपके पीरियड संबंधी, मेंस्ट्रुएशन संबंधी काफी तकलीफें कम हो जाएगी। आप हेल्दी हॉबीज भी परस्यू कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग है, डांसिंग है, साइकिलिंग है, हाइकिंग है, ट्रैकिंग है। तो इस सब में भी हमारा मन लगा रहता है और हमारी कैलोरीज भी कम होती है, हमारा फिटनेस लेवल भी बढ़ता है। नींद भी उतनी ही जरूरी है, हमें नींद ठीक से लेना है, कम से कम 8 घंटे सोना है, जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। तो सुबह जल्दी उठते हैं, पढ़ाई करते हैं तो हमारे याद भी अच्छा रहता है। टीवी देखते देखते हमें खाना नहीं खाना है, कब की, क्योंकि जब टीवी देखते हैं या कुछ वीडियो देखते हैं या मोबाइल में व्यस्त है तो कितना हमने खा लिया, कितना पोर्शन खा लिया, उसका ध्यान नहीं रहता है। तो खाने के टाइम पे नो डिस्टर्बेंस, जस्ट शांति से प्रेयर करके हमें खाना शुरू करना चाहिए। से नो टू द सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो पेप्सी है या कोई भी एरिएटेड ड्रिंक्स है जिससे हमें कैलोरीज ज्यादा मिलती है और हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। पानी की भी इतनी ही इंपॉर्टेंस है, पानी बहुत अच्छे से पीना है, और हमारा देश में गर्मी ज्यादा है तो पानी ज्यादा पीना है। सो हेल्दी बिहेवियर्स दैट स्टार्ट इन एडोलेसेंट मेक हेल्दी एडल्ट्स। सो हेल्दी डाइट, physical activity, no to the tobacco and alcohol use, that will lead to
तुम्हारी अच्छी सेहत होगी और आगे जाके जो डिजीज मैंने बताए हैं, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज है या और सब समस्या है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, ये सब हमें नहीं होगा। सो स्वस्थ किशोर अब भविष्य में स्वस्थ एडल्ट और स्वस्थ भविष्य पीढ़ी। सो हेल्दी एडल्ट्स नाउ, healthy adults in future and healthy future generation. So adolescents are the greatest resource for a society to thrive and that's what हम सबके, हमारा ये प्रयत्न है, फॉक्सी का प्रयत्न है कि आप सबकी सेहत अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ होंगे तो ही भारत का भविष्य स्वस्थ रहेगा। Thank you very much and best wishes to all of you. Stay fit, stay healthy. Goodbye. Thank you. हाय अल्पेश, मैं आ गई, बड़ी मुश्किलों से खुला है। वेलकम मैम चंद्रावती। हाँ, बड़े स्वर्णा, बड़ी मुश्किलों से लिंक खुला। सॉरी टू मैडम, आप डॉक्टर चंद्रावती मैडम। Sorry to be late here. I was sitting from 9 o'clock. I'm sorry I missed the inauguration. No problem, ma'am. Okay. Chandravati madam, आप next speaker. Ma'am, can I request you to introduce the next speaker, Dr. Durusha? Okay. I mean, I'm really happy to introduce Dr. Durusha, whom I know, I don't know for how many years, and it is introducing Duru is like showing a lamp to the sun. She is the founder president of PCOS Society. She is a consultant gynecologist and fertility expert, Breach Candy Hospital, Jaslok Hospital, Hinduja Healthcare, Mumbai. She is the past president of FOXY, Indian Menopausal Society, and the Indian Society of Assisted Reproduction. She is the founder trustee, Women Empowerment Foundation. She is the first and only Indian to receive FIGO's Distinguished Merit Award for services towards women health. She had been awarded a recognition award by Honorable Minister of State Srimati Anupriya Patel for outstanding contribution in the field of women's health. She is honorary fellow of the Royal College of Obstetric Gynecology. She is the past chair of Indian College of Obstetric and Gynecology, and she is holding various international special interest groups, Asia Pacific Initiative groups, and American Society group. Duru, the stage is yours, and I'm happy to introduce you and happy to be here with you. Thank you very much, Dr. Chandravati. It's a pleasure knowing you and pleasure knowing FOXY as I've known it so very closely. Am I being heard? Yes, yes, madam. I wanted to share my screen. Just give me half a minute. It's not coming through. Can you see the screen? Not yet, ma'am. Not as yet. Okay. I'm sharing it actually. Can you guide, please? Go back. How many please guide, madam? Ma'am, there is a share screen button that is there. You need to click on that, select your PPT or your desktop and then share it. I've done that already. No, ma'am, you have not done that. Please come back to the Zoom app again. Yeah, okay. Okay, now you click on share screen button. 1 minute, huh? I just come to the Zoom app. Yeah. Yeah. Now click on share screen button, ma'am. Yeah, I've done that. Yeah, now do you see your presentation, Microsoft PowerPoint presentation there? Yeah, I see it. Yeah, click on that and yes, ma'am. Now can you please put it on slideshow mode? Yeah. Yes, ma'am. Click on that play button. Yeah, but it's there's another thing coming up over there. That stop video is showing in that on the top of that screen. So it's not coming through. I'm pressing on the play button.
Okay. Do double click, make double click. On this? Yeah. Okay. Now can you see my slides? Yes, madam. Okay. Today, first of all, I'd like to thank our President Alpesh and congratulate him and his entire team for holding this eventful day of the International Youth Day, which is going to talk mainly about prevention. Now, I'm supposed to speak to you on prevention on PCOS. Now, what really is PCOS? Why should we prevent it? Can we prevent it? Whom should we begin with? How should we prevent its future problems? These are the areas which I would like to discuss. And I find that there is a lot of confusion between what is PCOS, what is PCOD, what is PCOM. So I would first of all like to get rid of that confusion. So I'll give you an example of a current scenario as we see it today. We have an adolescent girl who gets lots of acne. Her mother takes her to a dermatologist. The dermatologist, that is a skin specialist, treats her, but the acne keeps coming back. The mother is worried because the daughter refuses to go out of the home and socialize with friends, go to parties. And the mother keeps pestering the doctor. Why is she not getting better? So the dermatologist asks for an ultrasound. She does an ultrasound because she wants to rule out polycystic ovaries. And the sonologist reports it in the report and writes PCOD, which stands for polycystic ovarian disease, which should not be. The sonologist or the doctor who does the sonography should actually write it as PCOM or polycystic ovarian morphology. That means the ovaries are looking polycystic. Whilst PCOS is not a disease, as we call it as PCOD, that terminology also has been completely given up and we call it PCOS, that is polycystic ovarian syndrome. Because today we do not know what really is the cause of PCOS. We need to understand what really PCOS is. And therefore today there have been developed criteria from the entire world that we must have at least 2 things out of 3 present before we call it a girl having PCOS. So in short, she must have either irregular periods, number 1, or she should have all the signs of extra male hormone in her body, that is in the form of either acne, hirsutism, we'll discuss that later. And the third thing is she must have polycystic ovaries on ultrasound. So if 2 out of these 3 are sort of present, then only we can say this is PCOS. But what we need to understand is that in adolescence, there is a different way to diagnose. And that is what I will discuss with you here. Now, when we say we do ultrasound, it has been recommended by the International Organization of, Guidelines of Polycystic Ovaries that ultrasound should not be used for the diagnosis of PCOS in girls within 8 years of the first period. The reason is because there are high chances of multifollicular ovaries in the adolescent period. And this is the reason why we should not be doing it on adolescent girls. And therefore, if we have an adolescent girl where we have to label her as a PCOS, then all the 3 things must be present. She should have irregular periods, she should have signs of extra male hormone, and she should have ovaries looking polycystic on ultrasound. So the question then comes is, why are we concerned about calling it PCOS? Why should we prevent this problem? The reason is because when young girls present to us, they present to us from different age groups. They may present to us during the adolescent period when they are still young girls, when they have irregular periods, and their main issues as the girls come to us today is a lot of acne, lot of hair growth on the face where normally men have hair, or they may complain of hair loss from their scalp, or they always have opacity. 80% of the PCO girls are obese, whilst 20% may be still lean. Then they can come to you
in the reproductive period. When a woman comes to me saying I'm not getting pregnant, she may be having irregular periods, or she may have got pregnant, she's had miscarriages, and during pregnancy she may develop very large babies. That could be because she's having diabetes coming in during her pregnancy. And the third is the 40 plus time, wherein the woman has problems with her period. She has something like high cholesterol, she has a cardiac disease, she may develop, because of that, she may develop high blood pressure, and along with the obesity, we call it metabolic syndrome. And the last is, of course, as Dr. Raj has already told you, that the girls, as they get older, they may develop cancer of the uterus. Now the question is that why are we not stopping this? Because today we do not know what is the reason why a girl gets PCOS. Almost 10% of women have PCOS today. That means almost 1 out of 10 women has got PCOS. So it's a very, very common condition, and we need to understand it more. So in short, when we talk about periods, when the periods, what are normal periods? Normal periods are when it occurs every month, between 25 to 35 days of the period cycle. But at the same time, for the first year, a girl may still have irregular periods, but it usually settles down within a year or two. But then after 2 years also, the periods remain irregular, and the girl has only about less than 8 periods per year. Or if there's no period by the age of 15 years, or if there are no periods for more than 3 years after the first period, then there needs to be an alarm bell clicking, and the mother should take her to the doctor. The second reason is when there is clinical evidence of extra male hormone in the body, that is what we call androgens. Now, if that happens, we call it hirsutism, wherein the hair on the face is not the soft hair, but it is thick hair, which men have in their beard and mustache. So this kind of hair causes a lot of psychological impact on the girl, because she doesn't want to go out and she doesn't want to meet anybody because of the kind of ridicule can be caused. So in short, she keeps going to a parlor where she gets the hair removed, and the hair keeps coming back and gets worse day by day, and that is what we need to address and make sure that she's not having a problem of PCOS. So then you have a woman with acne which looks as bad as this, or she may have hair loss on the scalp, which is a female pattern hair loss. That means it's not like the men. Like men have either baldness coming up in the front of their skull, or it may be at the back. But if you see over here, it starts around the parting and it keeps spreading further and further, and that is called a female pattern hair loss. All this is due to excessive male hormones in the body, and this can cause these kind of problems. So the next question is, can we prevent it? Can we stop all this, these things which are occurring to a young girl? We must know that initially we thought it was genetic because it tended to run into families. But now we have found that it's only about in 10% of girls that you'll find that there is something like a familial clustering, in terms of that it happens within a family. But at the same time, we must remember that the baby who's exposed in the mother's womb to an environment which increases the male hormone can cause PCOS in that child if it's a girl child. Now, this is something we must remember. This is new research where it has been shown that mothers who have high male hormones in their body, especially those who have got PCOS, are likely to have babies because of increased levels of male hormone and insulin inside their uterus, which is causing the change in the baby. It may be not genetically transferred, but it may be because a mother is having it. And therefore, it's important for us to get the mothers under control before allowing them to get pregnant. The girl may reach, now this is something we have seen, that the daughters of PCOS mothers, if we compare them to the daughters of non-PCOS mothers who are not having PCOS, they may reach puberty early. In short, they get their first period very early, even by the age of 8 or 9 years. Then she may have the similar levels of, they have larger ovaries, they have higher insulin levels, higher male hormone levels throughout puberty. And this continues throughout adolescence and continues throughout the woman's reproductive life.
And keeping in this mind, we have created an app called the Too Shy to Ask app. This app is an app which is meant for adolescents. It is completely free to download and it is available on the Android and App Store. It talks about puberty and anatomy. It talks about reproductive and sexual health, gender equality, nutrition, exercises, vaccines, gender violence and substance abuse. These are the various areas which young people are affected with, and therefore we recommend all mothers, we have a parents corner also in this, to read it and understand how to deal with your young girls. So question is, whom should we begin with? We should begin with maintaining a high degree of suspicion for PCOS in those children whose mothers are obese, especially if they have a lot of fat around their umbilicus, those women who are hirsute, having a lot of facial hair, those women who have PCOS themselves, those women who have got insulin resistance, in short they are pre-diabetic, and those women who developed diabetes during pregnancy and that baby born through that pregnancy should be held in suspicion. We should maintain a high degree of suspicion for PCOS in young girls who have got a precocious development of puberty. That means normally the average age of a girl having reached puberty is around 11 to 12 years today, may be extended to 13. But in some girls, even at the age of 8 or 9, you'll find that they are having hair underarms or in their underarms or in the pubic area. And that is what which should alert us that something is wrong. Then how should we prevent its future problems? First of all, we must remember that we make a correct diagnosis of PCOS. We must assess the adolescent for future risk. We must treat her current problems and we must create awareness on the various lifestyle changes. Try and maintain her weight, and that is what we have Dr. Rajan has pointed out in her obesity talk. How should we start? We should look for and prevent gestation. As doctors who are treating pregnant women, we have to prevent diabetes in pregnancy. We have to educate our pregnant patients. We have to tell them, we have to educate all gynecologists should educate all women coming to us to have a healthy lifestyle for themselves and their families, and stimulate all obese women to join weight reduction program, get rid of all the excess weight, evaluate a PCOS woman completely and not only for the symptoms. If she's come to you only for irregular periods, don't only treat that. Look for PCOS in all these patients and follow her up annually. And the assessment should also include psychological evaluation, because all PCOS women, they do have some psychological component coming into them. Like the young girl will psychologically worry, oh my God, how am I looking? What's happening to me? An infertile woman has so many social issues. She's not getting pregnant because of PCOS. She has psychological problems. So similarly, we must evaluate psychologically. We must assess them for cardiovascular risk, metabolic risk and diabetes. And this psychological evaluation is important because if we do not do that, sometimes these young people can commit suicide. Because of this sexual dysfunction, there's eating disorders, there's body image problems, there's a bad quality of life, and there's depression. So in short, we must handle PCOS well. We can always control it. We cannot prevent it really, but we can control it. There's an excellent section on our PCOS Society website called Conquer PCOS. And this Conquer PCOS is an outreach program for PCOS patients. So get onto it and get all your information, ask all your questions, and we'll be happy to answer. So the take-home messages I have is that it is important to make a correct diagnosis, and we must look out for symptoms which include menstrual irregularities, all the cosmetic issues, infertility, diabetes during pregnancy, and increased presence of high cholesterol in women. Management depends on what the patient comes to us, and we must remember that this condition has to have long-term monitoring to prevent difficulties in these women during their lifespan and in their old age. So thank you very much for your kind attention, and I again thank the organizers for inviting me. Dr. Duru Madam, इतना क्रिस्टल क्लियर और क्रिस्प पीसीओडी के बारे में बताने के लिए, जो हमारे साथ सारी ऑडियंस जुड़ी है, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स और बाकी जो भी ऑडियंस हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी डाउट्स हैं, वी विल टेक दोस क्वेश्चंस एंड डाउट्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए.
12:30 बजे के आसपास हम प्रोग्राम के रिलेटेड सारे डाउट्स और क्वेश्चंस आपके सॉर्ट आउट करेंगे। डॉक्टर सुवर्णा मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे अगले स्पीकर डॉक्टर संपत कुमारी को इंट्रोड्यूस करें। श्योर। पहले मुझे बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम इतना बढ़िया रीति से आपने ऑर्गेनाइज किया है और इतने सारे एडोलेसेंट गर्ल्स हैव ये प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इतनी अच्छी जानकारी दी जा रही है। तो मुझे बहुत ही ये मैं आपके लिए बधाई देना चाहती हूँ। अभी नेक्स्ट जो स्पीकर है डॉक्टर संपता कुमारी, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड मैं उनका काम करने का तरीका, वो एडोलेसेंट कमिटी की चेयर रह चुकी है, उन्होंने उनके टेन्योर के दौरान इतना बढ़िया काम किया था एंड जो स्पीड से वो काम करती थी, मैं उनको हमेशा चेन्नई एक्सप्रेस बुलाती हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस फील्ड में काम किया है। और डॉक्टर संपता कुमारी आई थिंक हैज रिटन some books on and some chapters on adolescent health. I'm sorry, I cannot see the entire detailed biodata on this. So if somebody can read whatever points are there, but I think she doesn't need any more interaction than this. She is very, very passionate about adolescent health, and I'm sure she will enlighten all the सब लोग जो भी जुड़े हुए हैं उनको अनीमिया का जानकारी आप देने वाले हैं। अनीमिया आज इतना ज्यादा प्रभाव में एडोलेसेंट पॉपुलेशन में है। संपदा कुमारी जी, आप प्लीज उनको एड्रेस करिए और हिंदी में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उनकी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। मे बी इट इज डिफिकल्ट फॉर यू बट आई एम श्योर यू कैन डू जस्टिस। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। 1 minute। अपने सोसाइटी में बहुत ऐसे देखा जाता है कि मेल मेंबर्स को अच्छा खाना दिया जाता है और फीमेल्स और गर्ल्स को सबसे आखिरी में जो। First of all, I thank to Dr. Alpesh, our Foxy President, and Secretary Dr. Jaydeep, and VP Dr. Ragini, and Committee Chairperson Dr. Gradish for giving me an opportunity to address so much adolescents. Thank you. Ms. Swarna ma'am, thank you for your kind words. Good morning, children. How are you? See, what is adolescent? Adolescents already President and everyone has discussed about what is adolescence. They are neither children and they are neither adult. So it is our duty to streamline them in a correct way. As already mentioned, the population of adolescent is 22.6% at now. But as per studies, in 2030, it may increase to 40%. And we have conducted studies with the schools. In this, the adolescent population, 50% of the adolescents are anemic. When we do the hemoglobin level, more than 50% are less than 8 grams. So children, what is anemia? You should know. Anemia is a condition where your body does not have enough red blood cells. See, this is the normal where you have plenty of RBC. But this is anemia where you have only little RBCs. So anemia is where you not have enough red blood cells. So what will happen in each red blood cells? We have a protein called hemoglobin. This hemoglobin is necessary to carry the oxygen to the cells. So this hemoglobin value will assess your anemia, whether you are mild or moderate or severe. So this hemoglobin should be sufficient to carry this oxygen. What you need for the hemoglobin to carry the oxygen, you need iron content diet. So diet is very, very important to correct anemia. So these are all the diets which I will show you in the next picture. The fact, as per studies, the girls, 56% of adolescents are anemic and 30% boys are anemic. How they present with anemia?
most of them, they come with what are all the causes. First, you should know how anemia is coming. Then you will be knowing how to prevent it. The cause is mainly, as I mentioned, diarrhea and malarial infection. You may be having the evening rise of temperature, fever, that malaria infection. Then the hookworm, that worm, some worms will produce the anemia. It will enter through your, if you don't have the slippers, it will enter through your leg and it will enter into the circulation and produce anemia. And the girls, when they have excess bleeding during the periods, they will end up in anemia. And the tuberculosis, genital tuberculosis, also produces anemia in adolescent girls. And the bleeding disorder, some girls will have they have blood from bleeding from the gums when they brush and excess bleeding. This has to be corrected. Then the pica, some boys or girls will have the habit of taking mud and sands. This is called as pica. See, I will tell you everything. This is the worm which produces anemia. And this is by the mosquito bite. You can end up in the malaria with rise of temperature and it will end up in anemia. And as I told you, the tuberculosis. Tuberculosis means cough. If you have excess cough and if you go nearby, then you may end up in genital tract infection also and will produce anemia and the bleeding disorder. As some will be having the problems with the blood coagulation problem. That has to be diagnosed earlier. Since I am not very good with Hindi, I have written everything in Hindi in the bracket. The children, you can have a look with the Hindi words if you cannot manage with English. Again, the girls, as I mentioned, adolescents, these are all the changes with the boys and these are all the changes with the girls where you have the secondary sex characters. And if the bleeding, as the bleeding, how the bleeding comes, the brain has hypothalamus. From the hypothalamus, hormones go to pituitary. From pituitary, it goes to ovary. From the ovary, the hormone acts on the uterus. And from here, bleeding comes. If the bleeding is excess, normally, if it is exceeding more than 8 ml, how can you assess that? If you are having more than how many pads you are changing during the periods. If you are changing more than 10 pads, fully soaked. If you are having like this is not heavy bleeding. Fully soaked the bleeding. If you have changed more than 10, it is a heavy bleeding. In that condition, you should consult the doctor at an earlier stage. Otherwise, you will end up in anemia. How the boys and girls come and present with anemia. This is tiredness and weakness. Always they want to sleep. This is a complaint the children will tell. And when I climb the steps, I have difficulty in breathing, madam. And I am reading day and night, but I am not able to reproduce it. So I have the loss of concentration and memory. And I will have, sometimes there is a lot of hair loss and headache. Whatever I take, the good diet, good tablets, still I have the headache. And I look very paler, and some girls or boys, they come and tell that I feel giddiness. The children, they don't know what is giddiness, but still they will say it is something like rotating. And another cause which I told earlier, that is the worm infestation. The girls or boys, they come and present with itching in the anal region when they do the motion. And sometimes they also see small worms coming through the motion. So this is the symptoms which always they feel. See, if you are feeling that you are always feeling to sleep, tiredness, verify you are having the hair loss, see whether you are anemic. And if you are presenting pale and so white, don't think that you are so white. You may be suffering from anemia. So consult with the nearby doctors. And pica, this is the thing which I told. Some girls or boys have the habit of taking sands and stones. That is due to anemia and difficulty in breathing and headache. So these are. If it is coming, how you should assess? You should be assessed. I told you the color, that is paler, white color. It should be seen in the eye, whether you are pale, and it should be compared in the hands. See, this is the normal and this is the paler hand, anemia. Then put your tongue out and you can see this. You can see in your mirror itself whether you are anemic or not, and the nail beds. These are all the things which has to be watched for anemia. So now you know what are all the causes of anemia and how the symptoms will be and how you have to see that you are suffering from anemia. How it has to be prevented. This prevention is our main aim of our President, Dr. Alpesh Gandhi's
that no adolescents should suffer from any disease. They should be prevented before the disease. So how to prevent anemia? As I mentioned, what I told you, the first reason is diet. So if you have a well-balanced diet rich in iron, and so for absorption, you need some other vitamins. That is vitamin C. That diet, if you take, you can be free from anemia. This you can read, I think. See, what are all the diets rich? It is not costly. Whatever is available for rural and urban and everywhere, that I am telling. If you are a vegetarian, you go with the drumstick leaves and fruits and vegetables like tomato, carrot, beetroot, that is enough. Fruits, banana, it is very, very cheaper. That you can have. And again, rather than going for the rice, you can go with the wheat, chapati. Almost all of you will be having. Then this jaggery is having high iron content that you can take frequently. You can tell your parents who are watching this program, please give a lot of jaggery to our children. And the sprouts, this is also very cheap. This sprouts, at least weekly twice you should have. And this groundnuts, it is available everywhere. That should be taken frequently. And finally, this sesame. These are all the vegetarian diets which are rich in iron. And in the non-veg also, simple egg every day. Even in the Nool meal scheme, they are giving egg every day. So the fish and liver, you can take frequently. At least egg you can take daily. As I told you, for the absorption, other vitamins are also needed. What is the other vitamins? That is with the citrus. That is amla, orange, guava, that citrus with the food. If you take the absorption of iron, if you have a good iron diet, and absorption, that is by the intestine to absorb, it is not good, you can have this vitamins if you had, the absorption will be good. Then I told you about that prevention how. See, now this WIPS program, all schools, that is the government, panchayat, corporation, everywhere, they are giving the iron tablet, 100 milligram of elemental iron and 500 microgram of folic acid weekly once. I think children, all of you are getting from your school. That is mostly wherever schools I have visited, they have told that they are giving on Thursdays. So they will give weekly once of 52 weeks in a year. So all of you take the tablet. Don't get the tablet and spoil it. So you have to take this iron tablet. This will prevent you from anemia. Then I told you about the worm. This is also, it is given in the government set of schools and private, they should have it. That is the albendazole, 400 milligram. You have to take it once in 6 months. If you have the feeling of itching in the anal region, or if you see small worms that comes in your fecal matter, then you have to take this albendazole. The children who don't have these habits also should take, that will prevent you from anemia. Then, as I told you, the personal hygiene is very, very important. This brush teething habits should be in the morning, and before going to bed, you should have it. Otherwise, the bacteria will settle in the dental, and the dental problem infection will lead to anemia. And always you should take bath daily, because some girls have the habit of during the menstrual periods, they don't even go to schools, they don't even bath, they sit ideally in a single place. No, they should take the bath daily and wash your hair regularly. Otherwise, from the hair scalp, you can have infection. This washing hand, now you all will be familiar. The COVID, the main problem is wash your hands, wash your hands. Before taking food, wash your hands. Going outside, come wash your hands. After toilets, wash your hands with soap and sanitizer. This personal hygiene and the menstrual hygiene specifically for girls, you have to wash your private parts after urination and after defecation, and you should change your pads once in 6 hours. Then the water you drink should be a pure water, clean drinking water. Nowadays with the COVID, we are asking the water to be boiled with little pepper and tamarind. That will also prevent you infection and give immunity, and you will be free from anemia. And don't get any open foods, that is the foods which is sold in your outside the schools. We advise, but still in front of many schools, these things are going on.
So open foods don't take. Always you should eat the foods which are covered and which is prepared in good manner, in the hygienic manner should be taken. And I told you about malaria, mosquito. How can you prevent that? Malarial infections. So the the corporation will do it. If there is a mosquito in your place, please complain to the corporation and they will give the spray. And in the night you have used the mosquito net. If you use this, you can be free from mosquito bite. And the worm infestation, always when you go out and come, wash your legs with whatever it is, clean manner. And always wear slippers or shoes. If you walk with this barefoot, you can have that infection of the worm infestation and you may end up in the anemia. So always walk with slippers. If anemia is suspected, that if you have in the early stage, you should consult the boys or girls. You should report earlier. Our government is having this RBSK and RKSK program. This RBSK program, all doctors are specifically placed to go to the schools and they will visit all students, each student twice in a year. Once in a 6 months, they will go to the school and they will identify the cases and they refer to the nearby hospitals and nearby institute where there is the RKSK program. So the prevention is very, very important and it can be prevented. Anemia-free world is very, very important. The girls, you may be having the bleeding, as I mentioned earlier. It may be mild or moderate or severe, but identify it at the earlier stage and you correct it with some diet is very important. Again, you consult the doctor and correct with some tablets or hormones or whatever it is. If you don't correct it in the early stage, during your +2 exam, that too in the exam time, if you are having severe bleeding and severe anemia, you have to get admitted and for blood transfusion. So, assess your anemia at the earlier stage itself. Next, anemia should be corrected during adolescence itself. If you don't get corrected in the adolescence, still, as the previous speakers was telling, the teenage pregnancy is going on, teenage marriage is going on. This should be avoided. If at all they get married before 21 years and they become pregnant so early, and in this present situations are every time that death due to pregnancy 20 to 30% is because of anemia. So anemia has to be corrected in the early stage adolescent itself, and you should not get married earlier. And if at all you get married, postpone your pregnancy with contraception as our Purandare sir was advising. Otherwise, during the pregnancy, you will have more bleeding. That is very common with adolescent pregnancy. And you will have increased BP, blood pressure will be increased. And you will throw fits. Then it will be a problem for you. Then again, your pelvis, there will not be a place for this baby to come through your pelvis. It will be a problem. Finally, what can happen? Sorry to interrupt, Dr. Sampath, madam. I have finished. So, the children, the conclusion is balanced diet. 3 meals and snacks. When you are 12 years age, your hemoglobin should be 12 grams. Wash your hands before food and after toilet. Maintain a menstrual calendar and menstrual hygiene. Marriage should be only after 21 years. Avoid teenage pregnancy. Then you can dream what you want to become. Thank you. Again, I thank the Foxy team for giving me an opportunity to address the adolescents. Thank you. Okay, I think that was a very nice deliberations, Dr. Sampatha. Thank you, ma'am. बच्चों को काफी अच्छी जानकारी दी आपने. स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये अच्छा मैसेज उनको दिया है आपने. और मुझे उनके माता पिताओं को बोलना है कि भाई आपकी जो लड़की है उसका भी खाना पूरा एनरिच होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए. ऐसे ना हो कि आपने बस बच्चों को, लड़कों को ज्यादा खाना दिया, लड़की को छुपा दिया, बाद में थोड़ा सा खाना दिया, हरी सब्जियां नहीं दी और प्रोटीन्स नहीं दिया. ऐसे हो गया तो आपकी बच्चियां एनीमिक होने वाली हैं. तो एनीमिया से बचने के लिए ट्रीट एवरी चाइल्ड ऑफ योर्स इक्वली and every family member equally, and every member should get
अच्छा खाना, अच्छा स्वस्थ रहना, ये मैसेज बहुत अच्छा दिया संपदा जी. और इसके साथ डॉक्टर चंद्रावती, would you like to say something? Yeah, I said Sampath, first thing, congratulations for writing everything in Hindi. Even if thank you, ma'am. It was lovely, and it was lovely to see those full plates of food. You know, you start feeling hungry all the time. So thank you very much. It was a lovely lecture, and I think it was very educative. Thank you, It madam. was lovely to hear. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, organizers. Then we conclude this session. Thank you. Thank you, Swarna ma'am. Bye. The video will be put on. Immune system helps in actively fighting infection. Nutrition supplements are useful for supporting your natural immunity. Nutrients like vitamin D and calcium play a vital role in boosting your immune system. Strong immunity helps in fighting repeated infection and hence strengthen your immunity to fight off infection. Thank you, Chairperson and speakers of the previous session. May I now invite the Chairpersons for the third session, Dr. Neeta Dabai and Dr. Chandan Kachru. Dr. Neeta Dabai is a senior clinical research scientist and consultant, Ops and Gynae Center for Health Research and Development, Society for Applied Studies from CHRD, SARS Community Research Center, WHO, and she's the chairman and director of Unfold Foundation and Adolescent and Youth Health Initiative. The second chairperson is Dr. Chandan Kachru. She has done her master's in adolescent health from Imperial College London. She is trained in adolescent health from WHO and from the Lausanne University, Switzerland. She is the executive committee member of the Adolescent Committee of FOXI, and she has got lots of research papers and publications in national and international journals. I now welcome Dr. Chandan Kachru to introduce Dr. Girish Mane, the chairperson of the Adolescent Committee, for his talk on role of vaccines. Thank you, Dr. Charbila. That was very nice introduction. Good morning, India. What a proud moment for us to connect with so many of our young friends, their teachers, their parents. I welcome you all. For the next session, I will invite Dr. Girish Mane, who is the chairperson of our Adolescent Health Committee, and he is a recipient of many awards in his lifetime as a gynecologist. He is director of Mane Hospital, Yavatmal. Dr. Girish Mane will be talking about vaccination in adolescents, which is a very important topic in terms of prevention of diseases in adolescents. Welcome, Dr. Mane. Thank you, madam. Thank you so much. Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So, good morning, boys and girls. Good morning, parents. Good morning, teachers. Good morning, principals. Good mornings, all lovely Foxians, and thank you so much for joining this program. हम सब आपके बहुत आभारी हैं. और today I'm going to talk with you on the vaccines and importance of the vaccines in adolescents. This is my CV. बच्चों, आप जो भी adolescents है, youngs है, आप सब हमारे you are the future of India. आप सब भारत की आशा है. You are the hope of our India, and that's why adolescent is a very most responsible period of your life. You know, हम बहुत बार बोलते हैं कि बच्चे तो they are not having the responsibilities, but मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा responsibilities हम बच्चों पे है, because you are the future of our India. बच्चों, मुझे एक बात बताइए, which one is more affordable? Whether you will afford to have this helmet, or would you like to wear this bandage on your head? और ये सीन अच्छा लगता है. Of course, मुझे मालूम है आप सबको लगता होगा कि no, helmet is definitely affordable. Why? Because it is preventing the threat to the life. हम हमेशा सुनते हैं कि prevention is better than cure. हम क्यों बोलते हैं कि prevention is better than cure? Because prevention is always very easy, isn't it? Then it is always cheaper. Then it is non-complicated and it doesn't need skill. For example, किसी का अगर accident हो जाए, तो मेरे ख्याल से हेलमेट पहनना इजी भी है, चीपर भी है, इट इज नॉन कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज नॉट, आई मीन इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ स्किल. बट अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, isn't it? And the same thing is applicable for the health also. You know, there are many diseases in your age group and they are definitely preventable, and this is what today we are aiming and we are theming this program all about. There are thousands of deaths in the adolescent per year with the diseases like typhoid, like meningitis, like pneumonia, hepatitis, whooping cough, diphtheria, even
द कैंसर ऑफ सर्विक्स, मतलब जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, जो मतलब फीमेल्स के अंदर में सबसे ज्यादा डेथ होती है, ये सब हम बचा सकते हैं अगर हमने प्रॉपरली वैक्सीनेशन किया तो. सो हाउ कैन यू सेव ऑल दिस, और हाउ कैन यू प्रिवेंट ऑल दिस डिसीजेस? ऑफ कोर्स थ्रू द वैक्सीनेशन इन द एडोलेसेंस. आपके मम्मी पापा ऑलवेज दे से दैट we have to protect our kids, isn't it? बच्चों, एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि what exactly the immunity is, है ना. हम बहुत बार बोलते हैं इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी ज्यादा है, तो मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में what exactly the immunity is. Immunity is nothing but it is a fighting power of our body and it is run through the immune system. immune system के द्वारा ये हमारे शरीर में फाइटिंग पावर डेवलप हो जाती है. हम किसी भी इन्फेक्शन को जो फेस करते हैं, जिन्हें हम एंटीजन बोलते हैं, ये एंटीजन बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये एंटीजन वायरसेस हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी चीज जो हम आपके शरीर को इन्फेक्ट कर सकती है. जब इनका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर हो जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बनाती है. जिस तरह से चाइना, पाकिस्तान जब हमारे देश के ऊपर अटैक करते हैं तो उनको उनके साथ फाइट करने के लिए हमारे सैनिक काम करते हैं, उस तरह से एंटीबॉडीज दे फाइट्स विद दीज एंटीजेंस. जैसे कि हमारे सैनिक सारे दुश्मनों को एक सरीका मारते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटीजन. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे शरीर में चिकन पॉक्स की एंटीबॉडी तैयार हो गई होगी या होगी, तो वो शायद दूसरे जो एंटीजन है उसे नहीं मारेंगी. इसलिए वैक्सीनेशन हर तरह के डिजीज के लिए अलग होता है. तो हम आज शॉर्ट में उसके बारे में आज चर्चा करने वाले. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दिस वैक्सीन वर्क्स. When you are sensitized with the antigens, either antigens or the vaccines, तो आपके बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, it produces the antibodies in your body. Most of the antibodies they remains in your body permanently. लेकिन अगर वो परमानेंट नहीं होते हैं तो वो कुछ सालों तक रहते हैं, जिन्हें हमें बूस्टर डोज के द्वारा और आगे शरीर में तैयार करना होता है. सो फ्रेंड्स, मैं आपके सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज नेवर से नो टू द वैक्सीन. जब भी आपका शेड्यूल हो या आपको एडवाइस किया गया हो तो आपने वैक्सीन लेना चाहिए. नाउ मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. Vaccination means to administer a vaccine in your body, which is mostly through the injection. Sometimes वो nasal या oral भी दी जाती है. And immunization is what happens in your body after vaccination, isn't it? Do you know this person? Yeah, this is a great scientist, Louis Pasteur. उन्होंने हमेशा कहा है कि जब मैं किसी डिसीज के बारे में सोचता हूं तो मैं उनके दवाई के बारे में नहीं सोचता, बट मैं उस डिसीज को भविष्य में ना होने देने के बारे में सोचता हूं. What a great thought, isn't it? इवन बिल गेट्स ने भी कहा है कि बगैर प्रिवेंशन की जो भी बीमारियां हैं उनमें ज्यादा खतरा होता है, ना केवल व्यक्ति को बट देश को भी खतरा हो जाता है. प्रिवेंशन हमें एक ही बार करना पड़ता है, लेकिन हमें इलाज बार बार करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, और कभी कभी जीवन भर भी करना पड़ सकता है. इसीलिए इम्यूनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिजीज प्रिवेंशन मेजर. फ्रेंड्स, in India, there are 243 million adolescents who constitute almost 21% of the total population. बहुत ज्यादा है हमारी population, इसलिए हमारे देश को young country भी कहा जाता है. And there are thousands of adolescents who died because of the communicable diseases that could have been prevented by vaccination, like meningitis, like whooping cough, like hepatitis, diphtheria, typhoid, pneumonia, and so many. Even the cancer of cervix, it contributes a heavy burden in the mortality of the females in the later age, and these all things can be definitely prevented by vaccination at the younger age, at the proper age, isn't it? There are two aims of vaccination in the adolescents: to create the immunity in the absence of natural boost due to the exposure of the particular disease. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके शरीर में इम्यूनिटी नेचुरली डेवलप हो जाती है, और अगर उसके शरीर में ये नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई तो हम वैक्सीनेशन के द्वारा उनके शरीर में इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो परमानेंटली उस डिजीज से बचा जाए. और सेकंड एम इज टू बूस्ट द इम्यूनिटी स्टेटस दैट इज विनिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी इम्यूनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को टिटेनस का वैक्सीन बचपन में दिया गया है तो उसको बरकरार रखने के लिए हम दोबारा जब उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो दैट इज द सेकंड एम ऑफ द वैक्सीनेशन. Friends, the adolescent immunization in India can be improved by strengthening of the healthcare system, by significant improvements in the healthcare functionaries to provide and to deliver the vaccines to the adolescent. और सबसे ज्यादा important है, हम तभी हमारा adolescent immunization status improve कर सकते हैं जब खुद बच्चों को टीकाकरण और उसका महत्व समझ में आएगा.
बच्चों के टीकाकरण के द्वारा हम ये 14 भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिप्थेरिया, पोलियो, वुफिंग कफ, हेपेटाइटिस बी, मम्प्स, टिटानस, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकॉकल डिजीजेस, measles, meningococcal diseases, chicken pox, hepatitis A, rubella, and HPV. So out of all these 14 different diseases, these four which are written in the red color, they are more important. That is HPV, and whooping cough, influenza, and meningococcal disease. Why they are important? Because HPV matlab human papilloma virus, it causes around 2,47,663 cancers in the males as well as in the females in India. It's a huge number. And in India, 1 in the 3 whooping cough cases, they occurs in the adolescent age group. This is very important. And influenza affects almost 14 to 24% of the population of India, and 20 lakh hospitalization each year, which can be prevented by proper immunization against the influenza. And 21% meningococcal cases, they occurs in the adolescent age group between 11 to 24 years. And please note that almost 10 to 15% adolescents, they die in these diseases. So friends, the vaccination is a very integral part of your life. 2006 के पहले एडोलेसेंट्स के अंदर में केवल टिटानस और डिप्थेरिया का जो इम्यूनाइजेशन है वो होता था, लेकिन since last 10 years or since a decade, now there is we have introduced HPV vaccination, influenza, pertussis, and meningococcal vaccination in the list of adolescent protection. And according to the National Immunization Survey of Teens, the uptake of this vaccination is uneven and it is unsatisfactory. So it's a duty of every parent as well as the duty of the adolescent to be sure for your vaccination whenever needed. This is the recommended schedule of the vaccines of adolescents according to the CDC. I won't be going in detail because this is the information to be given to the doctors. This is the recommended adolescent immunization in India after 2016. In the age group, after the age group of 11 to 12 years, these are the 3 very needed vaccinations: Tdap, HPV, and annual influenza. Then catch-up vaccines. Catch-up means the person who has either missed or has not completed the schedule of the vaccines, they are called as catch-up. So catch-up vaccines are MMR, hepatitis B, typhoid, varicella, and hepatitis A. And high risk means sometimes you have to migrate in some places where the diseases are common, or you are coming in contact with the person who is already infected, or sometimes if a boy or a girl, unfortunately she is receiving some of the medications chronically. For example, she is getting the doses of the steroids, or if some person is immunocompromised, or sometimes if she is having either HIV, then this group is in the high risk group. And that's why the pneumococcal vaccine, the meningococcal vaccine, the vaccine against the Japanese encephalitis, and cholera, rabies, this is registered according to priorities in the adolescents in India. Number 1 is HPV vaccine, then is the dengue vaccine, that is the vaccine against the flu, then Tdap, then MMR, then hepatitis B, the typhoid vaccine, the varicella vaccine, and hepatitis A vaccine. Now we are going to see in short about some important vaccines. The first and most important is human papilloma virus vaccine. There are 100 types of HPV viruses identified, out of which 30 to 40 types, they infect the anogenital region, causing the different cancers or warts in the boys and the girls. And the cancers with the cancer they will create in the later age. There are some low risk viruses, there are some high risk viruses, and out of these 100, 15 to 20 they are oncogenic. Oncogenic means which can create cancer in the body. Can you identify this figure? This is not the diagram of any ice cream. It is looking like a Tinshaw's or Wadia ice cream, but friends, this is the this is the human papilloma virus. And these 6, that is HPV6, HPV11, HPV16, and 18, they are the viruses which is the cause for the cancer cervix in the female. You can see this chart showing the incidence of the cervical, anal, vulval, or penile or oropharyngeal cancer, and HPV cases are more than non-HPV cases, and that's why this vaccination is very important. Kind of vaccines for HPV, the prevent and the bivalent, both these vaccines, they covers the HPV infection of type 16 and 18, but the quadrivalent will prevent the 4 different strains, that is 6, 11, 16, and 18. You don't need to go in detail of that. The recommendations are the 2 doses should be given in the between the age of 9 years to 14 years. हमें 9 से 14 के बीच में 2 doses देना है. 14 के बाद में
3 डोज हम बच्चों के लिए एडवोकेट करते हैं। एंड कैचअप वैक्सीन जो होती है, इट इज परमिटेड अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स, मतलब 45 साल तक हम कैचअप वैक्सीन दे सकते हैं। और एचपीवी वैक्सीन लेने के बाद में जो वल्वल मतलब जो वजाइना का जो कैंसर है या जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये सब की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। एंड देयर इज अ रिडक्शन इन द एनोजेनिटल वार्ड्स, मतलब जो बच्चों को एनोजेनिटल रीजन पे वार्ड्स होते हैं, फोड़े आते हैं, उनका भी जो चांस है वो रिड्यूस हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द फ्लू वैक्सीन, एवरीबडी नोज द फ्लू। सो फ्लू वैक्सीन, फ्लू वायरसेस के 2 टाइप होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, एंड वैक्सीनेशन भी उनकी 2 तरह की है। नंबर 1 इज इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन, जिसके अंदर में जो वायरस होता है उनको किल किया जाता है और उनको इनएक्टिवेट किया जाता है, वो एक तरह का वैक्सीन है। और दूसरा जो वैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, जिसके अंदर में जो वायरसेस है वो जिंदा है, बट उनकी जो डिजीज क्रिएट करने की कैपेसिटी है उसको खत्म किया हुआ रहता है। और ये जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये साल में हमेशा रिपीट करना होता है, बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर है वो ईयरली चेंज हो जाता है। Now, which person should get the flu vaccine? Again, I have already told you that children aged 6 months up to their 19th birthday should be given flu vaccine. सभी जो गर्भवती माताएं होती है उनको फ्लू वैक्सीन देना चाहिए। देन 50 साल के ऊपर में जितने लोग हैं उनको भी देना चाहिए। और कोई भी पर्सन जिसको बहुत क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है या HIV या कुछ भी डिजीज हो, उन्हें प्रेफरेबली देना चाहिए। और जो लोग नर्सिंग होम में या अदर केयर टेकिंग फैसिलिटीज में काम करते हैं उन्हें फ्लू की वैक्सीन देनी चाहिए। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन इज Tdap वैक्सीन। Tdap is the recommended instead of TD, क्योंकि देखो Tdap मींस उसमें परट्यूसिस नाम के एक डिजीज की वैक्सीन ऐड है और TD मतलब टिटानस एंड डिफ्थेरिया। लेकिन आज के दिन में हम TD की जगह पे Tdap वैक्सीन रिकमेंड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि Tdap थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका जो हमें कवरेज मिलता है वो ज्यादा मिलता है, इसलिए कॉस्ट शुड नेवर बी ऑब्स्टेकल इन टेकिंग द वैक्सीनेशन ऑफ Tdap। और उसका कम से कम एज 7 years होना चाहिए। एंड 1 dose of Tdap vaccines to all adolescents should be given at the age of 11 to 12 years. Pertussis मतलब खांसी, according to WHO, इंडिया भारत के अंदर में 2016 के साल में टोटल केसेस वेयर 37,274 एंड इसमें जो है इसकी इम्यूनिटी 4 या 5 साल के बाद में कम हो जाती है और 10 से 12 साल के उम्र में ऑलमोस्ट इसकी इम्यूनिटी, परट्यूसिस की इम्यूनिटी नील हो जाती है। और इसीलिए परट्यूसिस के सबसे ज्यादा जो केसेस हो जाते हैं वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट it's a critical time for the acquisition of this pertussis. Adolescence is a critical age, isn't it? Now coming to the MMR, the minimum age is 9 months, and there were almost 71,726 cases of measles in India. Extremely sorry to interrupt, Girish. Yeah, madam. Yeah, I'm little bit. See, rubella हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कुछ तकलीफें नहीं देता है, लेकिन जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके बच्चों के अंदर में कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम बहुत ही भयंकर बीमारी देती है, इसलिए रूबेला का वैक्सीनेशन करना चाहिए। The other important vaccines are hepatitis B, typhoid, then this is varicella vaccination, means chicken pox, pneumococcal vaccine, meningococcal vaccine, and friends, now I'm coming to the take home message, which is very important, और please ध्यान से सुनिएगा। The first take home message is to wear helmet on the head is better than to wear the bandage, and prevention is always better than the cure everywhere. And likewise, the vaccinations are always better than the diseases. Okay, the treatment can be for multiple times, but the vaccination will be only for one time in your life. The adolescent immunization will produce the healthy future of India. Vaccination will protect you forever. Vaccination routinely recommended in the adolescent are Tdap, HPV, and influenza. And the other vaccinations are PCV, MCV, and hepatitis B. The catch-up dose of the missed vaccination can be given at any time. और सबसे important ये चीज है भाई दोस्तों कि preferred sites of intramuscular vaccines in the adolescent is the upper arm in deltoid area, ये यहाँ पे दी जाती है, and not on your pumps. So दोस्तों कभी भी वैक्सीनेशन से डरना नहीं और वैक्सीनेशन से कभी घबराना नहीं और उससे कभी भागना भी नहीं। Thank you so much, staff of my hospital, and I'm really thankful to all the organizers, Dr. Alpesh Gandhi, Dr. Ragini Madam, and whole team of Adolescent Health Committee, and special thanks to my mummy, papa, my wife, and my young children, Vrindan, Chaitanya. Thank you so much.
Thank you, Girish, for that passionate talk on adolescent health. I think it reached the audience. May I now request the second chairperson, Dr. Neeta Dabai, an eminent adolescent health specialist, to introduce Dr. Ragini Singh for her talk on psychological disorders in adolescents. Hello, everyone. At the outset, I would, am I audible? Yes, yes, very clear, ma'am. Yes. Okay, thank you. And at the outset, I'd like to thank Dr. Girish, Dr. Ragini, Chandan, and Foxy, Dr. Alpesh for making me a part of this fantastic program. And I am not in the color code because I am actually now joining in an emergency situation, but I had to make time for this. And my proud privilege to introduce Dr. Ragini Singh. She is a senior consultant Obs and Gynae from Jamshedpur Obs and Gynae Society. She has been the vice president of the Association of Obs and Gynae of Bihar and Jharkhand. And she is going to speak on a very sensitive issue, psychological disorders in adolescents. It is actually trending these days. And बच्चों को अपने फिजिकल ग्रोथ के अलावा अपना जो मानसिक तनाव है और मानसिक ग्रोथ है उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है. So I invite Dr. Ragini Singh to kindly start her talk on psychological disorders in adolescents. मैम आपको कंट्रोल दे दिया गया है, आप पीपीटी स्टार्ट कीजिए. Okay. So very good afternoon to all. First of all, I would like to thank Foxy, our president, Dr. Alpesh Gandhi, and the Adolescent Committee for giving me this opportunity to speak in front of such a large audience and a very, very important subject, that is psychological disorders in adolescents. Adolescence refers to the period of human growth that occurs between childhood and adulthood, but it is also a difficult journey of self-exploration and interaction with the world. एक बच्चे के मन में अपने आप को समझने का समय और साथ-साथ अपने आसपास को भी समझने का समय, ये एक बहुत ही difficult situation हो जाता है एक बच्चे के लिए. It is too much for that child to handle. In general, adolescents do not develop serious psychological or social problems, contrary to media portrayals. जैसे मीडिया में दिखाया जाता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है. Most problems reflect transitory experimentations, not enduring patterns of bad behavior, and most of these problems do not persist into adulthood. ये बस थोड़े समय के लिए होता है, adulthood तक नहीं पहुँचता. So what are these psychological problems in adolescents? You can see a huge range starting from physical changes, emotional changes, to depression, school phobia, stress, suicide, and self-harm. Many of these things will be taken up and has been already taken up. So let me quickly go to these. Physical and emotional changes are hormone dependent. What is the solution? Since puberty can be an emotional roller coaster ride, make them aware and adapt to these changes, explaining that it is normal and every adolescent goes through it. हर बच्चे को इससे गुजरना है, ये आपको अपने बच्चे को समझाना है. Behavioral changes and substance abuse and use and abuse, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वर्ल्ड ओवर, हर एक पेरेंट के लिए. और पीयर प्रेशर जो है यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फैक्टर प्ले करता है. Adolescence is the time when kids develop and exercise their independence, questioning the parents' rules, and this is taken as argumentative. Parents सोचते हैं कि अरे अभी तक तो हमारी सब बातें सुनता था, ये क्या हो गया, all of a sudden ये एकदम हमारे साथ argue कर रहा है. And standing up for what they believe is right is seen as stubbornness. ये तो ढीठ हो गया, हमारी बात ही नहीं सुनता है. So these things you have to, how you will tackle it. These are just simple overwhelming emotions which can lead to impulsive behavior.
So what to do? Behavioral problems, we all know that can make life difficult for a parent. But remember that it is a passing phase and is entirely normal. You have to keep an eye on your child's behavior. Look at for any erratic behavior or a change in his or her appetite. ठीक से खा रहा है कि नहीं, सो रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है. Do not spy. जासूसी नहीं करनी है on them or accuse them of any wrongdoing. Encourage them to talk, to be honest, tell them what your concerns are and discuss the problem with them. Gaining your child's trust is important if you want to help them. अगर आप सचमुच में अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो आपको उसका विश्वास जीतना होगा, तभी आप उसकी सच्चे में मदद कर सकते हैं. Talk to them and listen to what they have to say. Don't judge or criticize them as it could worsen their behavior. Listening capacity बढ़ानी होगी. आपको चुपचाप बैठना होगा, समय देना होगा अपने बच्चे के पास, ताकि उसके अंदर इतना टर्मोइल हो रहा है उस छोटे बच्चे के अंदर, वो बहुत कुछ आपको सुनाना बताना चाहता है, तो आपको उससे सुनना है. और जहां वो ट्रस्ट उसमें आ जाएगा कि ये इनके पास हम जाके अपने मन की बात कह सकते हैं, तो फिर वो आपको सब कुछ सुनाने लगेगा. आप वो पहले ही शुरू कर देंगे उसको जजमेंटल होना, उसको क्रिटिसाइज करना, चुप कर देना, बस तुम बकवास करते हो, तो फिर दैट चाइल्ड विल विड्रॉ. वो अपने आपसे दूर होता जाएगा. वो बॉन्ड जो एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में है वो नहीं हो पाएगा और उसका बिहेवियर जो है खराब होता जाएगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न टू लिसन एंड गिव टाइम, प्रॉपर टाइम टू योर चाइल्ड टू गेन दैट चाइल्ड्स ट्रस्ट. Educational challenges and health problems. High school is not all about fashion, friends and parties. Kids also have lot of educational activities on their plate, and this can be tiring and stressful and can make your child moody. हम लोगों ने देखा है कि ये बहुत vulnerable emotionally, physically भी होते हैं. They are susceptible to illnesses क्योंकि इनको ठीक से ये अपना खाना पीना देखभाल नहीं कर पाते हैं. और WHO की 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से पता चलता है कि 1.3 million adolescents died just because of preventable diseases. So people have already spoken about nutrition, exercise and what it can do, give them strength, endurance. तो balanced diet के बारे में already हमारे eminent speaker ने बोल चुका है पहले. So social problems in dating and relationships and addiction to cyberspace. I will not go in detail because somebody is going to speak on it. Now, most important of all are stress, depression, suicide, and self-harm. Around 50% of mental health disorders in adults begin at the age of 14, and 1/3 of adolescent deaths are suicides triggered by depression. तो अगर आपका बच्चा आप देख रहे हैं कि उसके मूड में चेंज हो रहा है, वो खाना पीने नहीं खा रहा, वो ठीक से सो नहीं रहा है, तो दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड. आपको ये समझना है कि ये बच्चा कुछ प्रॉब्लम है. You have to get professional help for them. You cannot, because this can lead to serious mental health issues which has to be dealt with as an emergency. क्योंकि अगर आप डिप्रेशन को छोड़ देते हैं तो वो बच्चा कल हो करके सुसाइड कर सकता है. और ये सोच करके भी आप प्रोफेशनल हेल्प अगर नहीं लेते हैं कि ये बच्चे के ऊपर टैग लग जाएगा कि ये तो पागल है इनका बच्चा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए. ये बच्चा अगर ये एक छोटा बीमारी से गुजर रहा है, एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो जिसका ट्रीटमेंट है काइंडली उसका ट्रीटमेंट कराइए और समय पे कराइए. नहीं तो ये डिप्रेशन आगे बढ़ करके जानलेवा हो जाएगा. The symptoms of depression are so universal that it is sometimes called the common cold of psychopathology. Children who are depressed can't shake their sadness and it interferes with their daily routines. और कभी-कभी ऐसा होता है कि it is not recognized. वो बच्चा वो grief, वो depression में ही जीता रहता है. So what are the treatment approaches? There are antidepressant medications, psychotherapies, cognitive behavioral therapy, family therapy. So these should be tried and tried on time.
adolescent suicides 20% girls, 20% लड़कियां, 10% लड़के, ये इनको ये आइडियाज आने लगता है, सुसाइडल आइडिएशन होता है इनको. कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजुरी करते हैं. दे आर अटेंशन सीकर्स, उनको वो अटेंशन नहीं मिल रहा है तो वो ये सब हरकत करते हैं. तो ये जो बड़े हैं उनको समझना होगा कि why they are doing these things. Another important thing is risk factors for suicide, जो हम लोगों को समझना है, और हर किसी को, हर पेरेंट को, हर टीचर को इन रिस्क फैक्टर्स को जानना जरूरी है. अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपको दिखते हैं तो काइंडली टेक एक्शन. हैविंग अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम which is, अगर उस बच्चे को पहले से डिप्रेशन है या सब्सटेंस अब्यूज है. सेकेंड रिस्क फैक्टर इज हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड. थर्ड, एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम फैमिली कन्फ्लिक्ट, अगर उसके घर में बहुत सारा प्रॉब्लम पेरेंट्स के बीच में हो रहा है, रिजेक्शन है, और अगर वो बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन में है. तो व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. This slide says it is a gap between our expectations and reality. More the gap, more the stress. But the most important thing is stress management. ये हम लोग हर किसी को आना चाहिए, ना सिर्फ बच्चे को, पेरेंट्स को, हर एक इंसान को stress management आना चाहिए. Stress is something that everyone experiences, so learning how to cope with it is something that everybody needs to master for their own physical and psychological well-being. Otherwise, it is going to affect them, affect their personal relationships, their psychological illnesses, physical illnesses, and poor productivity. So adolescents, it has been seen that those who have high esteem, high self-esteem, healthy identity, high intelligence, or सोशल सपोर्ट, माँ बाप का सपोर्ट है उनके, तो ये लोग, इन लोगों को स्ट्रेस नहीं होता. I'll give you little stress management tips. People can learn to manage stress and lead happier, healthier lives. Here are some tips to help you keep stress at bay. So first and foremost is, stress is for everyone. This we have to know, that it is not for me or for anyone else. It is for everyone. You cannot run away from it. It will keep coming again and again and bother you. So most important is identify the stress, identify the problem, and handle it. You can even write it down. Write it down, your problem. Think of solutions. And most of the times we are aware of the problem and we are aware of the solutions also. It's only to acknowledge and implement it. हाँ, उसको समझना है और उसको करना है. और ये कैसे होगा? अगर आपकी प्रॉब्लम है और आपको उसका सलूशन भी कुछ आ रहा है, तो आप जाइए अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, वेल विशर से बात कीजिए. इफ दे एक्नॉलेज इट, इट विल बी ईजियर टू इम्प्लीमेंट. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट. आप लोगों ने अभी तक, आप बच्चे अभी 10th 12th में आ गए हैं, इतने सारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, तो ये छोटे छोटे हैं, आप लोगों ने कितने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं. रोज बड़े बड़े मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना सीखिए. हाउ टू हैंडल इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम टुडे. Another important factor is think positive and create happiness. If you learn to create happiness and be positive, you will not have stress. Adapt to the changed circumstances. Adapting to the new situation and finding out opportunities is called maturity. तभी हम लोग आपको कह सकेंगे कि अब आप बड़े हो रहे हैं, आप mature हो रहे हैं. And this will show strength, and that is also very important. Take charge of your situations. Be the master of your destiny. Don't blame others for it. हर चीज के लिए दूसरों को blame करना सही नहीं है. So who are those who are more stressed? Those who do not have problem solving ability. वो जानते नहीं है कि problem है, लेकिन इसको solve कैसे किया जाए. Those who are not creative. Those who are not creative, they have this difficulty of not solving their problems because creativity can generate so many answers to a single problem. A person might have only one answer,
but a person who is creative keeps exploring and has many answers to that single problem. So he's at times 4 steps ahead, and that makes him happier person. Why a person commits suicide? He or she feels helpless at that point of time. उसको ऐसा लगता है कि हमारे पास अब कोई solution ही नहीं है, अब हम क्या करें? तभी वो suicide करता है. तो ऐसे वक्त पे अगर कोई व्यक्ति वहां पे आके उसको एक छोटा सा solution देता है, that can generate hope and save a life. So this is how a creative person can find solutions for himself or for others to and again create happiness. So you have to learn these things to create happiness and be happy, be a creative person and be a problem solver. Those who lack communication skills, they cannot express their feelings and thoughts. They bottle up, अंदर ही अंदर भरते रहते हैं और कब जब इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं और फिर इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनको मिलता ही नहीं है. सो लर्न हाउ टू कम्युनिकेट एंड लर्न हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. Identify your problems, discuss it with your parents and well-wishers, teachers with an open mind. This is also very important. If अगर आप पहले से ही कोई preconceived thought लेकर के अगर जाते हैं, तो you will always object जो भी सामने वाला कहेगा. इसलिए कोई भी discussion आपको करना है, आप कुछ भी problem solve करने के लिए किसी से help लेने जा रहे हैं, go with an open mind. Learn to say no. This is also an important thing to reduce stress. I'm sorry to interrupt, ma'am. Yes. I'm sorry to interrupt, ma'am. You've got a minute to finish. Yes. Okay. If you are not comfortable with anything, do not do it. It will increase your stress. For example, if your friend suggests you to smoke or drink to de-stress yourself and come out to enjoy a rash driving, politely refuse because this is not the correct way to de-stress yourself. You will be further aggravating your stress by telling lies or hiding these things. So to decrease these things, you have to learn to say no. Learning to compromise is maturity, and taking 2 steps back is not a defeat, it is a technique to come back stronger. You have to learn to take small steps. If you take a larger leap, you are liable to fall. तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं. 2 important things रोज लिखिए, उसको accomplish कीजिए, और this will give you confidence and you will do better next time. So practice these few things. If you learn to manage most of your stress, in fact, you will not have stress at all. A small tip for the parents: avoid giving away your powers. This is like if your teen loves to push your buttons and makes you react negatively. During these moments, the more you react and become upset, the more the teenager will think he or she has power over you. So she has succeeded. So keep your cool, be less reactive. The less reactive you are to provocations, the more you can judge better and handle the situation better. So identify how to intervene early and appropriately. What is this? When in mid-situations, try to smile and not always frown. Give them a chance to help solve problems and do not be judgmental and allow the child to come to you for help. For teachers, you are the first ones. आप लोग सबसे पहले वाले हैं जो एक एडोलेसेंट के प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं, इसलिए इसके वार्निंग साइंस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. और आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म करना होगा पेरेंट्स के साथ, एक अच्छा कल्चर स्कूल में फॉर्म करना होगा. तो ये छोटे टिप्स आपके लिए है. और my slide is not moving. Madam, the time is over. So okay, the last slide, just last slide, please. Please show that last slide. Yeah. So adolescence is not all about problems, but a very special phase in our lives. In fact, a time to learn to solve our problems and thus lays a strong foundation for a healthy and happier life. ये हर एक इंसान अगर करने लग जाए तो ये एक जीवन की आधारशिला है. आज से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कीजिए. जब आप बड़े होंगे अपने आप ये सीख जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आपको कल होकर के ज्यादा मुश्किल नहीं होगी. सो थैंक यू ऑल फॉर पेशेंट हियरिंग. Thank you very much, Dr. Ragini.
To sum up, this was a very good session about the psychological issues of adolescents. My 2 points here, that vaccination is not only for children, because we have this notion that it's only for children, but it's for the adolescents and the young adults as well. And to understand the psychological problems of adolescents, the parents as well as teachers should understand that the brain of the adolescent is still growing. The prefrontal cortex for reasoning is growing till 24 years of age. So they should be patient, and thank you very much, Dr. Alpesh sir, Dr. Ragini Agarwal ma'am, and Dr. Girish for giving me the opportunity to chair this session. Dr. Neeta is there? Dr. Neeta is there? Dr. Neeta? Hello. Yeah. Your sum up, please. Yeah, so thank you very much. I think both the presentations were excellent. Vaccination is of paramount importance in protection and prevention of adolescent problems. And I especially do identify with the psychological disorders which Dr. Ragini so elaborately talked about. I especially like the tips which she gave. And I concur with Dr. Chandan's view that yes, the prefrontal cortex is still growing. So एक छोटा टिप पेरेंट्स के लिए है कि आप इंतजार करें एंड गाइड करें अपने बच्चों को. आप उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बनिए, आप उनका गाइडिंग लाइट बनिए, और बच्चों को यही कहना है कि जस्ट वेट, यू आर ग्रोइंग इन हाइट, यू आर ग्रोइंग इन वेट, एवरीथिंग इज डेवलपिंग एंड सो इज योर ब्रेन. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच everybody. Thank you Alpesh, thank you Dr. Garish, thank you Chandan and Dr. Ragini for making me a part of this. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Neeta and Dr. Chandan, for that wonderful take-home messages from you. Now, can we have the video, please? Shelcal is high-potency calcium supplement for everyone in the family. And not every calcium supplement is Shelcal. In a stringent manufacturing process, selected oyster shells are heated above 800 degrees centigrade to eliminate harmful lead compounds and derive the purest form of calcium, that is Shelcal. More than 30 years of trust has made Shelcal the #1 calcium brand in India. So now we have आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए मैं आप आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शीतल और डॉक्टर निवेदिता को. मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी बच्चों को वापस एक बार याद दिला दूं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम 12:30 में लेंगे. आज के दिन का जो प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है फॉक्सी ने, डॉक्टर अल्पेश गांधी ने और जो फार्मा कंपनी ने साथ में सपोर्ट दिया है, उनके हम आभारी है. सभी बच्चों को हम इनवाइट करते हैं ये प्रोग्राम में, आगे प्रोग्राम लेके जा रहे हैं. मैं डॉक्टर शीतल पंजाबी अभी आगे के प्रोग्राम के लिए आप सबको इनवाइट कर रही हूँ. तो इसके लिए हमारे साथ में 2 चेयरपर्सन है सेशन 4 के लिए है, डॉक्टर नंदिता पलशेखकर एंड डॉक्टर प्रतिमा मित्तल. हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों चेयरपर्सन कितने रिनाउंड स्पेशलिस्ट है. तो डॉक्टर नंदिता जी प्रोफेसर है, 25 साल के ऊपर से इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं. इंडिया में ब्लूम IVF सेंटर करके चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, उसकी डायरेक्टर है. इंडिया की सारी गायनिक सोसाइटी ऐसी है कि जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. 61 जितने ओरेशंस दिए, 18 अवार्ड्स मिले हैं, मोर देन 1000 टॉक्स दिए हैं. उनको भारत गौरव अवार्ड मिला है इन लंदन 2014 में. और क्या उनके लिए जितना बोले उतना कम है, और उनको वुमेन सुपर अचीवर अवार्ड भी मिला हुआ है. तो हम लोग डॉक्टर नंदिता पलशेखकर के आभारी है कि वो हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं एज ए चेयरपर्सन. साथ में हमारे साथ में वो डॉक्टर प्रतिमा मित्तल मैडम है, और मैं मैडम को अभी इनवाइट करती हूँ. प्रतिमा मित्तल मैडम रॉयल कॉलेज ऑफ यूके से FRCOG किया हुआ है. वो दिल्ली की सफदरजंग हॉस्पिटल के गायनिक डिपार्टमेंट के HOD रह चुके हैं. इंडिया की फॉक्सी नाम की जो संस्था है उसके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और बहुत सारी डिफरेंट संस्थाओं में, साथ में WHO जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है उसके अंदर भी उन्होंने मेंबर ऑफ टेक्निकल रिसोर्स ग्रुप में रहे हुए हैं. तो मैं डॉक्टर प्रतिमा मित्तल मैडम को भी अभी इनवाइट कर रही हूँ कि अपना आगे का सेशन ये कंडक्ट करे, सेशन नंबर 4. और हम सबको ये इसके लिए जो हमारे स्पीकर्स हैं उनको इनवाइट करके हमको
एनलाइटन करें। इसमें हमारे साथ में जो स्पीकर्स है वो है डॉक्टर अश्विनी भालेराव गांधी फॉर द नेक्स्ट टॉक। ओवर टू डॉक्टर नंदिता पालसेकर एंड डॉक्टर प्रतिमा मित्तल मैडम। थैंक यू। शीतल, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है आज सबसे बात करते हुए, बिकॉज आज एडोलेसेंट डे है और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्पेश ने ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, और खास करके मुझे डॉक्टर गिरीश माने और डॉक्टर रागिनी अग्रवाल को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, बिकॉज उन्होंने बहुत ही मेहनत ली है और ये सब ऑर्गेनाइज किया है। और अभी जो लेक्चर लेने आ रही है डॉक्टर अश्विनी भालेराव गांधी, वो जो है एडोलेसेंट बच्चों के साथ बहुत सालों से काम कर रही है। उनका ये बहुत ही टॉपिक है जो बहुत उनके इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, एंड बहुत पैशन के साथ इस चीज के इस बच्चों के हेल्थ के बारे में वो काम करती है। शी इज अ कोलीग, हमारी डॉक्टर है जो हमारे साथ काम करती है इन बॉम्बे। वो पीडी हिंदुजा, वो पास्ट प्रेसिडेंट है मुंबई ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी की, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, मीनोपॉज सोसाइटी की प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन थी एडोलेसेंट हेल्थ कमिटी की, और सेक्रेटरी है हमारा जो नेशनल जर्नल है उसका। सो बिफोर अश्विनी चालू करती है, बच्चों मुझे एक आपको बताना है कि 3,000 लाख के ऊपर लड़कियां को पीरियड आता है अपने देश में, मतलब 336 मिलियन लेडीज एक्चुअली, और हर दिन उनके जो अगर 36% भी पैड यूज करते हैं तो मतलब 360 लाख पैड हमारे रोज फेंके जाते हैं। आई थिंक वो चीज मेरे बहुत दिल के पास है कि हमें अपने एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट वगैरह के काम करना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि एक यू नो हु इज मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है तो सब लोग हंस रहे हैं मेरा हिंदी सुन के, बट somebody who is very passionate about मेंस्ट्रुएशन, जो अश्विनी बात करेगी। आई थिंक आप बहुत लकी हो कि अश्विनी जैसी स्पीकर है जो आपको पीरियड्स के बारे में बात करेगी, और हाइजीन मतलब स्वच्छता कैसी उसकी रखने की ताकि कोई तकलीफ ना हो। आई थिंक और कोई अच्छा बात नहीं कर सकता। अश्विनी, द स्टेज आपका है टोटली, प्लीज टेक ओवर। Thank you, Dr. Nandita, for your kind words. Can you see my slides? Yes, ma'am. Okay. So I'm just doing the slideshow. And as correctly Dr. Nandita has said, that we have to be very careful about the hygiene. My topic today is personal hygiene and hygiene during menstruation. And all of us are aware that during this COVID pandemic, everybody needs to take care of the personal hygiene. Hygiene means we have to take care of the whole body from head to toe. And especially, I'm going to concentrate on menstrual hygiene. So friends, मुझे आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताना है। डॉक्टर नंदिता ने भी आपको स्टैटिस्टिक्स बताया है कि ग्लोबली अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। मीन्स इतनी 52% जो औरतें हैं और उनमें गर्ल्स भी आ गए, वो हर महीना मेंस्ट्रुएट करते हैं, यूजुअली 2 to 5 days, कभी कभी वेरी रेयरली इवन टिल 7 days। इंडिया में देखा जाता है कि कुछ घर ऐसे हैं कि जो खुल के बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में, लेकिन कुछ घरों में ये बात करना अच्छा नहीं लगता है, लोगों को शाइनेस लगता है, टैबू लगता है, और इसीलिए खुल के बात नहीं होती है। तो मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट है सब फ्रेंड्स को कि प्लीज डोंट फील शाय। हम साइंस के क्लास में बैठे हैं, साइंस सीख रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन हर औरत, हर गर्ल, हर महीने हमको एक्सपीरियंस करना होता है, और इसके लिए कोई शाय होने की बात नहीं है। अभी ये चित्र में बताया गया है कि यूट्रस कहाँ होता है। वो होता है एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में, पेट के नीचे की तरफ। और ये जो यूट्रस माने कि गर्भाशय की थैली होती है, वो बाहर की तरफ खुलती है थ्रू सर्विक्स माने कि माउथ ऑफ द यूट्रस। तो ये मेंस्ट्रुएशन माने कि क्या है?
Girls typically start to menstruate during puberty and adolescence. That means some girls will start menstruating early, even at 10 years. Some can start late, even at 17 to 18 years of age. And during this adolescence period, बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस हो जाते हैं, और ये सब की क्या वजह है? तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके कारण ये सब चेंजेस अकर होते हैं. मेंस्ट्रुएशन कब तक चलेगा? मेनोपॉज जब आएगा तब ये बंद होगा. मेनोपॉज कब आता है? यूजुअली इंडियन वीमेन में अराउंड 45 टू 48 इयर्स में मेनोपॉज आ जाता है, ब्लीडिंग रुकता है. अभी पीरियड के टाइम क्या केयर लेनी चाहिए? अपने क्लोथ जो है वो सॉइल नहीं हो जाए, इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन लेना जरूरी होता है. और यूजुअली हम लोग अभी देखते हैं कि सैनिटरी टॉवेल्स यूज होते हैं. ये सैनिटरी मटेरियल है, वो किस तरह का हो सकता है? एक तो वो कॉटन का हो सकता है, उसके पैड्स होते हैं, नहीं तो कभी कभी तो यूजेबल माने कि क्लॉथ होता है, घर की कोई अच्छा साफ सुथरा कपड़ा है, सॉफ्ट ऐसा कपड़ा है, साड़ी का कुछ पैड हम लोग बना सकते हैं, वो तो यूजेबल पैड्स होते हैं. और अभी न्यूअर कुछ चीजें हैं वो मिलती है, वो है टैम्पून्स, कभी कभी टिश्यू पेपर, पीरियड पैंटी. तो हम ये सब के बारे में आज जानकारी लेंगे. Coming to sanitary towel is a piece of soft material worn by a woman to absorb blood during her period, during each period and every month. Until disposable sanitary pads were created, cloth was used to collect menstrual blood. Women often used a variety of homemade menstrual pads which they crafted from various fabrics or absorbent material to collect menstrual blood. माने कि ये menstrual blood कलेक्ट करके वो उससे सोकेज नहीं हो जाए कपड़ों का, इसके लिए ये सब हम लोग केयर ले रहे हैं और इन्फेक्शन अवॉइड कर रहे हैं. तो ये कब चेंज करने चाहिए? वंस अ डे तो ये तो बहुत कम बोला मैंने. यूजुअली 6 to 8 आवर्स में एक पैड चेंज करना रिकमेंडेड है. और हेवी पीरियड्स है, स्पेशली फर्स्ट 1 or 2 days पीरियड सभी के थोड़े हेवी होते हैं, तो we need to change at least 3 to 4 hourly. And please don't wait till the pad is completely soaked. पूरा सोक होने के पहले ही वो बदलना चाहिए. अभी ये हाइजीन हमने बराबर से नहीं लिया, बराबर से पैड चेंज नहीं किए, वैसे ही अनक्लीन पैड रखे तो क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है. और ये इन्फेक्शन वजाइना से यूट्रस तक माने कि गर्भाशय तक भी पहुंच सकता है, और ये अच्छा नहीं है, ये अवॉइड करना है. और पैड्स वेट है और वैसे ही हमने रखे, चेंज नहीं किए, तो वो जो नीचे की स्किन होती है प्राइवेट पार्ट की, वो इरिटेट हो सकती है और इसके वजह से ब्रोकन स्किन और थोड़े सी इंजुरी है जैसा होने की संभावना होती है. अभी ये तो हमने पैड यूज कर लीजिए और अभी अभी वो डिस्पोज करने हैं. तो नैपकिन शुड नॉट बी थ्रोन इनटू टॉयलेट, particularly water closet. It is better to keep a dustbin in the corner of the toilet. This is something new which is I am telling you that ये जो नैपकिन सोक्ड हुए हैं वो हम टॉयलेट में थोड़े से धो के उसका जो ब्लीडिंग एब्सॉर्ब हुआ है वो टॉयलेट में फ्लश ऑफ कर सकते हैं. और वो जो धोए हुए नैपकिन्स है वो हम वेस्ट पेपर में रैप करके फिर डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं. व्हाट इज द आइडियल मैकेनिज्म कि कैसे डिस्पोज ऑफ करें? एक तो इंसिनरेट करे माने कि बर्निंग, और लेकिन उसके लिए भी मशीन रहता है. अभी बहुत से स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहां ये इंसिनरेटर लगाए हुए होते हैं, तो कभी कभी वो पीट में हम लोग बरी भी कर सकते हैं. वो भी सब कुछ अवेलेबल नहीं है, तो अच्छी तरह से पेपर में रैप करके डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. हम लोग कभी कभी देखते हैं कि ऐसे पैड्स पड़े हुए होते हैं, कूड़े में पड़े हुए होते हैं, और ऐसा उनका पूरा एक गट्ठा बनाया हुआ होता है, और ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है. आप देख सकते हैं कि जिधर उधर जानवर घूम रहे हैं और ये दिखने को भी अच्छा नहीं लगता है. टॉयलेट में भी फ्लश नहीं करना है, तो डस्टबिन में फेंक देना है. और ये ऐसे नहीं किया हमने, ऐसे ही फेंक दिया तो अच्छी साइट नहीं है. समटाइम्स इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, लेकिन HIV जैसा इन्फेक्शन तो नहीं होने वाला है. फिर भी फ्लाइज, इंसेक्ट्स कैच हो सकते हैं और ये सब अनहाइजीनिक है. तो प्लीज ये डिस्पोज ऑफ बराबर से कर लीजिए. अभी आप
अपने आप को क्लीन कैसे रख सकते हैं पीरियड के दरम्यान। एवरी डे इफ पॉसिबल मॉर्निंग एंड इवनिंग प्राइवेट पार्ट को आपको सोप और वाटर से धोना चाहिए। ये जो अनयूज क्लॉथ है कि पैड है वो रैप करके अच्छी तरह से एक बैग में आपको रखना है फ्यूचर यूज के लिए। प्राइवेट पार्ट सॉफ्ट और क्लीन क्लॉथ से ड्राई करना है और फ्रेश नैपकिन है वो अंडरवेयर पे लगाना है। और जब भी आप यूरिन पास करेंगे या स्टूल पास करेंगे तो आप जो वाइप करेंगे वो फ्रंट टू बैक करना है, तो इन्फेक्शन अंदर नहीं जाता है वजाइना और यूट्रस में। So what hygiene practices should be followed during menstruation? Please keep extra napkins, स्पेशली आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बाहर कहाँ जा रहे हैं तो आपके साथ कैरी कर लीजिए। Keep the area between the legs dry, otherwise शैपिंग हो सकता है। Please take bath every day. बाथ लेना बहुत जरूरी है, ये बहुत हाइजीनिक ऐसा प्रोटेक्शन है अपने लिए बाथ लेना। और जेनिटल एरिया भी हमेशा स्टूल पास करने के बाद और यूरिन पास करने के बाद क्लीन करनी है। It is essential that women and girls have access to water and sanitization. They need private area to change the sanitary pads. They need clean water for washing their hands and wash the cloth what they are using, and they need facilities for safely disposing of used material and or dry if they are using reusable pads. ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ करा दिया है कि every woman will have a menarche between 10 to 15 years. She will reach menopause by 45 years. Thus, she will bleed for 35-40 years. 420 periods उनको आएंगे और इसका मतलब है अपने लाइफ में 7 years हम लोग मेंस्ट्रुएशन में रहने वाले हैं, तो केयर लेना बहुत ही जरूरी है। Now, what about tampons? Tampon is a plug of soft material inserted into vagina which will absorb menstrual blood. These conventional tampons may also contain synthetic fibers. Tampons sometimes can react badly with the bacteria in the body, so one has to be very careful using these tampons and it have to be inserted inside. अभी इंडिया में पीरियड पैंटीज भी अवेलेबल है। ये पीरियड पैंटीज एक तो आप पैड पहनने के बाद पीरियड पैंटी पहन सकते हैं तो सोकेज नहीं होगा, और कभी कभी ये पीरियड पैंटी अकेले भी वेयर कर सकते हैं विदाउट अ नैपकिन, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ लेयर ऑफ स्पेशल फैब्रिक designed to soak blood liquid away from the body and trap it in the underwear so it does not leak out. Most of them provide leak-proof protection. Some can actually be worn instead of a pad or tampon. So ये सब जो सैनिटरी पैड्स है उनका एनवायरनमेंट पे क्या बुरा असर हो सकता है। ये रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, रीयूज नहीं हो सकते हैं, जो डिस्पोजेबल है यूज करो थ्रो करो। ऐसे जो नैपकिन्स है वो 100 ईयर तक डिग्रेड नहीं होंगे और इसीलिए सीरियस एनवायरमेंटल और हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं। बर्न किए तो भी डायोक्सिन जैसे इफेक्ट हो सकते हैं और इसीलिए अभी धीरे धीरे थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसा चल रहा है कि रीयूजेबल अच्छे साफ सुथरे क्लॉथ पैड्स यूज करेंगे तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है और ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है। तो ये रीयूजेबल पैड्स है वो कैसे धोए, वो ठंडे पानी में 30 मिनट तक सोक करके रखिए, डिटर्जेंट से स्क्रब कर लीजिए, धो लीजिए और नेचुरल सनलाइट में ड्राई कर लीजिए। तो ये रीयूजेबल पैड्स की केयर लेना जरूरत है। और एक सॉल्यूशन है वो है यूरिजेबल मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करना। शायद आप में से कोई लड़कियों ने ये सुना होगा, कोई ने नहीं सुना होगा। ये एक अलग तरीके का अभी डिवाइस अभी मिल रहा है, ये ग्रीनर है अपने लिए क्योंकि अगेन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कंप्लीटली सेफ है, इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, मेडिकल मटेरियल लाइक सिलिकॉन, and it will collect the menstrual blood into the this cup and it fits inside the vagina. It has to be inserted inside the vagina. वो आपको पहले टाइम बड़े से नहीं तो अपने पेरेंट्स से कैसे यूज करना है वो सीखना चाहिए, डॉक्टर से सीख लेना चाहिए वो कैसे अंदर इंसर्ट करना है। शादी के बाद और डिलीवरी के बाद तो ये यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। वो नेसेसरी नहीं है कि आपको हमेशा वो चेक करना चाहिए, लेकिन स्क्वैटिंग पोजीशन में वो अंदर इंसर्ट करना बहुत इजी हो जाता है।
ये कप कैसा क्लीन करना है, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर लेके वो क्लीन कर देना है, उसमें से जो भी ब्लड है वो टॉयलेट में हम फेंक दे सकते हैं, स्टरिलाइज करने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से वॉश करके वो रीयूज कर सकते हैं। पीरियड के बाद क्लॉथ के पाउच में वो रख सकते हैं और नेक्स्ट पीरियड के लिए वो तैयार हो जाता है। तो हाउ मच मेंस्ट्रुअल कप कैन होल्ड? यूजुअली नॉर्मल पीरियड मीन्स ब्लीडिंग इज स्टिल 50 to 80 ml और ये कप जो है वो अबाउट 15 to 23 ml होल्ड करता है। तो एवरी 6 to 8 आवरली आप ये कप एम्प्टी कर सकते हैं, वॉश करके अगेन रीयूज कर सकते हैं। वो पैटर्न कितना ब्लीडिंग का है उसके ऊपर निर्भर होता है कि आप कितने फ्रीक्वेंटली वो चेंज करें। और ये अच्छा क्यों है कि ये जब आप यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं तो पैड निकालना पड़ता है, लेकिन कप निकालने की जरूरत नहीं होती है। और आपको समझता भी नहीं है कि आपने कुछ पहना है, क्योंकि वो अंदर रहता है और बाहर पैड की तरह चुभता नहीं है। अभी ये जो मैंने दिखा है ये स्लाइड्स में, ये है पीरियड पैंटीज, और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम है तो बेबी या एडल्ट डायपर भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने इसीलिए आपको बताया है कि बहुत सारे प्रोटेक्टिव ऐसे ये पैड्स है, कप है, तो हम तरह तरह की चीजें अब यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो डिस्पोजेबल पैड ही यूज करना है, आप मिक्स एंड मैच करके भी ये यूज कर सकते हैं। पहले जब ब्लीडिंग हेवी है तब आप पैड ले सकते हैं, रीयूजेबल पैड ले सकते हैं। जब ब्लीडिंग कम होता है तो इवन लाइनर यूज कर सकते हैं, इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं। शादी के पहले ये क्लॉथ पैड करेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। शादी के बाद, डिलीवरी के बाद मेंस्ट्रुअल कप आप शिफ्ट कर सकते हैं। सैनिटरी पैड ही यूज करना है ऐसा नहीं है, तो वो जो अंडरवेयर है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जरूर जानना चाहिए, आपके डॉक्टर के साथ आप मिलके एक बार ये सब चीजों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। कोई अब आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, माँ है, बहन है बड़ी, या स्कूल में टीचर है, उनसे भी आप खुल के बात कर सकते हैं और इसी तरह हाइजीन रख के अपना खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं डॉक्टर अल्पेश गांधी, फॉक्सी प्रेसिडेंट, डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट फॉक्सी, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक which is close to my heart. And please remember, don't feel shy. This is our every month routine. तो जो रूटीन है उसमें क्या शाइनेस है, तो पहले आप शाइनेस नहीं मन में रखिए और खुल के बात करिए। I thank you once again, Dr. Nandita and Dr. Pratima for chairing this session. Thank you, Ashwini. थैंक यू अश्विनी, बहुत ही अच्छा आपने और बहुत सरल तरीके से आपने बताया सारी डिवाइसेस के बारे में। और मैं ये कहूंगी कि ये जो एक इशू है बहुत ही निग्लेक्टेड इशू है, इग्नोर्ड इशू है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को सब पता ही है, माँ ही थोड़ा बहुत बताती हैं, पर अदरवाइज नोबडी टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन शुड नो व्हाट इज द हाइजीन, हाउ टू मेंटेन, एंड क्या इनका इफेक्ट होता है और क्या क्या डिवाइसेस अवेलेबल हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि लड़कियों को ही ये बातें सुननी चाहिए, लड़कों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो वो उसको नेगेटिव तरीके से लेते हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो सब चीजें जो हैं दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। आई थिंक नॉलेज टू बॉयज इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज वेल एज टू द गर्ल्स। Thank you, Ashwini. And before I introduce the second speaker, I will like to thank Dr. Alpesh Gandhi, Dr. Ragini Agrawal, Chandan, and other, organizers for giving me an opportunity to be here. And all the people they have selected for the, talks are really stalwarts in adolescent health. And Ashwini has been, has organized so many conferences, and I have worked with her, and I have known her passion, and she really explained it well. But now I will introduce the second speaker, that is Dr. Lakshmi Srikhande, who is also a very, very passionate person for as far as adolescent health is concerned. She is medical director at Srikhande Fertility Clinic, Nagpur. She is chairperson and designated ICOG chairperson and vice chairperson for ICOG 2019 and 20. She is national corresponding editor for the Journal of Obstetrics and Gynecology Society of India.
she's senior vice president. She was senior vice president, Foxy 2012. And besides that, she has got so many awards, you know. I have got a whole list of it. She has got received Nagpur Ratna Award on the hands of Union Minister of Health, Shri Nitinji Gadkari. She has received Bharat Excellence Award for Women's Health. She has received Meru Hansotia Award for Best Committee of Foxy, and the National Governing Council member. She has been National Governing Council member of ICOG. I have got a whole list. You can all read through it. But before that, I would ask Dr. Lakshmi to, you know, start her talk, because she's going to talk about a very, very important thing, that is how to say no, and how to stop people, you know, regarding smoking, regarding drug abuse, regarding alcohol, regarding social abuses, and most important, how to say no for early marriages. So Dr. Lakshmi Shrikhande, please. Dr. Lakshmi, before you start, you have put on your virtual background, so we can't see your face. We can just see a still photo of you. Can you please stop your virtual background? Dr. Lakshmi? Yeah. I hear you. Just a minute. Yes, ma'am. Now we can see you. Now you can share your screen. Yeah. So much, ma'am, for such kind introduction. नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे बोल रही हूँ. मैंने खुद को दोस्त क्यों कहा? क्योंकि एक अच्छा दोस्त वो होता है जो बुरी लत में पड़ने नहीं देता है, और किसी कारणवश आप बुरी लत का शिकार हो गए हो तो आपको उसमें से बाहर आने में मदद करता है. तो अगले 10 से 12 मिनटों में मैं आपको, आपके माता पिता को और टीचर्स को बुरी लतों के बारे में, उनके रोकथाम के बारे में और उनसे कैसे बाहर आया जाए इसके बारे में मार्गदर्शन करने वाली हूँ. ये बुरी लतें क्या क्या हो सकती हैं? ये है धूम्रपान, शराब का नशा, इंटरनेट का नशा, सेलफोन का नशा और ऑफ कोर्स दवाइयों, ड्रग्स का नशा. याद रखें कि कोई भी जब इनमें से कोई भी आदत शुरू करता है तो वो इस आशा से नहीं करता है कि वो इनका शिकार हो जाएगा, इनका आदी हो जाएगा, पर करते करते कहीं ना कहीं आपको ये भान नहीं होता है और आप उसके एडिक्ट हो जाते हो. सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगी वो सेल फोन एडिक्शन की करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली टीनेजर्स में. क्योंकि आप अपने सेल फोन के बिना बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते हो, आपको कंटिन्यूअसली उसकी आदत होती है. हर 5 मिनट में आप चेक करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया, फेसबुक पे आया क्या, व्हाट्सएप पे आया क्या, मैंने कोई पोस्ट की थी, मुझे लाइक्स मिले क्या, लोगों ने उस पे कुछ कमेंट्स किए क्या. पर जब उसकी जो तरंग है, अभी लॉन्ग स्टडीज नहीं है, पर जो मोबाइल की स्क्रीन आप घंटों घंटे देख रहे हो, उसकी वजह से आपके आंखों को होने वाले दुष्परिणाम, वो तरंगों की वजह से आपके ब्रेन को होने वाले दुष्परिणाम, ये भी बहुत ज्यादा प्रमाण में देखने में आते हैं. कई बार नींद में आपको मोबाइल नहीं बजा है, फिर भी फोन की घंटियां सुनाई देने लगती हैं, आपको बहुत अति एंजाइटी होने लगती है उसके बारे में, और ये सब आपके इस उम्र में आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपको आपकी पढ़ाई से दूर कर रहा है, आपको अपने जो लाइफ के गोल सेट किए हैं आपने, उससे दूर कर रहा है. आप इतना ज्यादा बिल पे नहीं कर पा रहे हो तो बिल पे करने के लिए आप कुछ छोटे मोटे क्राइम करने लगते हो, मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, और कुछ केसेस में मोबाइल के अति एडिक्शन से डेथ्स भी हुए हैं. मुझे वो गेम का नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड उस गेम की वजह से बच्चे चलते चलते ट्रैफिक सिग्नल पे, कार चलाते वक्त कहीं पर भी मोबाइल पे वो गेम रहते थे, और उसकी वजह से दुर्भाग्यवश हमारे कितने ही टीनेजर्स मौत का शिकार हो चुके. दूसरा है धूम्रपान. जरूरी नहीं है कि ये सिगरेट के ही फॉर्म में हो, कोई भी निकोटीन का नशा किसी भी फॉर्म में आपके लिए बहुत हानिकारक है. और जब मैं नशे की बात कर रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप खुद नशा कर रहे हो,
बहुत सारे हुक्का पार्लर्स हमारे देश में हर कॉर्नर्स में है। हमारे टीनेजर्स को ये हुक्का पार्लर्स बहुत पसंद है। हुक्का पार्लर भी उतने ही नुकसानदायी हैं। दूसरा, पैसिव स्मोकिंग को ना भूलें। जरूरी नहीं है कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, अगर आपके बाजू वाला कंटिन्यूअसली स्मोकिंग कर रहा है, आप ऐसे अपने पीयर ग्रुप में बैठे हो जहां लोग कंटिन्यूअसली स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो, और पैसिव स्मोकिंग भी एक्टिव स्मोकिंग के जितनी ही हानिकारक है। तीसरा नशा है शराब का नशा। जब हम शराब के नशे की बात करते हैं तो टीनेजर्स में बहुत ही मिथ है जो उन्होंने शायद खुद के लिए बना ली है कि बियर और वाइन, ये तो अल्कोहल भी नहीं आता है और हम तो बस यही लेते हैं, बाकी और कुछ हम नहीं लेते हैं। मित्रों, ये गलत है। बियर भी आप एडिक्ट हो सकते हो, वाइन से भी आप एडिक्ट हो सकते हो, और इनके भी उतने ही नुकसान है आपके शरीर को जितने कि बाकी और किसी शराब की वजह से आपको हो सकते हैं। चौथा जो नशा है वो है इंटरनेट का नशा। हमारे टीनेजर्स एक ऐसा वर्चुअल फैंटेसी वर्ल्ड बना लेते हैं अपने मोबाइल, अपने फेसबुक और अदर सोशल मीडिया के जरिए, जिससे वो रियल लाइफ से छूट जाते हैं, रियल लाइफ फ्रेंड से उनका कनेक्शन छूट जाता है, और ये इसी अपनी वर्चुअल लाइफ में ही रहते हैं। जब हम इस तरह वर्चुअल लाइफ में जीते हैं तो आप लोगों को बहुत रेस्टलेसनेस हो जाते हो, मूडी, डिप्रेस, बहुत इरिटेबिलिटी होने लगती है। आप सोचते हो कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए फेसबुक पे रहूंगा, पर आपको पता ही नहीं लगता है कि ये 5 मिनट कब आपके 50 मिनट में कन्वर्ट हो गए हो। इस तरह ज्यादा समय अगर आप नेट पे बिता रहे हो तो आपके रियल लाइफ में फ्रेंडशिप्स, आपके जॉब, आपकी पढ़ाई, सभी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। सिर्फ इसके सोशल साइड इफेक्ट्स हैं ऐसा नहीं है, ये इंटरनेट एडिक्शन के बहुत सारे फिजिकल साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपकी जो उंगलियां हैं वो या तो कंप्यूटर पे हैं या आपके फोन पे कुछ काम कर रही हैं, तो आपको ये जो मैंने दिखाए हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम, आंखें आपकी ड्राई हो सकती है, पोस्चरल प्रॉब्लम्स, बैकएक, हेडेक, आप खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देते हो, पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं देते हो, और आपकी नींद पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और जब आप बहुत ज्यादा समय आप अगर नेट पे बिता रहे हो तो आप साइबर बुलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोन हो। अदर फॉर्म्स ऑफ बुलिंग से ज्यादा साइबर बुलिंग बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये कोई भी एनोनिमस व्यक्ति आपको साइबर स्पेस में जाकर बुली कर सकता है, ईमेल के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, या आपके बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको कोई भी प्रकार की धमकी दे सकता है, वर्बल अब्यूज कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ये सब साइबर बुलिंग के प्रकार हैं। आप ये साइबर बुलिंग से कैसे बच सकते हो? सबसे पहले आप ये बुली को एंगेज ना करें अपने सोशल मीडिया पे या जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको बुली किया जा रहा है, क्योंकि जो भी बुली कर रहा है वो आपसे एक रिएक्शन की उम्मीद करता है। जब आप रिएक्ट करते हो तो उसके काउंटर रिएक्शंस और वो चेन आपकी चलते रहती है। आप अपने कभी भी सीक्रेट सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, अपनी प्राइवेसी को बनाए रखें, पर्सनल फोटोग्राफ्स कभी भी इंटरनेट पे ना डालें। हमेशा ध्यान रखें कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। एक बार आपने सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर दिया है तो उस पर से आपका कंट्रोल चला गया है। ये कहाँ जाएगा, किस रूप में जाएगा, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब भी कोई आपको बुली कर रहा है तो इमीडिएटली डर के मारे वो रिकॉर्ड को डिलीट ना करें, उसको स्क्रीनशॉट ले, डेट, टाइम, डिस्क्रिप्शन सब सेव करके रखें। अगर आपको बुली किया जा रहा है, पेरेंट्स में कन्फाइड करें, टीचर्स में कन्फाइड करें, और याद रखें कि हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर क्राइम सेल है जहां पर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। अब हम आ रहे हार्ड ड्रग्स, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स अभी ड्रग्स की वजह से ड्रग्स की तरफ बढ़ गए हैं। और क्यों लेते हैं? हमारे टीनेजर्स इस ड्रग्स की तरफ आकर्षित ही क्यों होते हैं? क्योंकि अगर उनके ग्रुप में कोई ले रहा है तो उन्हें वो ग्रुप में फिट होना है, दे वांट टू फील गुड, आपको बेटर फील करना है,
बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हम ये बच्चों पे इतना एकेडमिक प्रेशर ला देते हैं कि नहीं, आपको तो नंबर 1 ही आना है क्लास में, सेकंड तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अभी जस्ट 10-15 दिन पहले 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक्सेप्ट हुए। हर व्यक्ति ने मेरे बच्चे को 95% मिले, 99% मिले डाला। हमने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज डाले। किसी ने नहीं डाला कि मेरे बच्चे को 40% है, 50% है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ माय चाइल्ड। तो इतना ज्यादा एकेडमिक प्रेशर में अगर आपका बच्चा, आपका टीनेजर जी रहा है, तो ये वो एस्केप रूट ढूंढने लगते हैं कि हम इसमें से बाहर कैसे निकले। और ऑफ कोर्स ये तो एज ही होता है क्यूरियोसिटी का, उन्हें कुछ ना कुछ नया करना होता है, इसलिए भी वो क्यूरियोसिटी के कारण ड्रग्स की तरफ चल पड़ते हैं। सेलिब्रिटीज, हम इन्हें दोष नहीं देंगे, कई बार ये सेलिब्रिटीज का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है हमारे टीनेजर्स पर कई बार बुरा भी होता है, क्योंकि जब हमारे बच्चे देखते हैं कि अरे ये सेलिब्रिटीज तो ये ड्रग ले रहा है, ये सेलिब्रिटी तो इस एडिक्शन का शिकार है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को लगने लगता है कि ये एडिक्शन नॉर्मल है, या मैं भी अपने लाइफ के कुछ बुरे सिचुएशन से निकलने के लिए ड्रग्स का सहारा ले सकता हूं। पर क्या हमारे बच्चे ही दोषी हैं इसके लिए कि अगर वो ड्रग्स यूज कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के नशे के शिकार है? नहीं, हम माता पिता और टीचर्स की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप मेरी ये स्लाइड देख रहे हैं कि जिसमें मैंने रिस्क फैक्टर्स लिखा है, क्योंकि सिचुएशन एक बहुत बुरी सिचुएशन है, पर हर टीनेजर ड्रग्स का शिकार नहीं होता है, कुछ उसमें से बिना ड्रग के बाहर आ जाते हैं। तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कि जो एक टीनेजर को उसकी तरफ ले जाते हैं? सबसे पहला है कैओटिक होम एनवायरनमेंट। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, जहां पेरेंट्स हमेशा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जहां एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, जहां आपने अपने पेरेंट्स को अच्छी वैल्यूज नहीं सिखाई हैं, उसे पता नहीं होता है कि क्या उसके लाइफ के गोल्स हैं, तो ये बच्चा रिस्क फैक्टर्स में आता है। एकेडमिक फेल्यूर है, आपने उसको बहुत ज्यादा टारगेट दे दिया है, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड उसको दे दिया है। सोशल कोपिंग स्किल्स वो बच्चे में कहीं ना कहीं आपने डेवलप नहीं की है, आपने ये ध्यान नहीं रखा है कि हमारा बच्चा किससे मिलता है, उसके पीयर ग्रुप में कौन है, वो कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। और अगर किसी बच्चे के घर में पेरेंट्स ही खुद किसी बुरी लत के शिकार है, शराब के या ड्रग्स के, तो ये बच्चा आगे जाकर बुरी लत का शिकार होने के लिए ज्यादा उसकी तरफ उसका झुकाव है। उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? है लाइफ में एडवर्स सिचुएशंस हैं, क्या आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यस, अगर आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स है, फैमिली वैल्यूज हैं, फैमिली कल्चर है, आप घर में एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को समय देते हो, आप अपने बच्चे को समय दे रहे हो, क्वालिटी टाइम दे रहे हो, तो आप अपने बच्चे को बुरी लत की तरफ जाने से रोक सकते हो। जरूरत से ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस ना करें, अपने बच्चे का पोटेंशियल समझें और उसके हिसाब से ही उसे आप मोटिवेट करें कि लाइफ में उसे किस तरफ जाना है। हम सब ये ड्रग अब्यूज के लिए क्यों इतने चिंतित हैं? ऑफ कोर्स क्योंकि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। फिजिकल हेल्थ बच्चे की अफेक्ट होगी, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इंजुरीज है, आपका बच्चा ड्राइविंग करेगा नशे की लत में, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के चांसेस ज्यादा हैं, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वेहिकुलर एक्सीडेंट्स होंगे, और अगर हमने फिर भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारा बच्चा सुसाइड्स, होमिसाइड्स, ये इनकी तरफ भी प्रवृत्त हो सकता है। तो इसके फ्लैग साइंस क्या हैं? टीचर्स और पेरेंट्स इसे ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपको पता लगाना है, आपको उसको कब इसमें पकड़ना है कि ये बच्चा नशे की लत का शिकार तो नहीं है। तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर आपका बच्चा मुंह से बदबू ना आए इसके कारण बार बार अपना माउथ वॉश कर रहा है, बहुत ज्यादा परफ्यूम और डिओडोरेंट का इस्तेमाल कर रहा है, दिन भर च्यूइंग गम इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपको उसके मुंह से उसकी बदबू ना आए, आपके साथ पेरेंट्स और टीचर्स के साथ वो आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, आपके साथ में हगिंग अवॉइड कर रहा है कि कहीं आप उसको सूंघ ना लो,
सडनली उसके कुछ नए ऐसे फ्रेंड्स बन गए हैं जिसके बारे में वो बहुत सीक्रेटिव है, जिनके बारे में वो आपको बता नहीं रहा है, आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है। सडनली आपका बच्चा आइसोलेटेड रहने लगा है, उसका सोशल कांटेक्ट कम होने लगा है, उसका स्कूल का परफॉर्मेंस कम होने लगा है, वो अपनी हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी भूख अफेक्ट हो रही है, स्लीप अफेक्ट हो रही है। मूवीज की तरफ उसका जो कल है ना अट्रैक्शन है वो बदल गया है, वो एकदम से थ्रिलर मूवीज देखने लगा है या कुछ अलग ही प्रकार की मूवीज की तरफ देखने लगा है। अनएक्सप्लेन इरिटेबिलिटी, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ये बच्चा एकदम से आपके साथ में इरिटेबल होके बात कर रहा है, आपके साथ में उसके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं। सडनली आपका बच्चा टॉयलेट में जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगा है और घर से थोड़ी बहुत चोरियां होने लगी है, जिसको हम सब लोग कभी सही में विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ये हमारा बच्चा भी कर सकता है, चाहे वो ड्रग्स के लिए कर रहा हो, मोबाइल का बिल भरने के लिए कर रहा हो। पर अलर्ट रहें, अगर घर से कुछ सामान की चोरी हो रही है, पैसे की चोरी हो रही है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करें। अब ये तो लक्षण हो गए, आपको ध्यान में आ रहा है कि आपका बच्चा शायद इसकी तरफ गया है, क्या कर सकते हो एज अ टीचर, एज ए पेरेंट। हमेशा ध्यान रखें कि आपको इस बच्चे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। मुझे पता है ये शब्द बहुत लोगों को बहुत बेमानी लग रहा है कि अरे बच्चा गलत कर रहा है, हम इसको कैसे रिस्पेक्ट दें, हम तो इसको ह्यूमिलिएट करेंगे, हम तो इसको रिडिक्यूल करेंगे। बिल्कुल गलत है। जहां आप रिडिक्यूल करोगे, बच्चे को ह्यूमिलिएट करेंगे, वो आपसे और दूर 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 हो जाएगा। और फिर ये बच्चे काउंसलर के पास जाके बैठते हैं, जो उन्हें जज नहीं करते हैं, जो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल सभी टीचर्स और माता पिता के लिए है कि आप इस बच्चे को समझें, उसे रिस्पेक्ट दें, उसे रिडिक्यूल ना करें, उसे ह्यूमिलिएट ना करें, क्योंकि आपका जो यहाँ पे मेन आपका उद्देश्य है वो उसको उसमें से बाहर लाना है, ना कि उसको और ह्यूमिलिएट करना है। उसके साथ संवाद करें, क्लासरूम में सबके सामने उसे नीचा ना दिखाएं, उसके साथ में फेयर रहें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में उसके इस प्रॉब्लम को उसके साथ में आप बाहर लाने में उसकी मदद करें। जब भी आप ये बच्चे के साथ में पॉजिटिव डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन डोंट्स, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, माता पिता को और टीचर्स को। निगेटिव्स स्टाफ रूम में, अरे मेरे क्लास में तो वो बच्चे ने ऐसा किया, अरे वो तो ऐसा था, अरे वो तो ऐसा था, ये जो निगेटिव बातें आप अपने स्टूडेंट की स्टाफ रूम में अपने टीचर्स के साथ करते हैं, ये आपको बंद करना है। बच्चे को जज नहीं करना है, लेबल नहीं करना है आपको। बहुत सारे टीचर्स भी कैसा माय वे इज द बेस्ट, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, मुझे पता है, मुझे सब आता है, मेरा आपको सुनना है। ये एटीट्यूड से हमारी जनरेशन को बाहर आना ही पड़ेगा, चाहे वो माता पिता हो चाहे टीचर्स हो। जहां आप बहुत रिजिड रहोगे, आपका बच्चा आपसे उतना दूर 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 चला जाएगा। प्रीचिंग, चाहे आप टीचर हो या माता पिता हो, ये जनरेशन के साथ में आपको प्रीचिंग नहीं करनी है, उन्हें समझे और प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करें। अब ये तो मैंने माता मैडम लक्ष्मी मैडम आपका टाइम ओवर होने को है, प्लीज। बस एक मिनट, ये तो माता पिता की बात की, स्टूडेंट्स के लिए है एक्टिव रहे, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस, हैव गोल्स इन लाइफ जो आपको बता चुके हैं। जस्ट बिकॉज कि आपको पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेबल होना है, इसके लिए ड्रग्स लेना है या कोई नशा करना है, इससे आप दूर रहें। ये पावर मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग आप लाइफ में हर सिचुएशन में अपना ले। पहले तो एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है, ऑप्शंस क्या है, आप वे करें कि प्रॉस एंड कॉन्स हर ऑप्शन के क्या है, इलेक्ट, चूज द बेस्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्ट। अगर आप ये पावर मॉडल अपना लेंगे तो आपको जिंदगी में हर डिसीजन लेने के लिए आसानी हो जाएगी। सो दोस्तों, प्राइमरी प्रिवेंशन टू अवॉइड एडिक्शन इज हैव हॉबीज, स्पोर्ट्स। सेकेंडरी प्रिवेंशन हमेशा याद रखें कि मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट है, काउंसलर्स है, हमारे जैसे डॉक्टर्स हैं जो एडोलेसेंट क्लिनिक चलाते हैं, और हेल्पलाइन हर जगह है। आप हेल्पलाइन में फोन कर सकते हैं, और मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए भी कोई टैबू नहीं है। जैसे फिजिकल हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल बिना किसी शर्म के, झिझक के उनके पास जाएं। अगर आप किसी लत के शिकार है तो फुल रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है, पर इट्स अ चैलेंज जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है
और आपको उसके साथ में आगे जाना है, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी जेल है जिसकी हथकड़ियां आपने खुद अपने हाथों से लगाई है और इसको आपको ही तोड़ना है। सो आप फुल इससे आगे जाएं और इस सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और किसी भी बुरी लत का शिकार ना हो। जो मेरा लास्ट टॉपिक था वो ये है, से नो टू मैरिज बिफोर 21 ईयर्स। हर लड़की को मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि शादी आपके जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। पहले पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़े हो, आप शादी का सही अर्थ समझें और उसके बाद ही आप शादी जैसा बड़ा कदम उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। Thank you, Dr. You can come. No, Pratibha, I'll just conclude this, then I have to leave as I told you, so I will have to take permission from the President. But very beautifully done, Lakshmi. बहुत ही अच्छे तरह से किया, and especially जो peer pressure है, I think that is very, very important. उसमें मत आइए आप. And I liked your last statement कि शादी जल्दी मत कीजिए. Education complete कीजिए. Education अगर सबको मिले तो उनको empowerment मिलता है, and that is a very, very basic requirement. So beautifully covered, and I would like to hand over the mic to Pratima because her Hindi is much better than mine, and she can, explain the sentiments much better way. Pratima, over to you. Before Dr. Pratima takes over, thank you, Dr. Nandita, for joining and chairing the session and sparing your valuable time. And for your valuable comments, thanks a lot for joining. मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मॉर्निंग से सब टॉक बहुत ही बढ़िया और ये सब फैकल्टी का मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में सब लोगों को समझाया जा रहा है। शायद इतना अच्छा प्रोग्राम आपको शायद इतना अच्छा मैसेज मिलने में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ऐसे एक्सपर्ट, सब लोग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपके लिए बात कर रहे हैं आपसे। मैं एक बात खास लक्ष्मी का थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये टॉपिक के जो फैकल्टी थे उन्होंने कुछ वजह से रात को 9 बजे मुझे नो भेजा है और विद इन 12 आवर्स लक्ष्मी हैज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड द टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी। यू आर संकट समय की साकल बोलते हैं, वो चेन वो है। और मैं एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ। आई एम हैप्पी टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू दैट टोटल रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी क्रॉस मोर देन 1 lakh. So this is thank you very much all of you for joining the program. I am thankful to all the teachers, parents and students and adolescent and youth. Thank you very much. Over to Pratima ji. I think congratulations to Girish, Ragini. They've been working very hard. Your whole team has been working very, very hard, Alpesh. Yeah, so I have a very strong team. Thank you so much. Very big team, very strong team. All the national coordinators have done work excellent and very hard work. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lakshmi. It was a wonderful, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, that is the word I will say. और जहाँ तक आपके लेक्चर की मैं मतलब शॉर्ट में कहूंगी, बच्चों के लिए संयम रखना है नहीं आसान, पर है बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी सेहतमंद जिंदगी है इसके ऊपर निर्भर। और पेरेंट्स के लिए एक एंड टीचर्स के लिए कि एडोलेसेंट्स जो टीनेजर्स हैं वो दे आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर रिसोर्सेज टू बी डेवलप्ड। और रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए जैसा कि लक्ष्मी ने कहा बार बार, उनका दोस्त बनना बहुत जरूरी है, उनको एनकरेज करना बहुत जरूरी है, उनको लिए नॉन जजमेंटल होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं सब अच्छाइयों से हम शायद उनको बुरी लतों से बचा सकेंगे। और अगर नहीं बचा पाए तो उसको जल्दी पहचानना, जो कि लक्ष्मी ने बहुत सुंदर तरीके से और बहुत डिटेल में बताए, फ्लैग साइंस, वो बहुत जरूरी है समझना कि हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें कि बच्चे किसी गलत आदत की ओर अग्रसर तो नहीं हो रहे। Thank you Lakshmi, thank you Dr. Alpesh, thank you Nandita. And before now I will introduce the most important speaker of our the program, Dr. Ragini Agrawal. She is Director Medical Services for W. Pratiksha Hospital and Clinical Director of Ops and Gynae Minimal Invasive Surgery, Access Surgeries and Cosmetic Gynecology at Gurgaon Pratiksha Hospital.
And but basically she has been a friend of mine. I can't read whatever is written on the slide, but I can just tell you that she dons many hats to her personality. She is a medical educationist, she is a committed team leader, and she is a social contributor for adolescent health all over, and she plans to start a fellowship course in adolescent health all over the especially in her institution. So I welcome you, Ragini. She will be talking mainly on the diet, nutrition, exercise and yoga for adolescents. Dr. Ragini Agrawal. Ragini, you are muted. Ma'am, please unmute. Yeah. Thank you, Pratima ji, for your kind words. I am sharing my screen. नमस्कार, आप लोगों का सबका इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और मैं आभार प्रकट करती हूं आप सबके लिए जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है, बच्चे, बड़े, टीचर्स, पेरेंट्स, हमारे फॉक्सी के सभी सदस्य और खास करके हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्पेश गांधी जिन्होंने इस कोरोना के कठिन समय पर भी फॉक्सी की जो एक फिलॉसफी है समाज के साथ जुड़े रहने की, समाज के लिए केयर करने की, उसको एक बहुत ही नए ढंग से निभाया है और लगातार कोई ना कोई सामाजिक कार्य को कॉन्क्लेव के द्वारा सबके लिए पहुंचाया है। और जो हमारे युवा वर्ग है, एडोलसेंट वर्ग है, वो तो हम सबके दिल के इतने करीब है कि बिना उनके तो ये जिंदगी ही हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य वही है, हमारा वर्तमान वही है। क्यों हमने सोचा ऐसे? मैम, देश की आबादी का आपकी पीपीटी को प्लीज स्लाइड शो पे डालिए। ओके तो आज बाबा भोलेनाथ का के ब्लेसिंग्स के साथ ही मैं ये दिन शुरुआत करना चाहती हूँ। और मेरा जो टॉक है वो ये जो भी आज आपने सुना उस टॉक का अंत है, क्योंकि आपने जो भी सुना अंत में आपको अपनी दैनिक दिनचर्या को चेंज करने के लिए ही समझाया जा रहा है। और हमने इसको पर्टिकुलरली एडोलसेंट टू युवा 13 से 23 साल का जो एक रखा है इतना बड़ा, वो इसलिए रखा है, ये वो कड़ी है जो कि बच्चों से एडोलसेंट में घुसती है और 23 साल पे जाकर के ही उनका फ्रंटल लोब पूरा डेवलप होता है और वो एडल्ट्स में घुसते हैं। तो वहां से लेकर के उस कड़ी के अंत तक का हमें उनसे बात करनी है। और हमारी देश की आबादी का बड़ा हिस्सा हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का है, लिहाजा हमारे विद्यार्थियों को शिक्षित करने, रोजगार के लायक बनाने के साथ साथ तंदुरुस्त बनाए रखने का हमारा एक बहुत बड़ा हमें जरूरत है। और तभी वो आने के समय में एक समर्थ इंसान के रूप में जीवन की तमाम चुनौतियों से लड़कर अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए समाज और देश को मजबूत बनाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे संभव होगा? निसंदेह इसके लिए छात्र छात्राओं को एक सरल, सक्रिय व सामान्य जिंदगी जीने का अवसर देना होगा, उन्हें इसके लिए प्रेरित करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों को पौष्टिक खान-पान, समुचित पढ़ाई, रोजगार, उन्मुख दक्षता एवं शारीरिक सक्रियता के प्रति निरंतर जागरूक करते हुए जीवन शैली प्रबंधन यानी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए इसके महत्व को हमें समझाना होगा। उससे क्या होगा? आप लोगों को जब इसका एक अच्छी तरह से अनुभव हो जाएगा और आप अपने दिल के अंदर इसको बसा लेंगे, नहीं हमें अपनी दैनिक दिनचर्या को बदलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करके दिखाना है, तो एक एंथुजियाज्म के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप बढ़ेंगे। क्योंकि आप सक्षम हैं इसलिए बढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे और आनंदित रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जीवन शैली प्रबंधन से जुड़ी हुई बुनियाद की बातों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। और जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्री डॉक्टर पुरंदरे जी ने, जो कि हम लोगों के लिए सबके लिए बहुत ही माननीय है और हमारे सबके टीचर हैं, उन्होंने इसी शब्द के साथ, जो कि मेरी जिंदगी का मूल मंत्र है, स्वास्थ्य ही धन है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। क्योंकि इसको आपको कहीं से भी, कितना भी आपके पास पैसा हो, आप खरीद नहीं सकते हैं, कहीं से उधार नहीं ले सकते हैं। ये वो चीज है जिसको आप खुद ही पैदा करेंगे और तभी आपको मिल सकेगा।
और जब हम यहाँ पर, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप मोटे हो तो पतले हो जाओ, आपको बीमारी है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, एक स्वस्थ लाइफस्टाइल की। जब हम स्वस्थता की बात करते हैं तो स्वस्थता का मतलब ये नहीं होता है कि आपका वजन कैसा है, आपकी शक्ल कैसी है। हम बात करते हैं आप फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, इमोशनली भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से आप फिट हैं कि नहीं फिट हैं। ये बहुत जरूरी है, इन सारी बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसे आपको अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। और यही नहीं, जैसा कि पहले डॉक्टर दुरुशाह ने आपको बताया कि आपको क्रॉनिक डिजीजेस से भी ये बताता है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो और ये एक बात और भी है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको अपने पर विश्वास होगा, तो एक आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह सामने आएंगे। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, आखिर हम क्या हैं? हम खुद हैं, हम अहम ब्रह्मास्मि। हमारा जो शरीर है वही भगवान की देन है और उसको स्वस्थ रखना ही हमारी जिम्मेवारी है। आप कहीं भी जाते हैं, आपका नाम मान लीजिए अक्षय है, तो लोग अक्षय को देखते हैं ना, वो ये तो नहीं देखते हैं आगे क्या है और पीछे है। वो आपसे बात करते हैं तो आपको देखते हैं। तो आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेवारी है। तो आइए जरा रुक के एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या हम अच्छी लीडिंग हेल्थ लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं? शायद नहीं। मैं इस कोट्स के साथ आपको बताना चाहूंगी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस वेयर यू लिव। और कोई नहीं रहता है, सिर्फ आप ही रहते हैं उस बॉडी के अंदर। तो जब हम हेल्थफुलनेस की बात करते हैं, लाइक माइंडफुलनेस, तो सबसे पहले चीज आती है, डू यू डू सैड? आप दुखी रहना चाहते हो? नहीं रहना चाहते हो ना? तो फिर सैड आपकी जिंदगी में क्यों है? सैड का मतलब होता है स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स। डॉक्टर लक्ष्मी ने इतना खूबसूरत बताया है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं भी सिर्फ उसी को सोचती रह जा रही हूं। दूसरी चीज वजन। वजन का मतलब स्किनी रहना, जिम के पीछे पागल हो जाना, 6 पैक्स बनाना, ये नहीं होता है। देयर इज अ रेंज ऑफ हेल्दी वेट, यू शुड नॉट बी अंडर वेट, नॉट ओवर वेट, यू शुड मेंटेन इट। और आपके खाने में फ्रूट वेजिटेबल्स जरूर होनी चाहिए। फ्रूट वेजिटेबल का ये मतलब नहीं है कि आप जाकर के इंपोर्टेड फ्रूट्स खरीद के लाइए। जो सीजनल फ्रूट है वो भी उतने ही अच्छे हैं। आपकी रोज की लौकी, तोरी और पालक भी उतना ही अच्छा है जो आप एक जाकर के अगर किनोवा खाने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी हम कोई भी चीज ऐसी बात नहीं करते हैं जो हम समाज के हर पहलू को ना छू सकें, हर लोगों को हम बात ना कर सकें। और एक्सरसाइज, मैं फिर से कहूंगी, मेरी एक्सरसाइज का मतलब स्वस्थ रहना है। आपके वजन को कम नहीं करना है, आपके पैक्स बनाना नहीं है। 30 मिनट एक्सरसाइज 5 टाइम्स अ वीक इज मोर देन इनफ। तो गुड हेल्थ के लिए क्या करना है? एक संतुलित आहार जो हल्का हो उसे खाना है, गहरी गहरी सांसें लीजिए, मॉडरेट लीजिए, खुश रहना सीखिए और अपनी जिंदगी में कोई हॉबी पैदा कीजिए जो कि आपको इंटरेस्ट करे। मेरी हॉबी ना सिर्फ, आजकल सब कहते हैं आपकी हॉबी सिर्फ वेबिनार पे बैठे रहना है। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग जिसने इस कोरोना पीरियड में मुझे सबसे जोड़ के रखा है और मुझे एक सेकंड के लिए बोर होने नहीं दिया। मेरे पास तो समय ही नहीं है कि मैं कब बात करूं कि मेरे पास समय नहीं है और मैं बोर हो रही हूं। तो अब हम क्या बात करेंगे? देयर छोटी छोटी चीजों की, छोटी छोटी चीजें आपकी बड़ी बड़ी चीजों को आपकी जिंदगी में ला सकती हैं। शायद कहीं ये शाहरुख खान का भी कोई ये डायलॉग था कि छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी चीजें हमें मिलती हैं। तो लाइफ स्टाइल में की भी बात है कि बहुत सारी चीजें आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। खाने के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम डिटेल में बात कर सकें, थोड़ा सा पीने के बारे में, थोड़ा सा सोने के बारे में, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट थिंग इन दिस लाइफ, जिसको हम पता नहीं क्यों लेके घूम रहे हैं, जबकि आजकल कि मम्मी पापा के पास कोई काम ही नहीं है बच्चों के चारों तरफ घूमने के अलावा, तब भी आजकल के बच्चे इतनी स्ट्रेस भरी जिंदगी जीते हैं, पता नहीं किस लिए। इस स्ट्रेस को हमें अपनी जिंदगी से अवश्य निकालना है। तो खाना क्या है? आखिर खाना क्या है? खाना न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ एक चीज है जो आपके बदन को चलाता है। आपको कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए क्योंकि वो आपको डेली एनर्जी सोर्स है। तो आप बोलेंगे हमें तो कहा जाता है लो कार्ब डाइट खाओ, कार्बोहाइड्रेट बुरा होता है, उससे हम मोटे हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट आप नहीं खाओगे तो आप दिन भर चिड़चिड़े रहोगे, कमजोर रहोगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी। आपको ये जानना है अच्छा कार्बोहाइड्रेट क्या है, बुरा कार्बोहाइड्रेट क्या है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है
जब उसमें उसके साथ आप फाइबर्स लेते हो, फाइबर आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं, धीरे धीरे आपका खाना पचाते हैं, जिससे आपका खाना आपकी बॉडी में लंबे समय तक रह सके, आपको बार बार खाना ना पड़े। फिर प्रोटीन, हमारी हिंदुस्तानी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, प्रोटीन पे ध्यान दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो देखिए आपके खाने में दाल है कि नहीं है, हफ्ते में 2 दिन दाल खाने से काम नहीं चलेगा, आप काले चने मूंग को अपने खाने में जरूर डालिए, और ये आपकी बॉडी में मसल मास बनाता है, आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, आपको डेवलपमेंट में सहायक होता है। फैट, यस यू नीड फैट, फैट आपको मोटा नहीं करता है, आप गलत फैट खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, तला भुना खाते हैं, वो आपको मोटा करता है। लेकिन अगर आपने 1 चम्मच घी खाया और जरूरी चीजें जो आपके खाने में फैट की तरह आ रही हैं उनको खाया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है, एंड विटामिन और मिनरल्स आपको थोड़ी थोड़ी चाहिए, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि आपके बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। और सबसे जरूरी चीज है वाटर। आपका 70% बॉडी वाटर से बना हुआ है, आपके बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर से जाते हैं, आपके जॉइंट्स ऑर्गन्स की मोटिलिटी वाटर से होती है, और आपकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट वाटर निकालता है, आपका टेम्परेचर वाटर मेंटेन करता है। तो ये बहुत जरूरी है इस ग्रोइंग एज में, जब आप बढ़ रहे हैं तो आपको अपने डाइटरी कंसिडरेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात मैंने इसमें लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, बोन हेल्थ बहुत जरूरी होती है, और बोन में जो मिनरलाइजेशन होता है वो हम सिर्फ यंग एज में कर सकते हैं। 25 इयर्स के बाद बोन्स में मिनरलाइजेशन उस ढंग से नहीं हो सकता है। तो जो बड़ी उम्र में जाके ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो जाती है, उसका ध्यान भी आपको इसी उम्र में रखना है, और इसलिए राइट अमाउंट खाइए, राइट प्रोपोर्शन खाइए और राइट टाइप वाला खाना खाइए, तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। तो हेल्दी ईटिंग का क्या मतलब है? ईट हेल्दी, नरिश योर बॉडी, बैलेंस डाइट, हर ढंग का खाना आपके खाने में होना चाहिए, फ्रूट डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए, और सैचुरेटेड फैट, शुगर, सॉल्ट कम करिए, रेगुलर मील्स खाइए। ये नहीं कि आज मैंने सवेरे नहीं खाया मैं रात में खा लूंगी, मैंने रात में खाया था तो मैं सवेरे मिस कर दूं, नहीं, आपको रेगुलर टाइम पे खाना है और अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करना है। ये प्लेट डॉक्टर राजल ने डिटेल में दिखाई है, तो इसको ना डिस्कस करते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हेल्दी डाइट आपकी हैबिट को मेंटेन करने के लिए है, और आप वही हैं जो आप खाते हैं, वो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे, आपके उसमें दिखता है। खूब 2 लीटर पानी एटलीस्ट आपको पीना है, जरूरी है। और चाय, कॉफी और शुगरी ड्रिंक वो आपको डिहाइड्रेट करते हैं, वो आपका वाटर इनटेक नहीं है। अगर आपको सुंदर भी दिखना है ना, आपको अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए, तो उसके लिए कोई क्रीम काम नहीं करेगी, आपको मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज का मतलब मॉइस्चराइजेशन नहीं है, बॉडी का मॉइस्चराइजेशन है, जो कि वाटर से ही आता है। चलिए अब आपको एक बात करते हैं, सोना है हमको, तो सोना है उस समय सोने के वक्त ये नहीं सोचना है कि अब हमें सुबह क्या करना है या दिन भर हमें क्या नहीं मिला और क्यों नहीं मिला। सोइए, अच्छे से रेस्ट करिए, आपका एपेटाइट कंट्रोल होगा, आप गलत खाइएगा नहीं, ट्रिगर ईटिंग नहीं होगी, और प्लीज कंप्यूटर के सामने बैठ करके उल्टा सीधा मत खाइए। 6 से 8 घंटा आपको जरूर सोना है, जिससे आप सवेरे एक अच्छी एनर्जी के साथ उठ सकें। अगेन दिस स्लाइड एवरीवन विल शो यू, मैं भी बताऊंगी, हालांकि डॉक्टर लक्ष्मी ने बहुत डिटेल में बताया है। अपनी जिंदगी से सैड निकाल दीजिए, हैप्पी रहिए। कितना अच्छा नाम है ना, स्मोकिंग S, अल्कोहल A एंड ड्रग्स D, नो सैड इन आवर लाइफ। अब मिस्टर पॉल हुए हैं जिन्होंने 1886 में हुए थे, और उन्होंने ये स्लोगन दिया, 5 मील चलना एक अनहैप्पी से अनहैप्पी इंसान को, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, तभी वो खुश रह सकता है मानसिक और शारीरिक रूप से, अगर वो चलेगा। तो हमको एक्सरसाइज करनी है, घर में भी कर सकते हैं। आजकल तो कितने वीडियो आए हुए हैं, 5 माइल वॉक इन द होम, हैव मैट इन द होम, एवरीथिंग इन द होम, यू कैन डू ऑल द एक्सरसाइज। तो ये आपके मूड को अच्छा रखेगा, आपके मसल्स को बनाएगा, बोन हेल्थ मेंटेन करेगा, क्रॉनिक डिजीजेस से बनाएगा। सिर्फ आधा घंटा थोड़ी सी एक्सरसाइज 5 दिन करिए और उसका असर देखिए कैसे आपकी जिंदगी चुटकी बजाते ही बदल जाएगी। वॉक वॉक वॉक,
देखिए, इसमें बहुत जरूरी है आपको अपनी जिंदगी में स्टेप्स को डालना। कैसे डालेंगे आपकी मर्जी, आप जुम्बा करके उछलते हैं, घर में चलते हैं, सीढ़ियां चलते हैं, जंगल में घूमते हैं, चिड़िया देखने जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड एक्टिविटी। लेकिन आपको करना है अपने साथ ही घूमना है। आपको कोई मिले या ना मिले, वॉक आप अकेले कर सकते हैं। आपकी कैलोरी खत्म होगी, आपकी सेल्फ एस्टीम बनेगी, स्ट्रेस जाएगा। योगा और प्राणायाम आज हर कोई जानता है, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने सिखाया है। ये हमारी देन है और इसे हमें अपने पास रखना है। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रूव बैलेंस के साथ साथ ये मानसिक रूप से भी आपको मजबूत करता है। और आज कोरोना के समय में हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात करते हैं और उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो बात होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लंग्स को मजबूत बनाती है। के बारे में मुझे तो वो लोग अच्छे ही नहीं लगते हैं जिनका कंधा झुका होता है, कमर नीचे करके बैठे होते हैं। अरे भाई, आपको भगवान ने हाइट दी है स्ट्रेट रहने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीछे की तरफ अकड़ के खड़े हो जाएं, वो भी आपकी बॉडी के ऊपर एक बुरा असर डालेगा। आपको सीधा खड़ा रहना है और कंटैक्ट आंखों से आंखों का करके रखना है। पीठ को थोड़ा अंदर रखिए और ये बॉडी लैंग्वेज आपके बहुत काम आएगी। खास करके जब आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा ना, तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह नजर आइएगा। और कभी भी जब आप झुक करके बैठते हैं इंटरव्यू में ना, तो सामने वाला सोचता है यार ये तो अभी से झुका हुआ है, तो ये आगे क्या करेगा। और उस समय जब आपका सिलेक्शन भी होता है ना, तो जो आपको पर एनम मिलना होता है उसमें कुछ लाख कम भी हो जाते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट सामने नजर नहीं आते हैं। तो भगवान बुद्धा ने इसके लिए क्या बोला है, ना पास्ट में जियो ना फ्यूचर में जियो, वर्तमान में रहो और बुद्धिमानी से रहो और पूरे के पूरे विश्वास और ईमानदारी से रहो। तो ये आपको अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना करके चलना पड़ेगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में तनाव और चिंता नहीं हो, और बुराई भी नहीं है। अगर नहीं होगा तो शायद आप इतना आगे भी नहीं बढ़ेंगे। अगर आप भूल जाएंगे कि सबको राखा राम, तो आपको ऐसा नहीं है, रखना है, लेकिन पूरे समय नहीं रखना है, क्योंकि ये आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को परेशान करता है, आपकी परफॉर्मेंस को खत्म करता है और आप पीछे चले जाते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन भगवान ने हमारी बॉडी में दिया है लड़ाई करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो उसको आप 24 घंटे के लिए अपने साथ क्यों रखते हैं? अगर आप 24 घंटे उसको अपने साथ रखेंगे तो आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं और दिन भर चिड़चिड़े रहेंगे, बैड टेम्पर का शिकार रहेंगे। तो आपके दोस्त भी आपसे दूर हो जाएंगे, लोग भी आपसे बात करने में डरेंगे। तो इसलिए शायद स्ट्रेस हार्मोन एक ऐसी चीज है जो हमें अपनी बॉडी से निकालना है। हम लोग तो एडोलसेंट थे तो हमसे तो कोई बात ही नहीं करता था ऐसी, हमें बताया ही नहीं गया। यू आर सच अ लकी पर्सन, एवरीबडी इज टॉकिंग टू यू, लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं और इसको आप सीखिए। ऐसा नहीं, हम आपको प्रीच करने के लिए नहीं बैठे हैं। वी लव यू फ्रॉम आवर हार्ट। हमें चाहते हैं कि जो चीज हमें नहीं मिली शायद वो हम आपको दे सके और कहीं ना कहीं हम आपस में फिर से जुड़ सके। आप हमसे कोई भी बात करने, आपसे मतलब चाहे पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, उससे आप बात करने में कभी भी मत हिचकिए, क्योंकि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। उसके दिल में सिर्फ आपके लिए अच्छी भावना होती है। हंसिए, खुल के हंसिए। देखिए, जिंदगी का आनंद लेना ही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है और हमें खुश रहना चाहिए और हमें नो कहने की आदत होनी चाहिए। अपने को पैम्पर करिए, एक्सरसाइज करिए, बढ़िया खाना खाइए। और जो लोग अच्छे से हंसते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा खुशनुमा होती है, ज्यादा जिंदा रहते हैं। और ये लाफ्टर भी एक मेडिसिन है जो कि हम लोग सबको ही जानते हैं। और एक बात बताएं, जब आप मुस्कुराते हैं और हंसते हैं तो आपके चेहरे की ज्यादा स्माइल्स, आपकी ज्यादा की मसल्स काम आती हैं। तो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में एक ऐसी हॉबी बनाइए जो कि आपको खुश रखने के लिए प्रेरित कर सके। मेडिटेशन, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। वो समय एक ऐसा समय होता है, सिर्फ आप होते हैं, ओनली 1 मिनट मोर, और 10 से 20 मिनट सिर्फ अपने को दीजिए, जब आप दुनिया से भूल करके और इसका आनंद लीजिएगा। पॉजिटिविटी, बी पॉजिटिव, ग्रेटिट्यूड अपनी जिंदगी में रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी जिंदगी में एनर्जी लाएगा, डिफिकल्ट चैलेंज से आपको मिलने देगा। आपको हमेशा सोचना है शायद ये जो मेरे लिए बुरा हुआ है, ऐसा तो नहीं, इसके अंदर कुछ अच्छा छुपा हुआ है, और आगे के लिए चल दीजिए। और ये आपको ऐसी एनर्जी देगा, आप अपनी जिंदगी में आने वाली किसी कठिनाइयों से कभी भी नहीं डरिएगा। तो लास्ट
but one slide inspire. Every moment of your life should be inspired with something. You motivate yourself and other. Improve your each and every step. Be positive. Focus on your लक्ष्य उसके ऊपर अपना ध्यान रखें और अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाइए, जिससे आप खुद चेंज होंगे और दुनिया को चेंज करेंगे। टेक होम मैसेज सिर्फ ये है, हेल्थ इज वेल्थ। खरीद नहीं सकते हो, रेंट नहीं कर सकते हो और पा सकते हो, और आपकी उम्र एक ऐसी उम्र है जब आप अर्न लर्न कर सकते हो, रीलर्न कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एमबीए मत करो, वो बिजनेस मैनेजमेंट सिखाता है, और उस बिजनेस मैनेजमेंट को भी आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से बिल्कुल सीख सकते हैं। चलो चलें एक कदम, कुछ आप बढ़ाओ, कुछ हम बढ़ाएं और एक नया स्वस्थ समाज बनाएं। और इसके साथ मैं हर किसी का फिर से धन्यवाद करती हूँ, खास करके उन लोगों का जिनके मैंने फोटोग्राफ्स लिए हैं, जिनके मैंने कोट्स लिए हैं, जिनके लिए मैंने मटेरियल्स उठाए हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, यू हैव मेड माई दिस टॉक वेरी ब्यूटिफुल। हर लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं, स्कूल, कॉलेज, सोशल क्लब, स्पेशली रोटरी क्लब, हरियाणा से अंबाला है, और भी शहर वाले, इनर व्हील्स, किस किस क्लब का नाम लूं, कितने स्कूल चेन, सब आज मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अलायंस क्लब का, पोदार स्कूल का, और हमारे फॉक्सियन, स्पेशली माय प्रेसिडेंट। आई एम थैंकफुल फ्रॉम माय हार्ट। और ये मेरा सिग्नेचर है मेरी लाइफ का, जो कि मेरी हर ईमेल के ऊपर होता है। मोर स्माइलिंग, लेस वरिंग, मोर कंपैशन, लेस जजमेंट, मोर ब्लेस्ड, लेस स्ट्रेस्ड, मोर लव, लेस हेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू रागिनी, आपने इतना सुंदर अभिव्यक्ति किया है अपने विचारों को कि मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको कैसे मैं कहूं कि क्या है। बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इतनी अच्छी जानकारी सब बच्चों को दी। 1 लाख से अधिक बच्चे हमारे पास लॉग्ड इन हैं, जैसा कि डॉक्टर अल्पेश ने बताया, और मैं सोचती हूँ कि उनके लिए ये सब जानकारी जो आपने दी है बहुत ही फायदेमंद रहेगी। और जैसे कि आपकी टॉक में स्पेशली था कि हमें फोकस करना है खान पान पर, एक्सरसाइज पर, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर, दैट इज मेडिटेशन, योगा। आई थिंक दीज आर द क्रक्स ऑफ लाइफ विच कैन रियली चेंज योर लाइफ। और अब मैं इस सेशन को समराइज करने के लिए 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ कि भी इस सेशन में हमने बात की मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, अच्छे लाइफस्टाइल की, बुरी आदतों से बचने के लिए उपाय बताए गए, बुरी आदतों को जल्दी पहचानने के उपाय बताए गए। तो मैं इन सब में एक ही चीज सब लोगों को कहना चाहती हूँ, बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, कि प्लीज 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 आत्मविश्लेषण कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। क्या हम ये सब चीजें कर रहे हैं? क्या ये सब हम सब बहुत सारी चीजें हम जानते हैं पर हम करते नहीं हैं। क्या हम ये सब चीजें कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं और वो चेंज कर सकते हैं? और अगर चेंज कर सकते हैं तो व्हेन विल वी डू द चेंज? दैट डन इमीडिएटली, इट शुड नॉट बी डिलेड, वी शुड डू इट टुडे, एट प्रेजेंट इटसेल्फ, जस्ट नाउ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबडी फॉर गिविंग मी an opportunity to be here. थैंक यू। धन्यवाद प्रतिमा मैम, एंड धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र कलछेतकर मैम, जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों से विदा ली हैं। और मैं सभी स्पीकर्स की भी आभारी हूँ इस आप सबको इतनी जानकारी देने के लिए एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर। मैं आशा करती हूँ कि ये सब आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। इसके बाद मैं आवेदन करती हूँ हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट, यानी कि हमारे आगामी प्रेसिडेंट डॉक्टर शांता कुमारी मैम को डॉक्टर शांता कुमारी। डॉक्टर शांता कुमारी मैम चेयरपर्सन वर्किंग ग्रुप्स की फॉक्सी रही है 2013 में। वो चेयरपर्सन रही है MNNRCC फॉक्सी कमिटी 2008 से 2010। IAGE मैनेजिंग कमेटी की मेंबर रही हैं 2015 से 2019। बहुत सारे एकेडमिक पेपर, बहुत सारे कायम
डॉक्टर शांता कुमारी बहुत एक्टिव हैं एकेडमिकली। बच्चों, भाइयों बहनों एंड मेरे सारे सीनियर्स, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर शांता कुमारी मैम को हमारे इस ई कॉन्क्लेव की किताब की रिलीज के लिए। डॉक्टर शांता कुमारी मैम। Good afternoon, friends. On behalf of Foxy, our president this year, Alpesh, and the whole team who is involved with this Adolescent E-Conclave program, I have to congratulate Ragini, our vice president, the whole team, Dr. Girish Mane, Dr. Sampath Kumari, Rakhi Agarwal, Kalyan Barmade, Rajal Thakur, Rakhi Singh, Niharika. All of you have done a wonderful job. We have to congratulate the 110,000 adolescents who have logged in for today's program. Alpesh had announced that we will be reaching out to more than 1 lakh of adolescents. Foxy is committed to women's health, adolescent health. You are 20% of the population. You are the future of the country. So we are very proud that Foxy could connect with you all, and I've been hearing the lectures. बहुत ही आसान से उन्होंने आप लोगों को समझाया कि how you can take care of your health. I've been asked to talk in English by some schools in the south so that they can understand better. So friends, I am very happy that this conclave has been so successful, and I'm proud to actually release the reading material for today's e-conclave. You have been hearing about all the issues in adolescent health, and Foxy is committed to adolescent health. Way back in 2013, Foxy had done the Foxy FIGO conference in Hyderabad. He invested in the girl child. He spoke about how to save the girl child, how it is our duty. And we had an adolescent girl child as our brand ambassador, who was none other than PV Sindhu, who was an adolescent girl that time. She went on to become the Olympic star of India. So I'm sure we will have many more shining stars in all the 1 lakh plus adolescents who are there in our today's program. Please take care of your physical health, mental health, because you have to be strong for a strong India. So we rely on you for a strong India, a strong future of the country. So I'm very happy today to release this reading material in a very symbolic fashion. So friends, I'm sure that you will be receiving all the e-material from the virtual media. They will be emailing it to all of you. Please be a part of the future of India in a very optimum way. So we are very, very happy to have all of you here. Congratulations again to the whole team of Foxy for bringing this unique project of e-conclave, where we could have connected to this 110,000 young adolescents across the country, north, south, east, west. Every part of the country has been reached. And we wish all of you all the best for your future. Take care of yourself, take care of us, take care of our country. Thank you, madam. Congratulations, Ragini. Again, very well done by the whole team of Foxy, and I'm sure the children are very happy. Madam, with the permission of all, I would like to speak something. दोस्तों, ये जो प्रोग्राम शुरू है, ये फॉक्सी की तरफ से हम जो ले रहे हैं, हमने ये सोचा है कि आने वाले 1 या 2 महीने में सेम प्रोग्राम हम अलग-अलग टॉपिक के साथ आपके लिए करने वाले हैं. तो आप जो भी लोग आज सुन रहे हैं और जो भी प्रेसिडेंट्स है, जो भी प्रिंसिपल्स है, जो टीचर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि आने वाले प्रोग्राम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के तरफ आप इसके बारे में आप बताइएगा. और 2 महीने के अंदर हम और एक प्रोग्राम आपके लिए अरेंज करने वाले हैं. तो इस कार्यक्रम के लिए आप सारे लोग निमंत्रित हैं. थैंक यू. Thank you, Dr. Shanta Kumari ma'am.
to the much awaited announcements for the slogan and poster competition. For the slogan contest, to announce the winners, I call upon the very dynamic Mr. Hafizur Rahman. Hello, am I audible? Mr. Hafizur Rahman Yes. is Professor of Ops and Gynae at Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences, Gangtok, India, with over 50 scientific research papers. He is international. He's been an international faculty. He's won several awards, and he's been the founder secretary of Gangtok Obstetrics and Gynecological Society, and been the organizing secretary of the East Zone UA Foxy at 2018. Over to you, Dr. Hafizur Rahman. Yeah, thank you. I'd like to thank Foxy, especially President Alpesh Gandhi sir, Vice President Ragini ma'am. I am seeing Shanta ma'am also. It's very, I am seeing very often her, and Adolescent Committee Chairperson Dr. Girish Mani. It was a very tough job because especially for the students, there was almost 1,000 entry. So over a period of time, and the 2 days, that is, the 3 judges, you have to go through all the mails. And for the students, सारे स्टूडेंट को हम ये बताना चाहेंगे कि ऑलमोस्ट आप लोग सारे विनर हैं, आप लोग पार्टिसिपेट किया है, और ये देख के ये लगता है व्हाट इज योर इनसाइट. नो, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी गो थ्रू द स्लोगन्स एंड see what is their thinking. Actually, it's sometimes very difficult to this tough job. But I'd like to thank that is my fellow co-judges, Dr. Neeta Dhawai and Dr. Shushan Williams. So they make a job easier for us. That is, we had a consultation on this. So हम पहले ये बताएंगे, सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग नहीं डिसअपॉइंट हो जाइए, क्योंकि इट इज द रोल ऑफ कंपटीशन कि हमें एक टाइम में फर्स्ट सेकंड थर्ड चुनना पड़ता है. बट एज ए होल आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, और दैट फॉक्सी वुड लाइक टू, कि आपने जितने भी पार्टिसिपेट किया आप लोग सारे एक एक विनर हैं, और ये हमें बड़ी अच्छा फील करा है आप लोग सारे का अंदर का बात जान के, बहुत सारी सजेशंस देख के. बट फिर भी ये देख के हम सारे फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल द अनाउंस द फॉर द एडोलेसेंट्स, that is the third one, that is I'd like to address, that is this she addressed Ayushi Patel, the third prize. Sorry, it is the third for the Foxy member. That's okay, that is Foxy member. So it is the third prize go to Dr. Ashwati Kumaran. The slogan is Adolescent Health Nurturing the Foundation to Vibrant Future. Dr. Ashwati is from Manipal OBGYN Society. The third prize is for this Adolescent Health Nurturing the Foundation to Vibrant Future. This is Dr. Ashwati Kumaran. Now the second prize, the third is, that is slogan is the Virar Hona Teen Ki Shan, Nahi Chahiye Upadesh Ala Gyan. Empower them with health needs, healthy feats, let them be the change world needs. That is Dr. Garima Gupta. Dr. Garima is from Kanpur OBGYN Society. Now the first fight from the Foxy member is, that is Atish Shasth की शुर है राष्ट्र की कर्णधार, निरोग एवं सहज जीवन उनका अधिकार. This is Dr. Anita Rajoria from Delhi OBGYN Society. So congratulations to all the winners. Now going back to, that is the students awards, I'd like to first tell the third one, that is third prize, to judge the competition on relevance to the theme, clarity of the message, originality and creativity. So that is the thing we assessed on the for the teens. So teens, one need not be disappointed, as again I am telling, they are all winners, almost 1,000 we have been thrown. The third prize, that is Ayushi Patel, addressed the role of mental illness well. So I'll go like to briefly what is she, that is the age of pursuing studies 16, not conceiving babies, avoid pregnancy before 21 years of age. The other aspect she has is about the mental illness. To be healthy as a whole, mental wellness plays a role. So this is Ayushi Patel. So for the third prize. The second prize, that is drugs and pregnancy, two issues teens frequently battle. So that is goes to Saranya Sirakumar,
from Sri Balaji Medical College, South Zone. The slogan is, it's easy to get a drug and become a junkie, hard to defy and overcome pregnancy. Don't let adolescents to be in agony, improve them to prove their own identity. So that is Saranya Sirakumar from Sri Balaji Medical College, South Zone. Now coming the most awaited, the first prize, he put in a lot of thought and could very effectively summed up the requirements of for prevention adolescent health, very simple and effective way. That is only a few words. The slogan is adolescent health requirement, information, education and supportive environments. So this is Rishabh Banial. He's from MRDAV Public School, Solan. He's a class 8 student. So that is Rishabh Banial first prize. So congratulations to all the winners for the slogan competition. We move on to the poster competition. Yeah, Dr. Niharika will. Yeah. Hello, thank you, Dr. Hafizur, for doing bringing smiles to a lot of faces with your announcements. And I'm sure everybody is a winner in a competition. Some just score better. That's all. And now moving on to the poster competition, I call upon the youth icon of Foxy, Dr. Niharika Malhotra. Dr. Niharika is a chairperson of YTP Committee Foxy 2020 to 2022, Joint Secretary Foxy 2018, infertility consultant at Rainbow IVF Agra, and an executive member of the Society of Fetal Medicine 2020. She is also an active member of IUMB, ISAR, Foxy, UPCon, SFM, and Aspire and NARCHI. Dr. Niharika, the stage is all yours. Thank you everyone and good afternoon to all the kids who are present here. I think we've had a wonderful morning and afternoon today and I am sure कि सबने बहुत enjoy किया और बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं and how to stay positive and I hope आप सब कोरोना से safe हैं, आप social distancing maintain कर रहे हैं and you are taking all good care of your health and also of your family. And it is so exciting. I'm very excited to announce the winners of the poster competition today. And itne sare posters aaye and I'm so thankful to all our judges who have judged these posters. And I'm going to announce the posters from 3 categories from doctors and 3 from the students. So our categories from the members of Foxy, we had 3 winners for the poster competition. The first winner was Dr. Deepti Gupta and I would request her poster to be shown here. So this was our first prize poster by Dr. Deepti Gupta. As you can see her wonderful poster, she is from Jabalpur. Our second poster prize was by Dr. Rajal and heartiest congratulations Madam. Dr. Rajal Thakkar made this wonderful poster, Catch Them Young and Teach Them Right. She is from Ahmedabad. And our third poster prize for today by our members was Dr. R. Rajeshwari. So congratulations to all 3 member winners of our posters and now we come to the students and हमारे 3 students winners हैं for the posters. Our first prize student poster is by Kaveri Pandya. Congratulations Kaveri. So Kaveri is from Sheth English Medium School. Then second prize youth poster prize is to Himakshi Hingar. So congratulations Himakshi. So Himakshi is from Bangalore and our third youth poster prize winner is Advait P. So congratulations to everyone and I hope आपको ये वाला program अच्छा लगा and please हम सबको feedback दीजिएगा on Facebook and YouTube. Dr. Niharika, can you please read the slogan? Okay sir. Plus poster prize sir, poster.
Niharika, for posters, can you please tell us about slogan? Actually, this was a poster competition, no? Slogans So, were, yeah. But anyway, so now, like, congratulations to all winners, and I really appreciate Niharika for like declaring the winners, and like a youth icon declaring the youth winners. That's a real great work being done, and I really appreciate the hard work being done by Dr. Alpesh Gandhi sir, our Foxy president, and his team for creating this extraordinary webinar, and including all the youth across the India. In this corona time, it is impossible to meet physically, and he has created this extraordinary platform. Really, really commendable job by Dr. Alpesh Gandhi and his team. Thank you very much. So now we move on to our next session, for which I would like to invite Dr. Rakhi Singh to moderate the question answer session, and Dr. Prema Keshan. Over to you, Dr. Rakhi and Dr. Prema. Thank you very much. Dr. Prema is not coming. She is just for some personal reason. So Dr. Chandan Kachru is joining with Dr. Rakhi Singh. That's great. So regarding Dr. Rakhi Singh, she is the chairperson of the endocrine committee of Foxy, and she is secretary of UP State Research Chapter. She was a past president of the Noida Society, and she has written many chapters in national and international journals. So over to you, Dr. Rakhi, and I invite Dr. Kachru also. May I have Dr. Rakhi on the board? Thank you, Dr. Sheetal. And it's a lovely program. बहुत बढ़िया से सुबह से हम सब सुन रहे हैं. And पूरे बच्चों ने भारतवर्ष के सबने बहुत एंजॉय किया है. And इतने सारे कमेंट्स हैं, हजारों में कमेंट्स आए हैं नॉन स्टॉप, एंड विच आर स्टिल कमिंग, एंड कई सारे सवाल जवाब है. अलॉन्ग विद मी मेरे साथ डॉक्टर लर्नेड डॉक्टर चंदन खाचरू हैं, जो कि ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं हम उनका. एंड हम सब जो उनमें से हजारों क्वेश्चंस हैं, कई सारे हजार क्वेश्चंस, अमॉन्ग विच हम लोगों ने कुछ सवाल निकाले हैं, और हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था ये निकालना. मतलब इतना सारा टाइम देना भी सारे सवालों के लिए बहुत मुश्किल था, बट स्टिल बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने निकाले हैं. डॉक्टर चंदन को मैं बोलती हूँ पहला क्वेश्चन पूछे. The first question is that can we have sex education class in classrooms in the schools? Can Foxy help us in creating this? Dr. Alpesh. Dr. Alpesh. Dr. Alpesh. Foxy is working with Government of India, and Foxy will do whatever the vision of Government of India regarding the sexual and reproductive health, and we will definitely include some of the guidelines, some of the guidance, and some of the chapter in the book which we are going to come out very soon. Thank you, sir. Dr. Rakhi, another. Over to you. What is the significance of Youth Day? कई लोग पूछना चाह रहे हैं, कई बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि ये हम क्यों मना रहे हैं. Why are we planning of this Youth Day? और हम क्यों इतना सब बात करना चाह रहे हैं इसके बारे में? Can anybody throw the light, please? तो क्यों मना रहे हैं वो तो एक बात दूसरी है. मना इसलिए रहे हैं क्योंकि उन तक हमें पहुंचना है. लेकिन इस यूथ डे को यूथ डे कहा क्यों गया, वो इसलिए क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी अफ्रीका में, जहां पर बहुत ही ब्लैक यूथ्स की डेथ हो गई थी. उसमें वो सड़क पर उतर आए थे और उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ाई की थी, और इसलिए उनके सम्मान में, उनकी याद में इसको इंटरनेशनल यूथ डे का नाम दिया गया. और लेकिन आज हमने फॉक्सी ने जो यूथ डे मनाने को सोचा, तो उस इंटरनेशनल यूथ डे को हम अपने साथ लेकर के अपने युवाओं से, अपने बच्चों से जुड़ना चाहते थे, और हम ये चाहते हैं कि वो इन चीजों को समझ करके और असली पीयर प्रेशर इस किस्म का दें दूसरों को. आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे और एक पीयर ग्रुप बना करके पीयर्स ग्रुप में ये प्रेशर डालेंगे, नो टू सैड, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ एंड स्वस्थ रहो और मस्त रहो. इसलिए हम यूथ डे मना रहे हैं. थैंक यू मैम. वैसे तो इंटरनेशनल यूथ डे
12th ऑफ अगस्त को आता है, बट बिकॉज ऑन 11th एंड 12th इट इज जन्माष्टमी, तो काफी सारे घरों में फंक्शंस होते हैं, इसलिए फॉक्सी ने यूनानिमसली डिसाइड किया था कि हम 10th ऑफ अगस्त को ये प्रोग्राम करेंगे। और इसी प्रोग्राम के बहाने जो मैडम ने बताया कि हम आप सबसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने ये डे मनाया है। So we will be happy. You will be all very happy to know that we got about 10,000 questions, and it was impossible for us to, go through each and every question. So one question from Patna: what to eat when we are expecting periods? Anybody can? क्या फिर से बोलो? What to eat when we are expecting periods, menstrual cycle के दौरान क्या खाना चाहिए? Chandan, can I answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dr. Sampath, please. See, during periods and menses time, you can have your normal regular food. Nothing. You should increase your liquid diet, fruits, vegetables. You should be more strong during this period. Thank you, ma'am. Before period, maybe little bit of salt if you can reduce, it may be helpful because of the hormonal effect. थोड़ा water retention रहता है period के पहले, तो थोड़ा salt कम किया, तो chocolate जैसी चीजें थोड़ी कम की। मैडम, डॉक्टर अश्विनी, many myths are coming from the students that मम्मी ये खाने को मना करती है, वो खाने को मना करती है, किचन में घुसने को मना करती है, तो हमें क्या करना चाहिए? मानना चाहिए उनकी बात, क्या करना चाहिए? नहीं, पहले तो चीज है कि आप मम्मी के साथ झगड़ो मत। हाँ, लेकिन उनको धीरे से आप बोल सकते हैं कि डॉक्टर ने तो बोला है कि सब चीज खा सकते हैं, जो भी अच्छा डाइट है वो ले सकते हैं, अभी घर में किसी छूना है नहीं छूना है, वो आई थिंक घर में सुलझाना चाहिए। अभी पेरेंट्स ने भी ये प्रोग्राम देखा होगा, तो शायद उनको लगेगा कि वो तो नॉर्मल ही है लड़कियां, वो पीरियड के टाइम में उनमें कुछ भी ऐसा बुरा असर नहीं है कि बुरी चीज नहीं है कि वो कुछ छू नहीं सकती है, लेकिन ये घर में सुलझाने की बात है, हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। चंदन मैडम, एक बहुत जरूरी मैसेज इसके ऊपर में, पुराने जमाने में सैनिटरी नैपकिन्स नहीं होती थी और सारे जो घर है वो मिट्टी से लिपे जाते थे, तो अगर किसी लड़की या किसी बड़ी लेडीज को अगर बहुत ज्यादा मेंसेस हो जाए तो उसका ब्लड घर में या जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहां पे अगर उसका स्टेन आता तो शायद वो उस समय में वॉश ऑफ करने के लिए बहुत डिफिकल्ट था। और उस समय में जॉइंट फैमिली होने की वजह से घर के सारे काम करने के लिए बहुत सारे लेडीज भी रहती थी, और हम लोगों के जैसे गायनेकोलॉजिस्ट ना होने की वजह से अगर किसी लेडीज को अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो उसको कम करने का कोई तरीका नहीं था। और हमारे यहाँ पे कोई भी चीज अगर पब्लिक को समझानी हो तो उसको धर्म से रिलेटेड ही अगर हम बताएं तो वो लोग मानते करके, शायद उस समय में उस जमाने में जो रजस्वला स्त्री होती थी या जिसको ब्लीडिंग शुरू है या माहवारी शुरू है, उसको भगवान का कनेक्शन देके उसको बाहर बिठाया जाता था, क्योंकि उसकी वजह से बाथरूम के अंदर में जो मिट्टी से लिपा हो वहां पे दाग ना गिरे, जहां पे हम बैठ के भगवान की पूजा करते हैं वहां पे दाग ना गिरे, और जहां पे हम खाना बनाते हैं वहां पे दाग ना गिरे, क्योंकि वो दाग परमानेंट होते थे उस समय में, जैसे आज की जैसे टाइल्स नहीं थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, उस समय में पूजा जो थी वो आज की पूजा की जैसे 5 मिनट की नहीं थी, उस समय की पूजा घंटों चलती थी, वहां पे होम हवन हो जाता था। और अगर किसी लेडीज को ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से अगर वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं है तो शायद उसका दुष्परिणाम ना हो, इसलिए शायद उनको वो सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन जब आज हम पैड यूज कर सकते हैं, हमारी जो फर्श है वो इजिली क्लीनेबल है और हम लोग सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं डॉक्टरों से मेडिसिन लेने के बाद, और हमारा छोटा सा परिवार होता है, तो आज की डेट में बिकॉज ऑफ द टाइम विच परमिट्स यू, शायद कि आपने अगर भगवान की पूजा की तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं। In addition, I would like to say that in my childhood, my dadi used to tell that they used to give rest to the lady because she was having periods. She was given rest. So don't think that she is अछूत या कुछ ऐसी नहीं है, बस रेस्ट देने के लिए उसको बोला था कि तुम किचन में ना। म्यूट कर देके बोला, स्टार्ट वीडियो तो ना बोला, देखो। नेक्स्ट डॉक्टर राखी। मूविंग ऑन अहेड, हमारा अगला सवाल है जो करीमनगर से आया है and which has been nicely addressed by the speakers all also. How to avoid the fear of the exams and how to cope up with our peer pressures and pressure with the parents coming up that you have to have a good percentage, you have to score good. How to cope up with that? The kids are really wanting to know the answers. वो जानना चाह रहे हैं कि हम ये कैसे ओवरकम करें। डॉक्टर रागिनी सिंह है वहाँ पर? Yes, I'm here, Please answer. Yeah. This is simple. I had told earlier that whatever problem, solutions you already know.
You have to खत्म होने वाला है, implement it. वहाँ से आया कि अपना Implement unmute करके कैमरा implement it. तो अपने प्रॉब्लम्स आपको, आप खुद कह रहे हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर प्रेशर है। तो प्रेशर क्यों है? क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है। आप कुछ अच्छा करके दिखाइए, उनको कॉन्फिडेंस होगा आपके ऊपर, तो वो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेंगे। तो आपको भी थोड़ा सा कुछ करके दिखाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि हम कर सकते हैं। शो देम दैट दे कैन रिलाई ऑन यू। तो वो उतना आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालेंगे और आपको थोड़ा तो परफॉर्म करना होगा। आपको देखना आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और उसको कैसे करना। Dr. Duru ma'am, there is another question for you. A girl says that she's a PCOD patient and she's been told to have a lifestyle management. She's already very lean. She says she's 42 kgs. And what should I do? Yeah, I think it's extremely important whether a patient is obese or she's lean. 20% of PCO girls are lean. We still advise them to do exercises because those girls who are lean also could have internal obesity, what we call visceral obesity. मतलब जो फैट अंदर जमा होती है उसको निकालने के लिए मसल एक्सरसाइज, ओनली एक्सरसाइज जो करेंगे it should be a different type of exercise. जो ओबीस पेशेंट रहती हैं जिनका वजन ज्यादा है उनको व्हाट यू से इज एरोबिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें कैलोरीज कम होती है, वाइल जो लीन पेशेंट्स रहती हैं उनको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है जिससे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो. When their muscles get stronger, the insulin levels come down and it helps them a lot. Thank you, ma'am. Yes, doctor. I would like to ask Dr. Sampath Kumari ma'am that what is the kids are wanting to know what is the right, is it okay to talk about sex in the classroom or is it okay to be explained about it? And the second thing is to talk about the periods to the students in the schools. Yes. Yes. No, madam wanted to tell something, I think. Can I proceed? Dr. Duru madam wanted to say. Yes, Dr. Durusha ma'am. मैडम अनम्यूट कर लीजिए. Madam, unmute please ma'am. कर लीजिए. Have muted me, so organized. Okay, I wanted to talk about this. I think it's very important for us to talk to our girls and prepare them for their puberty, for their periods, about their reproduction, about their sexuality. In short, the whole conversation should start at an early age. Probably by the time our girls are about 10, 11, we should start. This information in the past, right from the year 2000 to 2010, we went to various schools through Foxy and we covered more than 5 million girls all over the country and talked to them about this program. In the process, we were able to convince the Ministry of Health that this should become part of our, it should be part of the school program, it should be inculcated. And in 2008, the government passed a resolution that it should be part of a school program. Now, keeping in mind that, see, today we have more than 1 lakh kids. We are on a webinar. So therefore, getting into the digital space is important. So actually, we have created an app which is called Too Shy to Ask. Because children are shy to ask their parents and parents are shy. Indian parents are shy to talk to their children about these things. And therefore, this app becomes a great information in a private space. It's totally free and it talks about puberty, reproduction, unwanted pregnancies, unsafe abortions. It talks about everything, substance abuse, gender equality. It helps the children to understand themselves. And even if they don't want to talk in the open space, in their own private space, they can learn a lot. And I think this is extremely important today. We must talk to the children. Parents must talk to their children so that the children get bold enough to ask those questions to their parents or their teachers. Yes, madam. Sex education should be started from the school. They should not talk with the friends itself. As madam told, the teachers and the parents. Parents should initiate the students to ask about, so they can, the parents counseling and teachers counseling is very, very important. Sex education should be started from the school itself. हर बच्चे को सेक्स के बारे में जानकारी होना ही, मतलब उनको चाहिए. अगर टीचर या पेरेंट्स नहीं देंगे
so they will take it from the wrong sources, and that's why it should be the integral part Dr. of Alpesh, the studies. Thank you so much. Dr. Alpesh, sir. We have so many questions, so I wish if we can address more and more questions. Yes, sir. Dr. Alpesh, sir, one question for you. Can Foxy create some skill building workshops like you are having that safety of the adolescent, and young adults? So can we create some skill building workshops for them? Yes, definitely, it's a very good, good suggestion, and we are thinking on this direction. We are going to make one course also. We want this course to be recognized by any university, which will be on adolescent healthcare counseling, and we are also planning for some skill building education also. So in addition, they also wanted. Foxy will come out. I think. Let me inform you, all of you, that Foxy may probably come out with these 2 projects in next 4 or 5 months. Sir, there is another question related to this only, that can you have some parents counseling sessions, like something for the parents and the teachers as well? This is really something new, and we will definitely, it's a good suggestion, and we would definitely like to work on it. Thank you for the suggestion. So parents, teacher, adolescent, all three combined, and it should be like a tribute. Then only we can have a holistic in the whole program for them. Actually, जैसे sad है ना, वैसे ही pat है. Pat का माने बहुत अच्छा होता है ना, पीठ पे आपको थपकी मिली. तो पेरेंट्स और टीचर के बीच में वो एडोलसेंट आता है, तभी पैट बनता है. तो उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है. Good. Another question is about the vaccines, Dr. Girish, you can answer that. Which vaccine is good, and does the vaccine give 100% protection? Yeah, actually, this is regarding the HPV vaccine. Yeah, all the studies say, सारी studies ये बोलती है कि अगर जो CA cervix है उसका जो कारण है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है. ये सारी स्टडीज, मतलब इंडियन और बाहर की सारी स्टडीज यही कहती है. और ये भी देखा गया है कि अगर किसी लड़की को या लड़की को स्पेशली अगर उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा अगर इसका संक्रमण नहीं हुआ है और अगर उनको वैक्सीन दी गई, तो 99% इफिकेसी इस वैक्सीन की है. और ये सारे आप अगर नेट पे भी देखेंगे और सारे बुक्स में देखेंगे तो यही लिखा गया है कि अगर संक्रमण नहीं हुआ है और अगर ये वैक्सीन दी गई है तो उसका जो इफिकेसी रेट है दैट इज मोर देन 95% टिल 99%. तो ये वैक्सीन लड़कों के लिए भी है, सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है. इंडिया में द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग इंडिया में नहीं है सर, इंडिया में भी नहीं. There is another question that how to manage mood swings during period, and many girls have that burst of anger, the mood swings. तो वो कैसे manage करें? Adolescent girls. Adolescent girls should get in. Ashwini ma'am is there? हाँ, अश्विनी है ना, अनम्यूट करो. हाँ, यूजुअली ये जो पीरियड के पहले मूड स्विंग्स होते हैं, हम साइंटिफिकली उनको पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, एंड इट इज वेरी कॉमन, एंड दिस इज यूजुअली बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स व्हिच आर गोइंग अप एंड डाउन. If it is very mild type of mood disorders, I think swings, I think we should manage on our own, and just counseling is enough. But if they are moderate to severe, then I think it is good idea to visit your doctor, gynecologist, and we sometimes give very simple supplements like evening primrose oil, etc. And very rarely, if it is very, very severe, which is not so usually in adolescent girls, maybe in women, then we can give some hormones so that this all this mood swings, etc. can be settled. So if you are really suffering, I think it is a good idea to visit your gynecologist or a physician or your family physician. Thank you. Divert your mind to whatever you are interesting things you do. Then hobbies. You will get diverted. Hobbies. Yeah. No, thank you very much. Ma'am, there is a very nice question from a student from Agartala. She says that you are telling us about good food and exercise and all. In these COVID times, there is so much of stress, so much of screen time. Do you say that screen time should be less? You say that exercise karo. हम जाए कहाँ तो करे क्या? They can do the exercise in the house itself. Yeah. Anybody can answer. I told this thing very clearly. आप अपने घर पे कुछ भी कर सकते हैं. एक्सरसाइज के लिए बाहर जाने के लिए, किसी जिम में जाने के लिए, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है.
उसके लिए यहाँ पर सोचना है कि आपको एक्सरसाइज करना है। आपके लिए इतने कुछ नहीं तो आप बॉलीवुड के गाने लगा के उसके साथ डांस कर लीजिए, वो भी तो एक एक्सरसाइज है। प्लस वॉकिंग की अगर हम बात करते हैं, इस समय कोरोना के समय में यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियो से, 1 माइल से लेके 5 माइल तक वो उसी जगह पे चलने के लिए वॉकिंग के थ्रू वो वीडियो में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कराते हैं। वेट्स होते हैं, हैंड फ्री वेट्स होते हैं, आप ले आइए, यू डोंट नीड मच प्लेस टू वर्क आउट ऑन दोज वेट्स। एक सिंपल सी मैट चाहिए, और चाहिए ही क्या, एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन चाहिए। Probably they are missing their friends and outdoor activities. That's why this question. And then only one point. You can do sit-ups 30 times. It will improve your memory power also will get increased. So do the sit-ups, every girls and boys. Thank you. Somebody is asking, why do we get frustrated very easily and get anger? What to do about it? I suppose Dr. Ragini Singh can answer that. Hormonal problem, Chandan. Dr. Ragini. I think Chandan is the answer तुम खुद दो. You are an expert on the mental health. Actually, these frustrations and these anger and all, they should be accepted by the parents. It is actually the pressure of the parents which really bothers the kids at home, the young adults as well as the adolescents. We should understand that their frontal part of their brain, that is the prefrontal cortex, is growing. It is not only the body which is growing, even the brain is growing, and the brain growth, it continues till almost 24 years of age. So that they live in abstract. They don't have the reasoning. So you have to understand that their brain is growing. So be very friendly with your adults, with young adults, what I call, and your adolescents. Then only they will, they will not keep any secrets with you. Otherwise, if you start, being judgmental and being very harsh with your children and creating those barriers for them, then they will not share anything with you, and you will be very sad for that. That's my message to all the parents and teachers, that be friends with your children. Yes, Dr. Rakhi. There's another question: how to live a healthy life and remain stress-free? One of the adolescent wants to know. Can I answer? Yes, ma'am. Yeah, again the same thing, that if you do exercise and keep yourself in physical activity, some good hormones are secreted. So that gives you, positivity. Even whenever you are feeling little low, go ahead and start washer, and then it can help you. So this is my take on it. There is a question regarding the immunity. These days, everybody is asking about कैसे अपने आप की immunity बढ़ाई जाए. So, can the board please, throw some light on that? Immunity boosters in adolescents. Fruits, vegetables, milk. That's all. Routine, normal diet. मैडम यही तो चीज वो खाना नहीं चाहते. वो यही चीजें वो नहीं खाना चाहते. So how to make it interesting? Dr. Niharika, can you add, because you are a young person, what do you want? तो मैम प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एडोलेसेंट्स ना, सबको जंक फूड खाने का मन करता है, तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? अब आई ऑल्सो हैव 2 स्मॉल किड्स, सो व्हाट यू लाइक टू डू इज कि आप जंक फूड को भी हेल्दी बना सकते हो. दैट्स द मैसेज. अगर आप फ्रेंच फ्राइज खाते हो, आजकल पोटैटो के बजाय आप स्वीट पोटैटो होता है जो उसको यूज कर सकते हो. पंपकिन के चिप्स बनते हैं कद्दू के, उसको फ्राई करके यूज कर सकते हो. नॉर्मल ऑयल के बजाय आप ऑलिव ऑयल यूज करो खाने में. बाहर खाने के बजाय घर पे पिज्जा बनाओ. नॉर्मल ब्रेड के ऊपर अगर आप सारी वेजिटेबल्स लगा के अवन में बेक करोगे, टेस्ट वंडरफुल. एंड इम्यूनिटी की बात करें तो जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, शहद है, अदरक है, लहसुन है, एंड तुलसी के पत्ते हैं, ये सब घर पे अवेलेबल होते हैं. ये सब अपनी डाइट में अगर हम ज्यादा खाएं तो इम्यूनिटी बेटर रहती है. So we have to make the eatables little bit interesting for the adolescents. Make food interesting for the children. Yes, Dr. Rakhi. Ideally, the eatables should be interesting and presentable. Then only they will like it. वो बाहर के fast food क्या करता है? They make the platter very nicely presentable. So all the moms need to understand that if you want your kid to eat, if the kid is not eating दाल का पराठा बना दो. Just put the dal in that आटे में दाल का आटा बना करके you modalities to deal with the kid. It is just, yes, Dr. Lakshmi, you wanted to unmute yourself, Dr. Lakshmi. Unmute, Dr. Lakshmi. You are muted.
दे आर टीनेजर्स, दे अंडरस्टैंड, तो खुद भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने हेल्थ की तरफ। Absolutely. आई एम टॉकिंग दे ऑल आर 15+, तो कॉन्शियसली उनको भी कोशिश करनी है। उनको स्कूल में बायोलॉजी में पढ़ाया है बैलेंस डाइट क्या है, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक ये टीनेजर्स और एडोलेसेंट खुद की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे, इस तरह के एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, टीवी मीडिया पे जंक फूड दिखा रहे हैं, मैं भी जंक फूड खा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, आई मीन दैट इज रियली रिडिकुलस। आप अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। वंस इन ए वाइल जंक फूड सभी को अलाउड है, पर आप कॉन्शियसली हेल्दी डाइट ले और पेरेंट्स को प्लीज ब्लेम ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द घर में वर्किंग मदर्स है, वो कहाँ से है। 4 साल के बच्चे के लिए वो ये सब करेगी, 15 साल के लिए, 20 साल के बच्चे के लिए आई एम श्योर आप टिफिन नहीं खा रहे हो। तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और खुद अपने को मैंने न्यूट्रिशन डाइट कैसे लेना है, मुझे लगता है ये आपकी जिम्मेदारी है और आप खुद उसको इनकलकेट करें अपने डेली हैबिट में। डॉक्टर प्रतिमा मैडम, यू वांट टू ऐड समथिंग? चंदन यस मैडम। यस डॉक्टर रोजा। तो ये जो इम्यूनिटी की बात हो रही है एडोलेसेंट्स के लिए, तो याद एक चीज होना चाहिए कि स्ट्रेस अगर है तो इम्यूनिटी कम होता है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, डरावना नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पानी हम ज्यादा पियेंगे तो वो बहुत इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। डॉक्टर प्रतिमा मैम, देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ टू डील विद द पेरेंट्स हु गिव अ लॉट ऑफ प्रेशर? Madam, please unmute yourself. Unmute yourself. We are not able to hear. I think we have to counsel the parents only. Parents need counseling and they have to understand. Actually, we were having parents-teacher meetings, you know, with the doctors were having meetings with them, and they can really correlate that nothing to expect too much, not to expect too much from the children, first thing. And counseling regarding that everything is, you know, a part of life. The changes are part of life. The children are also experiencing difficulties in accepting these changes. So parents have to understand. I think parents need more counseling. Thank you very much. Yeah. So, there's another one of the last questions that menstrual cup के बारे में हमने बात किया था. Is it allowed in the adolescent children to use it? Yes, I had said that in my lecture also, that in adolescent it may not be very easy to insert, but suppose there are some girls who are already using tampon, in them maybe they can try menstrual cup. But ideally, if they are worried and they do not want to use it, I think they can use reusable napkins, and maybe after marriage and all, they can shift over to menstrual cup. Now we will end up the session with a very sweet question. One boy is asking, I am a very sweet toothed person. How can I manage? I am from Gujarat, he's Vadodara. He's asking, I am a very sweet toothed person. How can I manage my weight? अल्पेश भाई, Dr. Alpesh, can you answer that? अल्पेश भाई अनम्यूट करो खुद को। हाँ, Dr. Alpesh, please unmute and please answer this question. गुजू ही बोल सकता है कैसे करते। I found it very interesting. Please give answer. Yes, sir. Dr. Duru ma'am, yes. How can you help her? So I think what we need to do is that those people who are overweight and they are having a sweet tooth, they are wanting or craving sweets, they need to get their test done, because that craving itself makes them eat more sweets and they put on more weight. So probably the person may be having insulin resistance, which is a pre-diabetic state. So I'm not so sure what the problem here is, but this young person needs to see the doctor for this particular reason, and probably they will find some problem which can be corrected. हाँ, इसको ये नहीं कहे कि सोसाइटी में होता है, ये तो नॉर्मल है, मैं तो स्वीट टूथ हूँ जैसा, he has accepted it as a normal and rather yes, he looks like this. He is boasting कि भाई मैं तो स्वीट टूथ हूँ। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानूंगी। देखो, ये कहना पॉसिबल नहीं है जिसका स्वीट टूथ होता है उसका स्वीट टूथ होता है, बट वी कैन गो फॉर द ऑप्शंस। जब आपको मीठा खाने की चाह हो रही है तो हमारे को मीठे की मफिन की बजाय हम फल खा सकते हैं, और फल के भी कई वेरिएशन है। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, और इसको ये कहना कि बच्चों को कि नहीं नहीं जी आप सुधर जाओ और बिल्कुल वो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो इसको
एक बहुत ही हम समझदारी से काम लेते हुए कर सकते हैं कि जैसे कि आपने बोला कि आपने पिज्जा घर पे बनाया, तो वी हैव टू थिंक ऑफ कि व्हाइट ब्रेड मत यूज करो। हमारा जो उत्पम हम खाते हैं, दैट इज अ दाल बेस्ड थिंग, तो दैट्स वाई दिस लाइक द स्वीट टूथ, जिसको है उसको है, जिसको नहीं है उसको नहीं है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते तुम्हारा स्वीट टूथ सोचना यहाँ से आता है, दैट इज नॉट थिंग। I don't have a sweet tooth, that is a disclaimer. I just don't Can have. I ask one thing? Is there any difference between? Is there any difference? 1 minute. Yes, sir, Dr. Can I ask one thing? Is there any difference between white sugar and brown sugar? No. No. Same number of calories. Not much, sir. Sir, calorie wise same है, सब कुछ same है। What about sugar free, ma'am? सल्फर लेवल का अंतर होगा। What about sugar free and all? Can they add these adolescents? Can they use that? No. I don't believe any chemicals. I don't believe in any chemicals. Of chemicals, Because that was and one question. growing children, they are not supposed to take sugar free. Instead of that, instead of sugar, No, for adolescents we are telling, not growing children. Jaggery, they can start using jaggery. Jaggery has got much more benefits than the white sugars what we are taking. Yeah, but sugar is sugar. Jaggery is also for a obese adolescent. Jaggery is also as bad as a This white person sugar. has also Head is as bad as anything because the calorie comes the same. The only matter is that jaggery has a iron and it does not have the sulfur. But the thing is that when we are talking about a sweet tooth person, a obese person, he has to switch over from the sugar to the fruit and think that fruit that is the meter for him. Everything is in the priorities. Everything is in the priorities. For example, किसी को बहुत ज्यादा मीठा अच्छा लगता हो और अगर कल जाके डॉक्टर के टेस्ट में पता चले कि इसको डायबिटीज हुआ है, तो उसी खुद को ही उसको दूसरे दिन से शुगर नहीं अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसका दिमाग ये बात को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अभी हम कितना भी बिजी रहे, लेकिन जो हम सुबह जैसे नहाना, पूजा करना, ये हम छोड़ते नहीं है, तो हमने हमारे ब्रेन में लिखा रखा है कि दीज आर द माय प्रायोरिटीज। उसी तरह से हर बच्चे ने इसको हमारे अपने दिमाग में लिख के रहना चाहिए कि देयर इज नथिंग लाइक स्वीट टूथ और व्हाटएवर दिस। उसने ये सोच के रखना चाहिए कि मैं ज्यादा अगर शुगर कंज्यूम करूंगा तो ये मेरे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। किसी ने बताने की जरूरत नहीं। There's another additional point that they should not be taking outside food because trans fats are very high in the outside food. They go on, reheating the same thing again and again, like chips and all, like the finger fries and everything. So that trans fat gets collected in the blood vessels. So that's why we always, don't allow them to go out for such things. Anything, anybody wants to add on something? We have, because we will be short of time, I suppose. Do we have time, sir? I think we have already finished. No. The time is over. One thing. Thank you, sir. You can just. I want to convey one thing. We have received so many questions, 10,000 questions. We are thankful to all the youngsters, adolescent and youth, those who have sent the questions. We are sorry that we could not address all your questions and worries, but I would request all the I would rather request Rakhi Singh and Dr. Chandan to remove the repeat questions and make a short list of it, and we would send this list to all the faculties, and once they give the answer, we will upload this reply on our website, and we will send the link to the schools and colleges so they can forward this link to the youngsters. Thank you very much. Good idea. And I would like to tell that this program is available. It is going live on Facebook and also YouTube. People who have logged in later part of it, they can go back and see the whole program again on the YouTube channel, the previous lectures if you have missed any. And they can put their questions also there if additional questions are needed. Thank you very much. Thank you everybody for a very nice question answer session. We can make Chandan, yes, ma'am. Sir, we can make an e-book of all these questions. Yes, ma'am. That's what Dr. Alpesh said. Then we can That's what Dr. Alpesh says. That's what I said. Yeah, that I we can make an e-book. Yes, Rajan madam. Also Sunil Shah for the. Thank you, moderators, Dr. Rakhi and Dr. Chandan, for a very sugar and spicy question answer session. Thank you all the speakers. It was an excellent question. It was an excellent take on all the questions, on most of the questions put on by the youngsters. There are many more, and it will be non-ending if we can continue the whole day. But we have to move on, and
I request Dr. Sunil Shah, Joint Secretary Foxy, to come forward and do the honors of the vote of thanks for this awe-inspiring and fantastic adolescent health program. Over to you, Dr. Sunil Shah, sir. Please thank the chairpersons also. We are sitting throughout. Special thanks to you, madam. Special thanks to all the special thanks. And the chairpersons have already been thanked by the previous Sunil for sitting so long and be with you all the time. Madam, Dr. Sunil Shah is there. Is there to thank everyone. Thank you. Madam Chandravati, you are the youngest. Hello. Chandravati ma'am is Chandravati ma'am is always there for her blessings over us. She's always there. I am there always, but need thank at the end also. Alpesh, thank you for calling me. Thank you. Madam, now thank you. Now let Dr. Sunil Shah to convey word of thanks. Thank you very much, everybody. Thank you very much. We love you, India. Thank you very much, all girls and boys. They have participated and logged in a huge number. We are really thankful to you. I am thankful, Dr. Alpesh Gandhi, President Foxy, Dr. Jaydeep Tak, Secretary General Foxy, our chief guest, respected Dr. C.N. Purandare sir, our VP in charge, Dr. Ragini Agrawal, all the VPs, committee chairpersons in charge, Dr. Girish Mane, our national coordinator, Dr. Sampat Kumari, Dr. Rakhi Singh, Dr. Raja Thakur, Dr. Kalyan Barmade, our judges for the slogans, Dr. Neeta Dabai, Dr. Hafizur Rahman, Dr. Susan William, judges for our posters were Dr. Kavita Bapat, Dr. Rosa Oliai, and Dr. Kalyan. I would also like to thank our Master of Ceremony, Dr. Charmila, Dr. Nidhi, Khera, Dr. Seetal, our respected chairpersons, Dr. Chandravati Madam. She found little difficulty in logged in, but she stayed with us for a longer period of time. Thank you very much, Dr. Chandravati Madam. Other our chairperson, Dr. Suvarna Khadilkar Madam, Dr. Nandita Palsetkar, Dr. Chandan, Dr. Neeta, Dr. Pratima Mittal Madam. I would also like to say special thanks for our speakers, Dr. Rajal Thakur, Dr. Duru Shah Madam, Dr. Sampat Kumari, Girish Mane, Dr. Ragini Singh, Dr. Aswini Balerao Gandhi, Dr. Lakshmi Srikhande, Dr. Santa Kumari Ma'am, Dr. Ragini Agrawal. I would also like to thank Dr. Niharika. And at last, I would also like to thank our sponsor, Torrent Pharma, for supporting this webinar for the adolescent. It's a great success. And in the last, I would like to thank our web partner for supporting conference for this support digitally. Thank you very much, Foxy, and thank you very much all the faculties, dignitaries. If I have missed someone's name, it is not intentional. Please pardon me. Thank you very much. We are also thankful to Jackson Park for supporting. Yes. Thank you, sir. We are also thankful to Jackson Pal for supporting along with Torrent Pharma. Thank you. And all the schools, social clubs, and everyone. Yes. All the schools, all the principals across the India, principals, teachers, supporting staff, everybody. Thank you very much. If I have missed Dr. Ragini, Dr. Girish Mane, you can add them. We are also thankful to the media people who have covered regarding this program in various newspapers and channels also. Thank you so much. And we are expecting the same coverage after. Yes. And all the Foxy members who has worked tirelessly with us as the coordinators at various level. We in Foxy call them our unsung heroes. उनके नाम भी नहीं आते हैं, असली काम वो करते हैं और हम लॉरल ले जाते हैं. Yeah. And lastly, the special thanks to our Joint Secretary, Dr. Sunil sir. Thank you. Thank you, Girish. Special thanks. We must actually acknowledge ourselves for doing this great work. And हमारे बच्चों को थैंक यू कौन बोलेगा, जिनके कारण हम यहाँ बैठे हैं, वो ना होते तो हम सब उदास होते, हमारे चेहरे पे हंसी. सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले सुनील सर ने बच्चों को thank you very much for your Thanksgiving.
और बच्चों आप सबको हमारी तरफ And से now, बहुत like, सारे you know, we all Indians, we have like the time for national anthem. So I would request everybody either to raise your hand or to stand up at your place, and let's go for national anthem. Thank you very much. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you to all, Dr. Alpesh sir, Dr. Ragini, Dr. Girish. Thank you all. Support, are we offline? Yeah. Thank you everyone. Thank you everyone. We'll leave now. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you, Foxy and Daddy. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you.